This meeting has continuous meeting chat enabled. You can find messages and reading. अभी 200 की नोट मैंने आपसे पूछ
अबे बंदर आजा। बंदर, ओए ओए मेरे बंदर आजा। मेरी चप्पल का सारे चप्पल खा के लिया। बेटा आई ना है पोटी, जल्दी पेस्ट कर ले बेटा, बदबू आ रही है कल से। जो पेस्ट लगाओ वो अपना ले बना लिया, कल से लगा छोड़ दिया है, परसों का है, कल तो है क्या क्या हो गया? पेस्ट, परसों भी कराना है, लगा हुआ है उसमें। हाँ बेटा आजा तू अब जल्दी से। जल्दी कर ले जल्दी। आजा बेटा मेरी शुरू होने वाली है। तो यहाँ बैठ के कर लेना ना अपनी ट्रेनिंग आराम से, तो वो बैठ कर आराम से। समझ तो कहेंगी तो आ गया बेटा आ गया। अच्छा बेटा अरे यार इसमें अपना नाम चेंज करना है तो कैसे करें भाई? वो डेल लिखा है, पहले का लिखा है, चल रहा है। तुम्हारे में तो आर के सिंह लिखा है। नहीं नहीं, आर के सिंह। अच्छा है। नहीं नहीं, जो हमने लिंक भेजा है अभी शुरू नहीं हुई। दो, अच्छा वो रख दिया बेटा। हाँ, इस बार वो नहीं खोले ऊपर वाला। मेरे में दिखा रहा है, मैं देखा तो मान लिखा है आर।
तो ये आर के सिंह किसका भैया? आर के सिंह किसी का है? अपने आप कुछ सीखो, ये सीधा ही है, देखो इसमें यू का है, पलट के यू सीधा कर लो माँ, इसमें क्या करेगी है? मेरी हाइट है क्या? वो शुरू का लिखा है यार, वो इसी समय का जब छुपाए रहे थे। क्या डेट है? 5 हो गई। 5 हो गए। तो ये बताओ इसमें नाम बच गया, चेंज करें? हैं? अरे ऐसे पकड़ लिया। हाँ, कौन सा, ये वाले? अजी साहब। एक सीट मैंने ना इसमें परमानेंट डाल दिया, ऊपर वाली चेन में घुसा के, ठीक है, कभी मान लो भूल जाओ टेस्ट भी तो निकाल लेना। जरूर टेस्ट होते हैं पढ़ते हैं फिर वो लगा के बैठ जाएगा 49, ये हो जाएगा सिर्फ ठीक होगा। हाँ मुझे भी लग रहा है। हाँ है। इसको नाम कैसे चेंज करें? हाँ है, रीनेम है भैया, है रीनेम। कर दिया मैंने। नहीं नहीं, मतलब है ये मेरे कहने का मतलब। हाँ 10 बजे से। अभी सब इसी प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग। हाँ हाँ, 1 हफ्ते में ही रहूंगा। पूरा नाम लिखे देता हूँ। हाँ, पूरा नाम ना लिखे। छोड़ दे ऐसे काहे इसमें छोटे खोलो जहाँ पे दिमाग तुम्हारा में नाम क्या लिखा है, आर बोलने के में सिंह। आती है और तू से देख। अरे हाँ, मैं नहीं पहुंच ना, मैं बता रही हूँ, मैं मोबाइल देखना है, माँ कपड़े पहन रही है। हाँ? मैं पहना करो या सीखोगे कब है? अब मेरा आ रहा ऐसे नहीं सतीश कर, साहब। क्या होता है? तुम अरे चेंज करो वाला पहनता तो अपना। हूँ, कहाँ पहन रहे हो? माँ मोबाइल देख, मैं सब पहनता हूँ। मैं कैसे चेंज कर दूंगा यार तुम्हारा? सीख ही नहीं पाओगे, मम्मी थोड़ी ना तो तुम्हें करती नहीं रहेगी नहीं, मेरे में नहीं आ रहा है। अपने मेरे आप में करना अपना पड़ता खोलना है। से बहुत सारे आ रहा है, तुम्हारे में बस 2 ही 3 ठे आ रहा है। मतलब बच्चे नैनीताल जा रहे हैं, वहाँ चैट आ रहा है, घूमने पिन आ रहा मैं है, क्या बहुत। हो जाता हूँ, हो जाता हूँ, धीरे बोला करो। एक तो गलती होती है और ऊपर से मानते नहीं हो। लड़ाई कर रही तो महिलाएं। पता नहीं। इसमें जुड़े हुए हैं ना कोई तो चार्ट। हाँ, सबमिट कर दी, आज के अटेंडेंस है वो। हम्म। हाँ, नहीं रोज करना पड़ेगा भाई। ऐसे लेट हो जाओ ना मुझे। यार हमने रिलीविंग नहीं किया साला अभी तक। ये कहाँ मिश्रवा कहाँ है यार आजकल? हेलो। हेलो। साढ़े 8 तक आ जाओ तो कोई ना, चलो आधा घंटा पहले और आ जाए, कम से कम ये है ना झाड़ू पोछा तो हो जाए, बर्तनों की तो कुछ ऐसी ना है।
एक को सब बस कमरा में लग गई है। हेलो। अरे उसमें वो ओए का नाम नहीं आ रहा, बीए आ रहा सीधे। ओए नहीं आ रहा। रिलीविंग आर्डर मिल गया आपका? चलो हमारा नहीं बना है अभी। अ, वो नहीं लगाना, अटेंडेंस नहीं लगाना। हाँ इधर अटेंडेंस वही वो कहाँ इसे करा, आपको ओटीपी इधर भी लगा। हाँ ये प्रेजेंट देंगे, ये रिलीव करेंगे। चलिए ठीक है, ज्वाइन करिए। आपका नाम आ तो रहा था, विनय सिंह। हाँ 10 बजे से अभी कोई नहीं। मैं भी अब 90 - लास्ट या आज तक बता दो। हाँ ऊपर जीना में गई कल मैं बगल लगा ले करो। अरे दोनों दरवाजे के बीच में जो छोटी सी जगह है वाइट सी अंदर। अरे एक का दरवाजा इधर है, इसका दरवाजा इधर है, इधर जो जगह पड़ी हुई है जीने के इधर नहीं, उसमें ने पहुंचा भी ले करो। देर नहीं करा था क्यों हो रहा है? वो ना करे सीट वो अपने बीच बच्चा ऐसी लड़की का एडमिशन कराएगा, वहाँ पेपर हो जाएगा तो लड़की लेके आएगा, एक दिन खाली कर देगा। ये खाली कर रहा है, दो रह रहे हैं ना। हाँ अपने बीवी रखे हैं, मियाँ बीवी आगे हो जाएंगे जहाँ टीचर कह रहा था ना फैमिली लाओ। हाँ तो एडमिशन के लिए बोल रहा है ना, जब तो सफाई नहीं कर रहा। हाँ तो अपने उसके बीच बच्चे आ जाएंगे अपना, एक लड़की है छोटी सी स्कूल में पूछ रहा है टाइम करा छोटी बात। तो हाँ तो वो ना तो हाँ तो वो करेगी ना वो करेगा, क्योंकि दोनों का बीच का ना वो जीने का ही हिस्सा है। भाई दरवाजे मारने लगा कि सीम हाँ तुम लगा लिया करो। वो कहेगा वो करेगी, वो कहेगा वो करेगा, तभी तो मैंने जीने पे लगवा दिया है। मैंने जीना का भी वही होगा कि तुम करो वो करो, इससे अच्छा लगा दो अपने अपने, और भैया सफाई तो वो जीने पे रखी जाएगी। और जीना ना चमकने लगा है। हाँ नहीं बिल्कुल बेकार हो गया, ये सफाई तो चाहिए ही। लगाएगा तो जब ही लगाएगा जब बीवी आ जाएगी। अरे ये किराए वाले हैं, इनके कोई भरोसा नहीं। वो भी सही कह रहे हैं, किराए तो मुश्किल पर है सभी का। भैया ये तो हर एक का इंतजार अपने हिसाब से सबकी अपनी है ना, वही
बिजली पानी खर्चा आना आना जाना तो खैर का खैर फ्री हो। क्या तो नहीं सफाई वगैरह तो होनी। वहाँ तो कह रहा पेट से कोई वो हो आदमी जो खाना वाना बना दे या हो डाल दे मेरा आदमी कौन मिल जाएगा और मैं तो भी टाइम नहीं लिया ना ये खाली कर देगा ये कहीं और देगा ये सही है। हाँ, कितने पैसे के थे आपके 9 रुपए तो भाई और रुपए के लिए इतनी देर में तो कहीं और जाकर के काम करके 100 रुपए कमा ले। रोड से जा रहा था यही कहीं गिरे हो गया। नहीं वो आतंक क्या कहते हैं सुजू दे पैन 20 हो गया दवाई खाओ ले अगर उसे ये पता भी हो कि उसके पैसे गिर गए तो ये ना बताओ कि कहाँ गिर गए।
3 पैसों से गरीबों का पेट तो भरेगा। जब ये आएगा ठीक है। ऐसे जो नहीं पहनने का तेरा कैप कहाँ है स्कूल का? है रे, तेरा कैप कहाँ है स्कूल का? स्कूल का कैप स्कूल में ही है क्या? है इसका बोला ठीक है, कभी हम छोड़ गए हो वैसे। ये पैसे किसी और के बुला गई है। अब बेटा जैकेट नहीं पहन जाएगा तो ठंडा मौसम है। कोट पहन ले, कोट 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 पहन जल्दी, कोट पहन, कोट 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 जल्दी पहन, ठंडा लग रहा है सूट सूट सूट। मेरे राम मेरे राम 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 सीता राम मेरे राम मेरे राम राम राम। कैप नहीं मैं, लेकिन ऐसे ठंड कैप तो पहना दो, ठंडा मौसम अभी। यही डाला ले अपना स्कूल का तो वहीं छोड़ आया है थोड़ी यार स्कूल में हो पहले स्कूल में नहीं है और फिर बस में रह गया वो। जल्दी से लगा लेना, काला और हरा तो एक ही होता है। हाँ काला एक होता और ऐसे खोइए मत, बैग में रख लियो जब ना पहनने का रहता है ना, यही रख लिया अगर बैग में कोई टेंशन नहीं जरूरत ही ना रखने की नहीं, बैग में रख लिया।
जब भी उतारो सीट पे ही मत रखो, सीधा बैग में रखो ना, मुझे दे मैं ला दूँ। अरे ला दे
मेरे राम मेरे राम सीताराम सीताराम मेरे राम 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 सीताराम सीताराम मेरे राम सीताराम सीताराम मेरे राम राम सीताराम मेरे राम राम सीताराम सीताराम मेरे राम सीताराम मेरे राम सीताराम मेरे राम सीताराम सीताराम मेरे राम मेरे राम मेरे राम जय श्री राम। म्यूट कर लो जनाब। आइए कर रहे हैं बाबूजी। राम राम। राम राम। क्या हाल है? बढ़िया। सुबह सुबह आपकी आवाज और भगवान का नाम आ गया।
थोड़ा हल्का सा इधर। क्या? एक मिनट पहले कनेक्ट हो जाने दो भाई, कनेक्ट ही नहीं होगा तो चलेगा क्या है यहाँ पे? कोई बात नहीं, चलता रहेगा यार, शुरू हो चुका। क्या किया आपने? कुछ लिखा था एआई में।
ఇప్పుడు 9:30కి. ఇప్పుడు రాత్రి 9:10. मान सिंह पटेल जी म्यूट कर लो भाई। Ma'am, but I checked your name is there. Okay. So when I took the printout also, but actually Sanjay sir name is also there, but everyone is planning like that. We will not go with the procedural things like releasing and all, because he's telling any work is like that. If any work comes, you have to come and do. So there, without telling, you go and sit there. If any work come in between, you come and finish. Otherwise, leave it unofficially. है ना? यही तो डिसाइड हुआ। उधर ही जाके बैठता है, जो जरूरत होगा तो बुला लेगा तो। हाँ, तो वो कहने का मतलब ऑफिशियल प्रोसीजर में मत फंसो रिलीविंग के लिए। ठीक है? हाँ, ऑफिशियल के लफड़े में मत फंसो, ऐसे सब जाके बैठेगा उधर। अरे एक मेल भेज, दूसरी ये सलाह थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेल है।
Good morning. Am I audible? Kindly message in the chat box, and I will allow to everyone can be unmute and talk. But keep in the mind, if everyone at the same time without unnecessary open the mic, so I will again mute all. Please keep in the mind. So now able to everyone may be unmute and talk to anyone. Yes. So first, am I audible? First confirm me. Yes. Yes. Yes, sir. Audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just wait. Registration time now start. Okay, so I come back within 1 minute. Just wait. ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है ना वो आता तो नीचे वो ऐसे आएगा नहीं 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 ऐसे करने से आएगा ना
हेलो। मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Audible. यस सर। आ रही है सर। वेरी क्लियर। अभी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने शेयर किया है ग्रुप में। इसको आप लोग डेली मॉर्निंग में भरेंगे, हर दिन का सेपरेट होगा, एज अटेंडेंस भी और एज ए रजिस्ट्रेशन भी। तो इसको पहले आप भर लीजिए। अभी आपका जो फर्स्ट सेशन है इट विल बी स्टार्ट एट द 10:30। ठीक है, तो भरना सभी को है, जो लोग भी हैं। ठीक है, तो एवरीवन must be submitted your registration sheet and daily request. In case you leave out from this group, so kindly directly you join the YouTube link also. I will share YouTube link in the same time, and same conversation and same everything same in the parallel going with this Zoom meeting. सर कौन सा ग्रुप है सर? अभी तो हम तो उस ग्रुप में ऐड नहीं हुए। कौन से में? आप किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं ना? कोई ग्रुप बनाया? वो तो कोऑर्डिनेटर ग्रुप है, हमने कोई अलग ग्रुप नहीं बनाया। आपको यूट्यूब लिंक ज्वाइन करना है, वहाँ पे भी सेम रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा और क्वेश्चन आंसर आप चैट के माध्यम से पूछ पाएंगे। ठीक है, अलग से कोई ग्रुप नहीं बनाया है। नमस्कार सर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजेंगे कहाँ सर? मैं अभी आपको इसमें कोऑर्डिनेटर चैट में शेयर कर देता हूँ, आप दोबारा से, क्योंकि आप अभी लेट ज्वाइन किए होंगे तो आया नहीं होगा, मैं दोबारा से कर देता हूँ। अभी आप चैट बॉक्स में देखिए, एक मैसेज अभी हमने किया है, इसको ही भरना है। सेंड कहाँ करना है सर? सबमिट कर दीजिए ना। अब इसको भर के आप इसको क्लिक ओके करिए, ओपन हो जाएगा। ओके। आप उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मांगा है उसको भरिए और जमा कर दीजिए। क्या जी, जो लोग सबमिट किए हैं वो आपको दिख रहा है? जो सबमिट हो गया उनको छोड़ दीजिए ना, जिनका सबमिट एक ही बार करना है, वन टाइम होगी, आ जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा, उसकी चिंता न करें। आयुक्ता जी, पता नहीं यार इसमें। अरे, हाँ मेरी आ रही है। रुके सुन तो गया नहीं। चल गया क्या? 10:30 क्लास चलेगी। क्या आवाज कैसे आ रहा है? अच्छा।
हेलो। हेलो सर। हेलो, हाँ जी, हेलो बताइए सर। हेलो। सर। सर क्या सबमिट करना है सर अभी? सर 10:30 पर लेक्चर स्टार्ट होगा अभी, और ये फॉर्म सबमिट कर दिया आपने, गूगल फॉर्म? सर ऑलरेडी आई गिवन नॉमिनेशन सर. हाँ ऑलरेडी सबमिटेड नॉमिनेशन सर. व्हाट हैव टू डू नाउ सर नो? ओके, क्लास विल स्टार्ट एट 10:30 देन प्लीज वेट अप टू 10:30. Yes. Okay, okay sir. It is on level. If, So any submission is required sir? Any? sir, listen to everyone. In case, हाँ. actually limit of this Zoom live meeting is only 100. In case of by default anybody left out of Okay, this okay. meeting, so don't worry, don't bother. Just immediately join the हाँ. YouTube link. Okay, there is no restrictions. Okay. Okay, okay sir. Okay. So this Zoom Thank you, meeting thank has you. a limit 10:30 को of शुरू होगा ना? Okay. 100 participants. So if you are not able to join at the Zoom, you can get the same live streaming at the YouTube. There is no restriction on the YouTube. Okay. Somebody is telling submit message they're sending. What is that sir? Short submit. Sorting they are doing. What is submitted like that they are sending? It is Google form for registration we have shared. We are again sharing it. Okay, okay. Just like attendance. Okay. That I have done sir. That is no. Okay.
डी साहब बात कर रहे हैं। हाँ PM VK PM VK के हाँ आया कि नहीं सब बच्चे? ये YouTube पे कैसे ज्वाइन होना है? हाँ हेलो, हाँ यूट्यूब पे देर इज नो इशू। आप डायरेक्टली यूट्यूब लिंक पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली आपके मोबाइल फोन या जो है उस पर चालू हो जाएगा। देर इज नो इशू। और यूट्यूब लिंक का एक मैंने अभी इस ग्रुप में भी शेयर किया और दोबारा से, और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको यूट्यूब लिंक दे दीजिए। देर इज नो इशू। जो चीज इधर होगी एज ए सेम टाइम सेम चीज ही आपका एक ही जगह चल रहे हैं, दोनों दोनों एक साथ ही चल रहे हैं, वो अलग से नहीं है। इसी जूम का एक्सटेंशन है। अच्छा सर, YouTube लिंक कहाँ पर है सर? आप भेज रहे आप हो? देखिए चैट बॉक्स में देखिए, अभी मैंने अच्छा, मैसेज किया है, आपको मिला या नहीं? 3-4 बार कर देते हैं, अगर एक बार में नहीं दिख रहा है तो। हाँ ठीक 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 है, ओके मिल ओके। गया सर। आप जिसको देना चाहें, जरूरी नहीं है कि आप बार बार, तो फोन भी बहुत आ रहा है तो सभी को बता दीजिए, और आपके लिए भी अच्छा है, ठीक, क्योंकि ये ओके। रिकॉर्डिंग इसके बाद इसी जो यू
के यादव जी, आर यू स्पीकिंग? आई एम नॉट ऑडिबल। सर अभी जस्ट वेट, मेरी क्लास नहीं है, AK तिवारी सर की क्लास है, आ चुके हैं वो, थोड़ा सा कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना सर? क्या पढ़ा रहे हैं, क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं? अभी मैं पूछ रहा हूँ सर, मुझे खुद नहीं पता क्योंकि भाई आप क्या पढ़ाने वाले हो? एक मिनट सर, मैं पूछता हूँ सर। आई थिंक वो कॉमन टॉपिक कवर कर रहे हैं, CDA रूल्स एडमिशन, जनरल एडमिशन से है वो, दिस इज प्रिपरेशन फॉर ऑल। के आप क्या पढ़ाओगे? सर मुझे टॉपिक मिलेगा तो जरूर पढ़ाऊंगा मैं। कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले मैं हो? केवल मैनेजमेंट करूंगा सर। अबे भाई रमेश भाई, हाँ भाई। अरे मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे तो आप हो, हम कहाँ पढ़े लिखे हैं। अब अब फेंको मत, चलो शुरू करो जो पढ़ाना है। कोई नहीं कोई नहीं, हमें जो आता है हम पढ़ा देंगे। आप तो हमारे कॉलेज के टॉपर हो, तो आपको मुझसे ज्यादा आता है, तो टॉपर आदमी को मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ? क्या पर आशीष वशीष है, अमित गर्ग को बैठा रखे हो वहीं पे, उसको लगाओ। हाँ अरे यार। टॉपर तो क्लास ले रहे हैं। चलिए कोई नहीं, अब क्लास का टाइम स्टार्ट, ओके भाई, ओके। तो उसको भी हम लोग फोकस रखेंगे, कोई अननेसेसरी बातें यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि सारी चीज रिकॉर्डिंग मोड में है। हाँ सर। सिलेबस शेयर कर दो सर, के सर। सर सिलेबस सेंड आउट कर दो, या मैं दे देता हूँ उनको, डिजिटल लाइब्रेरी पे अवेलेबल है ना? सेकेंडली सर, जो शेड्यूल है अपना 5 दिन का, वो प्लीज दे देंगे तो अच्छा रहेगा। बता देंगे सर आपको टाइम शेड्यूल टेबल। अभी बता देंगे, जो आपके बैच कोऑर्डिनेटर हैं तोमर सर हैं और गंगवार सर हैं, तो अभी अभी आपको अकॉर्डिंगली जैसे होगा पूरे दिन का मॉर्निंग में बता देंगे। कर दो, मैंने नहीं किया। Oh. क्या हुआ? किसका? अरे कल परसों नहीं रहेंगे आप? हम्म। हाँ। कानपुर से यहाँ से 12 बज जाएगा। हाँ।
In Delhi, we take to AGM OP for approval. बस यही ट्रेन कराएगा ठीक भाई और वो मीना का मीन बात आना है क्या ठीक पुरंदर में डाल देंगे ठीक ठीक है भाई और वो भाई मैंने उसको भेज दिया गुरुवारी यार मैंने तो समझ नहीं आया मैंने तो संदीप से बात कर ली AK तिवारी सर आर यू ऑनलाइन? सर आवाज नहीं आ रही है सर प्रॉपर। हेलो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम। ओके 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 सर ओके Just wait to 2 minutes more. Start होगा अभी just wait.
तो करना मैं पेट में वो ना अभिमन्यु में ही तो बहन पेट में सुन ले वो सब कुछ हो रहा है काम करते हुए दिमाग में कान पे जाता रहे
Okay, okay. वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। आज का जो जर्नी स्टार्ट करने के लिए हम लोग रेडी हैं। माफी चाहूंगा, थोड़ा देरी हुआ, कोई भी कारण हो सकता है उसका, मुझे भी समझ में नहीं आया। एनीवे, तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ एलटीटीसी अपने सीनियर फैकल्टी ए.के. तिवारी सर का मैं स्वागत करता हूं सर, और ये पूरा सेशन आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ठीक है सर, तो ऑन बिहाफ ऑफ एलटीटीसी यू आर वेलकम टू हियर। Thank you, KKG, for your technical support. A very good morning to all the participants, and my best wishes for the upcoming exams. I hope you will learn and perform in a very well manner, and your aspirations may fulfill. This is my prayer to the God. So today's topic is BSNL CDA rule, though we are aware, but some points we should remember from the exam point of view. That is how we are just going through it. So I have opened this PDF that is meant for your exam. So important points I'll touch upon because 1 hour is given. It's a big topic, I can say. So important things I'll put up. So basically, BSNL CDA rule, the full form, as we know, is Conduct, Discipline and Appellate Rules 2006. So it has 61 rules. Time to time it is being updated, like recent update came in 5th of November 2020, but the name remains BSNL Conduct, Discipline and Appeal Rule 2006 because they were incorporated in 2006. You have to remember this date. This date is important, that the BSNL CDA rules came into effect from 10th of October 2006. So this one information is important as far as exam point of view is concerned. So this is rule 1, which is about that short title and commencement. So this is rule 1 of BSNL CDA rule. Rule 2 is application to whom this rule is applicable. So it has very clearly given that the rule is applicable to all employees of BSNL, maybe on deputation, maybe regular employees, maybe absorbed employees of BSNL, except there is one exception, employees who are governed by Industrial Employment Act 1946. So this particular portion, except these persons, it is applicable to all regular employees of BSNL, maybe on deputation, maybe absorbed, maybe recruited by BSNL, whatever the case may be, right? So because we have some, we all know that still we are having telecom factories, and we have recruited employees during the DOT period as under Industrial Employment Act also they are covered. So those employees are only exempted by application of this rule. So certain definitions are there in Rule 3. Various authorities are there. Just we can go through. Like appellate authority means the authority is specified in this behalf in the schedule. So in the last, we will see certain schedules, who is appointing authority, who is appellate authority, disciplinary authority. So in that table, we will see, but you have to remember that Rule 3 is definitions of different authorities. Rule 4 is a general rule which gives what is expected of an employee of BSNL. So every employee of the company, that is BSNL, shall all the time maintain absolute integrity. Means work always in the interest of the company. In no way our act should go against the interest of the company. Maintain devotion to the duty. Do nothing which is unbecoming a public servant. So we know we are all public. We are a public company. We are public servants. So we are answerable to public. We are answerable to the parliaments. So that is why we have to be courteous in dealing with public. Our behavior should be decent because
we are employees for 24 hours. It is not that when our duty goes off, say 10 to 5:30, my normal duty hours are there. I am now outside my office premises and I am not on duty. So it does not mean anything which we commit out of duty hours, out of our own office premises. So no, for we are in public servant for 24 hours. So that way we have to maintain our conduct. Next is conduct at all times in a manner conducive to the best interest of the company or which will enhance reputation of the company. So again, I repeat, like maybe some misconduct happens and maybe some of the employees say he's taken behind the bars, he's taken into police custody. So the news will flash in newspapers like a BSNL employee is arrested. So the name of company is involved with us. We are not only individuals, we are employee of the company. So our act should in no way lower the image of the company in the eyes of the general public. That is the next rule. Be courteous and prompt in his official dealing with the public. So our public dealing should be prompt, transparent, courteous. Every employee of the company holding a supervisory position shall take all possible steps to ensure the integrity and devotion of duty of all employees at all times under his control and authority. So a superior has this duty that not only he should maintain discipline and devotion to duty, integrity, but he should ensure that all his subordinates are also behaving what the company expects from every employee of BSNL. No employee of the company in performance of his official duty or in exercise of powers conferred to him act otherwise than in best judgment except when he is acting under direction of his official superior. Meaning that all the time we should be our own best judge, that we are working in the interest of the company. We are not going against the interest of the company. Whatever powers are given to us, we will work in the favor of the company. Only in case when you are given official written orders by official supervisor, then only you have to perform as per that maybe. Otherwise, in your best judgment, you have to work as per your best judge. You are the best judge. You have to do all the acts which favors the company, which are in the interest of the company. Orders should be in writing. That is very clear by this particular. Ordinarily, they should be in writing. And whenever orders are given in oral, they should be covered by written orders. They should be confirmed by written orders immediately thereafter. Maybe there is some need and oral orders are given, but they should be covered by written orders. Employee can also ask whenever he's given oral orders, he can ask for confirmation of orders in writing. Next one is very, you can say important one. No employee shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at her workplace. So this is considered as a very serious offense, misconduct, and punishments are there. So not only this, if you are a supervisor, you have to ensure that none of your subordinate is indulged in sexual harassment of women at workplace. So you have to control your subordinates also. Rule 5 is again, so this was all what were the expectation of company from an employee. This was the rule 4. Rule 5 is regarding misconduct. So very important. Many questions may come from this area also. So you have to focus on this area. Without prejudice to the generality of the term misconduct, the following acts and of omissions and commissions shall be treated as misconduct. So this is a long list, 32 points are defined here under Rule 5, which are treated as misconduct.
So theft, fraud, or dishonesty in connection with business or property of the company or property of another person within premises of the company. So nothing should happen. No theft, no fraud, no dishonesty with the business or property of company shall happen. So both the things are written, not only the property, but also the business. So we should in no way act that it will support our competitors or our competitions. So not only about the company, property of the company, but say some civil work is going on, some contractor has put some items in the premises of the company. If they are stolen, still it is treated as dishonesty or misconduct because they were under my possession, they were under my control. Maybe some cable drums, anything for that matter. So that we have to take care. We are custodian for that item, so we have to be careful. Taking or giving bribe or any illegal gratification or indulging in corrupt practices. So no taking or giving bribes or otherwise illegal gratification, any monetary benefit, which is illegal, cannot be taken because it can be directly in terms of money or it can be indirect, maybe some favor, some travel, some transport, or any kind of favor. Because it may affect our decisions and we may go against the interest of the company and favor because we are taking some favor. Possession of pecuniary resources or property disproportionate to known sources of income by employee or on his behalf by another person, which the employee cannot satisfactorily account for. So this is the area where we know many disciplinary cases are happening, pending and contemplated because the employee maybe by mistake is not announcing, not filing his annual property returns, and later on they are discovered and now we are into trouble. So we have to all the time, we have to be careful about the acquisition of movable and immovable properties, and we should clearly show that how we are procuring them. In the sources of income should be known, declared, otherwise it is a misconduct. Point 4 under Rule 5, furnishing false information regarding name, age, father's name, qualification, ability, or previous service, or any other matter germane to the employment at time of employment or during course of employment. Meaning that we should not change or try to change or provide false information beyond facts about name, age, father's name, or qualification, maybe the service which we have done prior to joining BSNL, all this. So there should not be any false statement. Point number 5 is related to this same: willful insubordination, disobedience, whether or not in combination with others of any lawful or reasonable order of his superior. So two things are written. We should not do disobedience or insubordination for any lawful and reasonable order of superior. So if it is as per the company's expectation, we should always honor it. Absence without leave or overstaying, sanctioned leave without sufficient grounds or proper or satisfactory explanation. So whenever we are taking leave, we have to take leave. We shall, in all possible circumstances, take prior sanction. If not possible, we should timely intimate and later on apply in, say, ESS as of now and take sanctions. If we want to overstay, in that case also we have to inform, otherwise it is a misconduct.
habitual late or irregular attendance. That is also, it also amounts to misconduct. Neglect of work or negligence in performance of duty, including malingering or slowing down the work. So maybe we are neglecting, we are not doing work properly, or maybe we are trying to slow the things, showing that no, we are not able to do it. Maybe work is to be done in one day, but we are taking 7 days, 10 days. So it is amounting to be misconduct. Sabotage or damage to the property of the company. This shall in no case shall happen. Maybe sometimes people indulge into it, maybe due to some reason or the other, but it shall in no case, we should go into this area. Acting in a manner prejudicial to the interest of the company. Again, repetition. None of our act or decision shall be against the interest of the company. Interference or tampering with any safety devices installed in or about the premises of the company, violating the safety or environmental regulation or about the premises of the company. So whatever company has put, maybe cameras are put, maybe some machine is put, whatever, we have to follow all the regulations, orders of the company. Drunkenness or riotous or disorderly or indecent behavior in the premises of the company or outside premises also, where such behavior is related to or connected with the employment. As I've given the example, BSNL employee is involved in the right or dispute or some misbehave. So that should not happen. Drunkenness within premises of the company is not allowed. Gambling within premises of the company is not allowed. Smoking within the premises of company where it is prohibited. So maybe some area, some exchange, some equipment room. So we should not do it. Over and above, Government of India orders are there that it should be only in designated place, not everywhere, not in public place. Collection without permission of competent authority of any money within premises of the company except as sanctioned by the law of the land. So we should not, maybe in the name of some social, cultural or any other organization, we should not collect money. Sleeping while on duty, so it is not allowed. Commission of any act which amounts to a criminal offense involving moral turpitude. So no criminal offense. If there is any criminal offense, we know if employee is put behind the bar more than 48 hours, it amounts to suspension of the employee. So even it is outside the company premises, company is not involved, company's business is not involved, but yes, impact will be there. Absence from employee's appointed place of work without permission or sufficient cause. So normally we should be present in the office. And if we are going away from the appointed place, there should be sufficient grounds or reasons. Purchasing properties, machinery, stores from or selling properties, machinery, stores to the company without express permission in writing from the competent authority. Any procurement, any sale of companies for the company or of the company's stores, items shall be with the written permission of competent authority. Commission of any act subversive of discipline or good behavior, it should not happen. Next is very important, subletting or unauthorized use of company's premises, equipment, tools, or any other property of company. So we cannot sublet, like I've taken a BSNL accommodation quarter, staff quarter. I cannot sublet it. I cannot sublet any equipment, maybe OTDR or splicing machine. It should not happen. पार्टिसिपेंट की आपस में बात बंद हो जाए प्लीज.
आप अपने माइक्स को म्यूट कर लीजिए। मैंने अर्थ कहीं और है। सर म्यूट ऑल, परमिशन विड्रॉ करिए सर, ओके ओके, बाद में अलाउ कर कैसे जा दीजिए। रही है? हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? सर मिल रही है। हाँ जी, तो अपने माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। है, ओके सर। थैंक यू। Right. So I cannot sublet any tool, machinery or premises of the company. It's not allowed. It's a misconduct. Misuse of any amenity provided by the company. So any amenity which company is providing to you, you cannot misuse it. Anything. Maybe the mobile facility, maybe any other facility. Participation or inciting others to participate in strike, gherao, go slow, or similar agitational activities. So two things are there. You should not participate and you should not motivate or incite or abet others to participate. Both are not allowed. Again, Act 24 is again the same thing. Act of sexual harassment of women at her workplace. This is misconduct. Act of lowering the image of company in the eyes of public. This is again a repetition. Tampering with or willfully damaging or falsification of company's record or impersonation or forgery. So, and no such act is allowed that you are playing with the record, tampering it, doing some impersonation of some other person or doing some forgery. It's not allowed. Misconduct. Making representation in order to bring any political or outside influence to bear upon any superior authority for posting, transfer, or employment. So, like maybe some political influence we are bringing into to get a favorable position, place. So it is misconduct. Making representation or sending grievances or petitions to member of board of directors. Representation should be through proper channel, not the direct. We cannot write directly to CMD, board of director, or any superior. It should be through proper channel only. Attending or holding meeting other than course of in the course of duty within the company's premises without proper written permission of competent authority. So we cannot hold any meeting in the office premises in duty time without permission. Both the things, permission for both should be there for holding or attending the meeting and for doing it in office premises. Distribution or exhibition of any newspaper, handbill, pamphlet for any reason, maybe social, maybe political, maybe cultural. No, we cannot do it. Deliberately making any false statement before a superior, knowing it to be false. So this is also a misconduct that we know the information we are providing is false, but still we are trying to confuse our superior. Should be very careful because proxy registering means if we are registering it on behalf of another employee, so it is a misconduct. Spreading or encouraging casteism, regionalism, communalism. तो जाति, क्षेत्र, समाजवाद से दूर हमको इसको फैलाना नहीं है. Abatement of any attempt or अबेटमेंट ऑफ एनी सच अमाउंट्स टू मिसकंडक्ट. ऐसा कोई भी एक्ट हम ना करें या किसी को बढ़ावा ना दें, किसी को उत्साहित ना करें जो मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है. स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स or false information, this is repetition. Carrying out money lending or any other private business without written permission of the company. We cannot do any other business, any other service, any other work without prior permission of the company. Habitual indebtedness or insolvency. तो हम कर्ज में हो या दिवालिया हो, ये कंपनी के लिए मिसकंडक्ट है. Because
it will affect the company also. Banks will reach approach to company for this regard because you are a BSNL employee. Interference or righteous or disorderly or indecent behavior, ये repetition है. Again, next वाला important, writing of anonymous, pseudonymous letters or associating oneself in writing such letters in respect of company affairs. गुमनाम, छद्मनाम, दूसरे के नाम पर अगर हम कंपनी के मैटर्स में कुछ लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर में कुछ दे रहे हैं, it's a misconduct. Misuse of any advances or non-compliance with provisions and terms and conditions governing grant of such advance. से एक टेम्पररी एडवांस लेकर हम उसे मिसयूज कर रहे हैं, सो इट्स ए मिसकंडक्ट. Misuse of any official position by the employee in renting out their own premises to the company. घर पर टावर लगवाना है हमको या OLT रखवाना है, सो ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज नहीं होना चाहिए. Obtaining donation, advertisement, sponsorship by associations, NGOs formed by employee or their spouse, family members, from the contractors, vendors, customers, or persons having commercial relationship or official dealing with the company, that is BSNL. हमने कोई NGO खोल रखा, हमारे फैमिली ने कोई मेंबर ने कोई NGO खोल रखा है, so we should not take or try to take contributions from our vendors, contractors, customers, or other business organizations with which we are having some business dealing. This was rule 4. Some 42 points were there, very important because this is a big area where misconduct happens and disciplinary proceedings against the employee can be initiated, and maybe if proven, punishments can happen. So we have to be very careful from exam point of view also. These points are very important, and as a officer also they are important. Rule 6, employment of near relatives of the employee or of the company in any company or firm having business relationship with the company. So same thing, we should not do it without prior permission. We have to take prior permission if we are trying to, because we may use our official position to influence employment for our near relatives, and in turn we may do some favor to the organization which may go against the interest of the BSNL. So it should be with the prior sanction of previous sanction of competent authority. Then only we can seek such employment for our near relatives. Joining of rule 7 is about joining of unlawful association by the employee. So any organization which is banned by maybe central government, state government, or any public order, so we cannot join it. Rule 8 is about demonstration and strike. So you can see the same points are further elaborated, which were declared as misconduct. No employee shall engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interest or of the sovereignty and integrity of India. देश की संप्रभुता और एकता के अगेंस्ट में कुछ है, वो नहीं हो सकता, उसके अगेंस्ट में कोई डेमोन्स्ट्रेशन. सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, friendly relationship with foreign states, public order, decency or morality, which involve contempt of court, defamation or incitement to an offense. तो ऐसा कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जो देश के अन्य राष्ट्रों से संबंधों के अगेंस्ट हो, किसी पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो, किसी कोर्ट के कंटेम्प्ट को इनवाइट करता हो. Resort to or in any way abet any form of strike or coercion or physical duress in connection with any matter pertaining to his service or any other service of any other employee of the company. तो हम अपनी सर्विस या अपने किसी साथी के सर्विस के लिए इस तरह से कोई स्ट्राइक नहीं कर सकते या उसे प्रोवोक नहीं कर सकते, उसे प्रॉम्प्ट नहीं कर सकते हैं. Rule 9, connection with press or radio, television or other media.
नो एम्प्लॉय शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन, देखिए बार बार लिखा जाता है प्रीवियस सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ओन wholly or in part conduct or participate in editing or management of any newspaper or other periodical publication or electronic media. पूरा कवर कर लिया है. So we cannot start publishing a paper or any electronic media, or we cannot even be in editing or management of such print or electronic media. So we have to have the previous sanction of competent authority. If he accepts an advisory post without any remuneration, he shall intimate the fact that with details of the periodical to the company, which in its judgment may require the employee to disassociate himself from the newspaper periodical if company considers such association to be prejudicial to the company's or government interest. तो आपको बताना है, आपका हो सकता है हॉनरेरी आप कर रहे हो, कोई पैसा ना ले रहे हो, बट आपको प्रायर सैंक्शन लेना होगा क्योंकि कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कंपनी को लग सकता है कि है, तो कंपनी आपको परमिट नहीं करेगी. No employee shall accept with the previous sanction of the competent authority or in the bona fide discharge of his duties, publish a book, participate in a radio, television broadcast, or contribute any article or write any letter, either in his own name or anonymously, pseudonymously, or in name of any other person to any newspaper, periodical, और अदर व्हीकल ऑफ पब्लिसिटी. तो देखिए अदर व्हीकल ऑफ पब्लिसिटी भी लिख दिया है, ऐसा नहीं कि केवल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की, सोशल मीडिया भी इसमें आ जा रहा है. सो वी शुड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी सच radio, television broadcast or write any article without again previous sanction of competent authority. This is a very important point. We have to all the time be cautious in writing anything which is going in public, in a public platform. Rule 10, taking part in political activities. So this is in no case it is allowed. Or any political connection is in no case it is allowed. No employee shall be a member of or otherwise associated with any political party or an organization which takes part in politics, nor he shall take part in or subscribe in aid of or assist in any manner any political movement or activity. किसी भी political activity को किसी भी तरह से हमको मदद या उसका हिस्सा नहीं बनना है. No employee shall canvass or otherwise interfere with the or use his influence in connection with होते हैं. इसमें कहीं भी हमको किसी भी रूप में कैनवास करना अलाउड नहीं है, ना हम किसी तरह का अपना इन्फ्लुएंस उसमें यूज कर सकते हैं. बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं, बहुत सारे लेवल पे 3 टियर हमारा आर्किटेक्चर है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, फिर हमारी असेंबली है, फिर हमारे पार्लियामेंट है. किसी भी तरह का कोई इस तरह का कहीं भी इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसमें हम इंटरफियर नहीं कर सकते, उसका पार्ट नहीं बन सकते हैं. उसमें कोई एड नहीं कर सकते. If the question arises whether party is a political party or whether any organization takes part in politics or whether any movement or activity or of the organization is subversive of government company law by law established, the decision of government company shall be final. So आप इसमें डिबेट नहीं कर सकते, कंपनी का डिसीजन फाइनल है कि ये एक्टिविटी और ये मूवमेंट पॉलिटिकल है या नहीं है. Rule 11 is very important because today is the time of social media, Facebook, Twitter, WhatsApp, Insta, and whatnot. So on no platform we should comment against the policies of government or the company. No employee shall in any radio broadcast, telecast through any electronic media or in any document published under his name or तो किसी भी तरह से नहीं कि हम कोई छद्म नाम यूज कर रहे हैं या
गुमनाम कर रहे हैं या किसी और के नाम से करवा रहे हैं, वी कैनॉट। पेन नेम और स्टूडियो नेम और इन कम्युनिकेशन टू प्रेस और एनी पब्लिक अटरेंस मेक एनी स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट नहीं दे सकते, ये दो दिया हुआ है। which has the effect of adverse criticism of any policy or action of the central or state government or of the company। किसी भी पॉलिसी का, मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मे बी स्टेट गवर्नमेंट की है, मे बी हमारी अपनी कंपनी की है, उसके अगेंस्ट में कोई भी सच इस तरह का स्टेटमेंट किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक फोरम पर नहीं दे सकते। विच इज केपेबल ऑफ एम्बेरसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द पब्लिक। तो कंपनी और पब्लिक के बीच में रिलेशन बिगड़ रहे हो, ऐसा कोई अटरेंस, ऐसा कोई स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते। और मैं हमेशा बताता हूं कि सोशल मीडिया के समय में ये सब चीजें हमसे हो जाती हैं। हम किसी चीज को या तो उसका समर्थन कर देते हैं, उसको अप्रिशिएट कर देते हैं, तो इट मे गो अगेंस्ट अस। रूल 12, एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी। हम लोग कहीं पर एविडेंस बिना प्रॉपर सैंक्शन के नहीं दे सकते हैं। इसके कुछ इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस हैं कि इफ इट इज बाय सम कोर्ट, ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट, कंपनीज ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सम law making agency, then we have to appear in such evidence process. We can become without permission, otherwise we have to take prior sanction for becoming evidence in any case। Rule 13, unauthorized communication of information। तो ये सीक्रेसी का एक बड़ा पार्ट है कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेसी को हमको हर समय मेंटेन करना है। ऑफिशियल पोजीशन में वी मे बी इन पोजीशन ऑफ many things, many information, many documents which we may be knowing, but we cannot simply pass it on to anybody। No employee shall accept in accordance with any general or special order of the company or in performance in good faith of the duties assigned to him, communicate directly or indirectly any official document or any part thereof or information to any employee or any person to whom he is not authorized to communicate such document or information। ये misconduct है आपके लिए। Rule 14 is about inventions। Any employee who while in service of the company makes any discovery, invention or modification to process or method or equipment resulting in improvement of company's services, operations, products shall forthwith communicate the fact to the company। वो कंपनी का कॉपीराइट होगा, कंपनी का हिस्सा होगा। एम्प्लॉय अपने नाम पर नहीं कर सकता क्योंकि उसने कंपनी के रिसोर्सेज को यूज किया है, कंपनी के ड्यूटी आवर्स में उस काम को किया है। सो ही कैन नॉट क्लेम टू बी हिज ओन प्रॉपर्टी, हिज ओन पेटेंट, हिज ओन कॉपीराइट। नो, इट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। गिफ्ट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। पर्सनल रेगुलर सर्विस में भी हमको इसका ध्यान रखना है। नो एम्प्लॉय शैल एक्सेप्ट or permit any member of his family or any other person acting on his behalf to accept any gift। हमें गिफ्ट किसी से भी लेना नहीं है, हमें भी, हमारे फैमिली मेंबर्स को भी। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स। On occasions such as wedding, anniversary, funerals, religious functions, when the making of gift is in conformity with the prevailing religious or social practice, an employee may accept gift from his near relatives or from his personal friend having no official dealing. This is very important. Having no official dealing with him. But he shall make a report to the competent authority if the value of the gift exceed। अब ये values आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रुपीज गिफ्ट का वैल्यू कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए? ₹2000 इन केस ऑफ ग्रुप सी एंड डी, जिसको हम नॉन एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ₹5000 in case of group B and above up to JG, मतलब DGM तक। ₹8000 in case of SAG and HAG
GM CGM के केस में ₹10,000 इन केस ऑफ CMD एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फुल टाइम, क्योंकि पार्ट टाइम डायरेक्टर्स भी होते हैं, गवर्नमेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, फुल टाइम डायरेक्टर्स के लिए है। सो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी, 2, 5, 8 और 10,000 की हैं। डाउरी, नो एम्प्लॉय शैल गिव और टेक और अबेट द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी। ना तो लेना देना है, ना ऐसे किसी एक्ट को आपको प्रोवोक करना है। डिमांड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंट्स और गार्डियन ऑफ अ ब्राइड और ब्राइडग्रूम एज द केस में बी एनी डाउरी। डिमांड भी नहीं करना है, क्योंकि ये सब मिसकंडक्ट की कैटेगरी में पहुंचता है। फिर रूल 17, प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट टू प्रीवियस प्रोविजन ऑफ सब रूल 2, जो नीचे नीचे आता है, इसमें दिया नहीं हालांकि। नो एम्प्लॉय शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी engage डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी ट्रेड और बिजनेस, तो किसी ट्रेड और बिजनेस में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। नेगोशिएट और अंडरटेक एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, आपको और कोई एम्प्लॉयमेंट भी नहीं लेना है कि सर मेरी ड्यूटी तो 10 से 5:30 है, उसके बाद मैं फ्री हूँ तो मैं कहीं और काम कर लूँ। नो, इट इज नॉट अलाउड। इसके लिए आपको प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत है, बड़ा क्लियर है। ऐसा कुछ भी आप कर रहे हैं तो विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दिस इज रिक्वायर्ड, otherwise you are not authorized to do it. Hold an elective office or canvass to a candidate or candidates for an elective office in any body whether incorporated or not. किसी elective office का आप हिस्सा नहीं बन सकते हैं। Canvass in support of any business of insurance agency, commission agency owned or managed by any member of his family. और ऐसी कोई जो नॉर्मली होता है कि एम्प्लॉय के स्पाउस इंश्योरेंस की एजेंट होती हैं, तो उस केस में उन्हें उसकी कैनवासिंग नहीं करनी है। ऐसे किसी बिजनेस को कोई कमीशन एजेंसी है, उसकी कैनवासिंग नहीं करनी, उसके लिए किसी सबऑर्डिनेट पे प्रेशर नहीं डालना है कि यू हैव टू टेक दिस पॉलिसी, विच हैज हैपेंड इन प्रीवियस। और जो रूल 2 की मैं बात, सब रूल 2 की मैं बात कर रहा था, यहाँ हालांकि आपके सिलेबस में इसको लिया नहीं गया है, बट आपकी जानकारी के लिए कि वो है कि आप किसी ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां जिसका उद्देश्य, जिसका एम है, गोल है कि वो प्योर चैरिटी कर रहा है, उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। जैसे हमारी अपनी टेलीकॉम कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उसमें हमारे एम्प्लॉय, हमारे अपने एग्जीक्यूटिव्स और नॉन एग्जीक्यूटिव्स उसमें इलेक्शन के द्वारा और पोस्ट के ऑफिस बियरर बनते हैं, वहां भर अलाउड है। रूल 17 है सबलेटिंग वेकेशन ऑफ कंपनीज एकोमोडेशन। जस्ट कितना टाइम कब तक करना? ओके, ठीक। हाँ, आप टाइम पर मुझे फीडबैक देते रहें। काइंडली गिव मी फीडबैक अबाउट द ऑडियो एंड द display of my PDF. If you are not able to see it any point of time, you should please chat it so that we can take care of that and do a corrective action, right? Thank you. अभी ठीक है ये ऑडियो और डिस्प्ले आपको? Any quick feedback from one single person? मैसेज में डाल दीजिए से प्लीज, इफ एवरीथिंग सर इज अच्छा ओके। है, आवाज अच्छा है सर, नो इशू। ओके सर एक ओके रिक्वेस्ट था, कैन यू प्लीज लेट इन फ्रॉम द आई थिंक देयर इज अ वेटिंग लिस्टनर वेटिंग रूम because we are not able to log in from PC. I have actually joined from my mobile. I just wanted the screen to be a bigger. यू प्लीज ज्वाइन इन यूट्यूब एक्चुअली, आप सर यूट्यूब एक्चुअली पर ज्वाइन YouTube कर लीजिए, क्योंकि ये सर जूम का तो हमारे लिमिटेशन ITPC है। में अलाउड नहीं है, YouTube अलाउड नहीं है। ज्वाइन कर लिया सर, वेटिंग रूम आ, में थे एक्चुअली, ओ, बहुत लोग थे। ओ, थैंक ओ, यू सर, ओ, थैंक ओ, यू थैंक आप ऐसे ऐसे किसी भी चीज को आप प्लीज कहीं तो और प्रॉम्प्ट किसी से करवा दिया करिए, अगर ऐसा हो रहा यू। है ओके कुछ तो, ओके है सर। ना? नहीं वही बिकॉज अभी एकदम सडनली 92 हो गया सर, 72 था पहले एकदम, अच्छा, यानी सो मैंने मेनी आपके पीपल वेयर देयर। आपके इनपुट पे मैंने कर दिया है, बट नॉर्मली वी आर प्रॉम्प्टिंग एवरीवन टू गो ऑन यूट्यूब। आपके यहाँ स्पेशल केस है, सो नो इशू, है ना? थैंक यू क्योंकि सर, इसका थैंक्स अ लॉट लिमिट है, 100 का लिमिट है इसका, है ना? बियॉन्ड 100 इट सर। कैन नॉट गो। राइट, ओके थैंक ओके यू। राइट, थैंक यू। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। यस सर, यस।
सबलेटिंग एंड वेकेशन ऑफ द कंपनीज एकोमोडेशन, ये रिपीट है। Okay. No employee shall sublet, lease or otherwise allow occupation by any other person of company's accommodation which has been allotted to him. मैंने ऑफिशियल क्वार्टर लिया है और मैं उससे किसी को सबलेट करूं, दिस इज नॉट परमिटेड। ओवर स्टे का भी रूल है। नो एम्प्लॉय आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ हिज अलॉटमेंट ऑफ द कंपनीज एकोमोडेशन, the employee after cancellation of his allotment of the company's accommodation vacates same within the limit prescribed by allotting authority। जितना दिया उसने 2 महीने का समय दिया है तो आपको 2 महीने के अंदर उसे वैकेट करना है, ओवर स्टे नहीं करना है। अप्रोचिंग फॉरेन गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो ये हमें नहीं करना है। No employee shall approach directly or indirectly a foreign government or a foreign organization for financial assistance for visiting foreign country or attending a कोर्स अब्रॉड विदाउट परमिशन ऑफ द कंपनी। तो ये कंपनी की परमिशन से ही संभव है कि किसी विदेशी संस्था या विदेशी सरकार को आप सीधे संपर्क कर लें किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरोइंग, नो एम्प्लॉय शैल सेव इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विथ अ बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, LIC, HDFC, सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, HDFC, or a firm of standing, borrowing money from or lend money to otherwise place himself under pecuniary obligation to any person with whom he has or likely to have official dealings, or permit any such borrowing, lending, pecuniary obligation in his name or his benefit or for the benefit of member of his family। तो ऐसे किसी कंपनी, जब हम किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहे हैं जिसके साथ हमारी ऑफिशियल डीलिंग, उसके साथ हम इन पर्सन डील कर रहे हैं, तो वहां हमें बहुत केयरफुल होना है, बिकॉज इट शुड इन नो वे अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो उसके साथ हमें नॉर्मली डीलिंग इस तरह की नहीं करनी है कि कोई बोरोइंग, लेंडिंग, पिक्यूनरी मतलब मॉनिटरी नहीं लेना है। ये उन्हीं सब रूल्स का, मैंने जैसे कहा पहले भी कि ये उन्हीं सब रूल्स का थोड़ा सा डिटेल है जो हमने पहले देखा है। तो रूल 20 इज अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टेडनेस, ये अलाउड नहीं है। नो एम्प्लॉय हु अप्लाइज और टू बी और इज एडजस्टेड और डिक्लेयर इंसॉल्वेंट शेल forthwith an employee who applies to be or adjudged or declared insolvent shall forthwith report the fact to his competent authority। अगर कहीं ऐसा हुआ है, कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित कर रहा है अपने आप को, या किसी उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया है किसी ऑर्डर के द्वारा, वो कंपनी को, कंपिटेंट अथॉरिटी को इमीडिएट रिपोर्ट करे इन राइटिंग। रूल 21 इज अगेन इंपॉर्टेंट। मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी का एक्विजिशन, सेल, ये सब परमिशन के साथ होना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए। जैसा मैंने कहा, मिसकंडक्ट माना जाता है APRs में अगर ये चीजें रिफ्लेक्ट नहीं होती, परमिशंस नहीं होती हैं, तो काफी मुश्किल होता है हमको अपने आप को सेव कर पाना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। No employee shall accept with the previous knowledge of competent authority, acquire or dispose any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family। तो प्रीवियस सैंक्शन की बात है, प्रीवियस नॉलेज की बात है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको परमिशन होनी चाहिए। किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लीज, मॉर्टगेज, परचेज, सेल, गिफ्ट, किसी भी तरह की चीज हो तो आपको उसकी परमिशन होनी चाहिए। No employee shall accept with the previous sanction of competent authority enter into a transaction concerning any immovable or movable property with a person or firm having official dealing with द एम्प्लॉय और हिज सबॉर्डिनेट। तो आपको ऐसे किसी व्यक्ति या संस्था के साथ में ट्रांजेक्शन नहीं करने हैं इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी के जिसके साथ आपकी फर्म के ऑफिशियल डीलिंग्स हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल डीलिंग हैं। नो एवरी एम्प्लॉय शैल रिपोर्ट विद इन ए मंथ
to the competent authority every transaction concerning movable property owned or held by him in his own name or in the name of any member of his family if the value of such property exceeds. तो मूवेबल इमूवेबल के केस में तो हमेशा आपको परमिशन चाहिए, वैल्यू की कोई बात नहीं है, ये ध्यान देने की बात है आपके लिए। जब मूवेबल प्रॉपर्टी है, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल जैसी कोई चीज आप जो मूवेबल कैटेगरी की है, तो वहां पर लिमिट्स हैं एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के केस में। तो ये देखिए लिमिट्स हैं यहाँ पे। इफ द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्सीड्स ₹1 लाख इन केस ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव, 2 lakhs इन केस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। तो ये आपको इसकी प्रायर परमिशन लेनी है या इसकी इंटीमेशन देनी है आपको 1 month के अंदर। ये ड्यूरेशन याद रखिए, विद इन ए 1 month इसकी इंटीमेशन आपको देनी है मूवेबल के केस में विद इन ए मंथ। जब आपने ट्रांजेक्शन कर लिया हो ये, उसके बाद 1 महीने के अंदर दे देना है आपको। Rule 21A, restriction in relation to acquisition or disposal of immovable property outside India, any transaction with foreigners। तो वो बिना परमिशन के आपको नहीं करना है। कहीं विदेश में कहीं भी immovable प्रॉपर्टी या कोई ट्रांजेक्शन किसी फॉरेनर के साथ कर रहे हैं हम, तो हमको इसकी प्रायर परमिशन चाहिए। हेलो, एम आई ऑडिबल? आप चैट में बता दें अगर वॉइस ना मिल रहा हो, आपको प्रेजेंटेशन ना मिल रहा हो। सो लेट अस बी क्विक बिकॉज नेक्स्ट स्पीकर इज वेटिंग इन। सो rule 22 is canvassing of non-official or other outside influence. So no employee shall bring or attempt to bring any political outside influence। ये हमने देख लिया था, ट्रांसफर पोस्टिंग या किसी भी बेनिफिट के लिए। Rule 23, restriction regarding marriage. So no employee shall enter into a contract marriage with a person having living spouse। किसी के साथ जिनकी ऑलरेडी स्पाउस है उनके साथ मैरिज में मैरिज नहीं कर सकते हैं, या एम्प्लॉय अगर मैरिड है उनकी स्पाउस लिविंग है तो वो किसी के साथ मैरिज नहीं कर सकते हैं। एडिशनली इसमें यह भी है कि अगर एम्प्लॉय एक से ज्यादा मैरिज नहीं कर सकता अगर उसका वो पर्सनल लॉ उसको अलाउ करता है उसको छोड़कर।
जैसे कुछ कम्युनिटीज हैं वहां पर उनका पर्सनल लॉ कहता है कि दे कैन मैरी मोर देन वन पर्सन, सो वो उसको छोड़ दें, तो अदरवाइज अगर आपका पर्सनल लॉ अलाउ नहीं करता तो यू कैन नॉट मैरी मोर देन वन, एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते हैं। रूल 24 कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स, तो ये अलाउड नहीं है, जिससे कंपनी के परफॉर्मेंस में आपके इम्पैक्ट आता है। 25 इज रिगार्डिंग विंडिकेशन ऑफ ऑफिशियल एक्ट्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉय। रूल 26 है क्लासिफिकेशन, तो दो ही तरह की सर्विस है बीएसएनएल के अंदर, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव, तीसरी कोई कैटेगरी है नहीं बीएसएनएल में। रूल 27 अबाउट कंस्टिट्यूशन ऑफ सर्विस। रूल 28 क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, तो क्लासिफिकेशन भी दो ही है, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दो ही है हमारे पास। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो नीचे दिया हुआ शेड्यूल, उस टेबल को आपको ध्यान रखना, उसमें से क्वेश्चन जरूर फ्रेम होंगे। रूल 30 है सस्पेंशंस के बारे में कि कब कब सस्पेंड कर सकते हैं, तो तीन कंडीशन यहाँ दी है। वेयर ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एन एम्प्लॉय इज कंटेम्पलेटेड और पेंडिंग। Second is where, in opinion of authority aforesaid, the employee has engaged himself or herself in activities prejudicial to the interest of the company. कंपनी के अगेंस्ट में काम कर रहा है तो सस्पेंशन हो सकता है। थर्ड है where a case against him is in respect in any criminal offense, यदि किसी क्रिमिनल ऑफेंस में उसके अगेंस्ट में कोई इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल चल रहा है तो उस एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जा सकता है। 31 बता रहा है उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस, जीवन गुजारा भत्ता, निर्वाह भत्ता कितना मिलना चाहिए। नॉर्मली 50% होता है अप टू 6 मंथ, और उसके बाद अगर कंपिटेंट अथॉरिटी चाहती है तो वो उसको 75% तक बढ़ा सकती है, या उसको लगता है तो 25% घटाकर 25% भी कर सकती है बेसिक का। सस्पेंशन पीरियड को क्या ट्रीट किया जाए, इसके लिए रूल 32 कह रहा है कि वो अगर उसके if the employee is exonerated and not awarded any penalties, the full pay and allowances which he would have been entitled to if he is not been suspended, उसको सब कुछ मिलेगा फिर, अगर उसको कोई एक्सोनरेट कर दिया, अगर कोई पनिशमेंट अवॉइड नहीं किया गया, अदरवाइज उसे प्रोपोर्शनल जैसा उसको पनिशमेंट दिया गया उसके आधार पर उसको दिया जाएगा। 33 है पेनाल्टीज के बारे में, तो मेजर और माइनर दो कैटेगरी के हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। माइनर पेनाल्टी में 5 कैटेगरी: सेंश्योर, विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे विथ और विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, रिकवरी फ्रॉम द पे ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी पिक्यूनरी लॉस, कोई मॉनेटरी लॉस हुआ है अगर एम्प्लॉय से ऐसा पाया गया। ई है रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे बाय 1 स्टेज फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। ये ध्यान रखिएगा, जो फर्क है वो नॉट एक्सीडिंग 3 years। विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ये दो चीजें हैं जो इसको मेजर कैटेगरी से डिफरेंट करती हैं। मेजर पेनाल्टीज, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन टाइम स्केल फॉर ए पीरियड, रिडक्शन टू ए लोअर टाइम स्केल ग्रेड और पे which ordinarily be a bar to promotion of employee to the next time scale। जहां बार है कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल। रिमूवल और डिसमिसल के डिफरेंस को याद रखें, रिमूवल में उसको किसी और गवर्नमेंट सर्विस के लिए एम्प्लॉयमेंट का एंटाइटलमेंट है, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। डिसमिसल होगा तो वो किसी और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को नहीं ले पाएगा, ये है। फिर रूल 34 डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को किस तरह से काम करना है बता रहा। रूल 35 के क्या प्रोसीजर उसको अपनाई जानी है माइनर पेनल्टीज के लिए। रूल 36 इज प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज। Rule 37 is action on inquiry report, because whenever a disciplinary proceeding is initiated against any employee under for some misconduct, so disciplinary authority is appointed and it appoints a inquiry officer and presenting officer. So what action inquiry officer has to do, and he will submit a report. So what actions are to be taken by disciplinary authority on inquiry report, that is what rule 38 is about. Communication of any orders which disciplinary authority passes
Rule 39 is about common proceedings when two or more employees are involved in a disciplinary case. So there will be common proceedings. Rule 40 is about a special procedure in certain cases. So that has to be followed. Rule 41, procedure concerning officers on deputation from central government or state government or other public undertaking for a local or from a local authority. So two cases, Rule 41, we want to take some employee from central state government or public authority on deputation. Rule 42 is reverse to it regarding employee lent to other government subsidiary. So that is what. Rule 43 is special provision of DOT staff on permanent absorption in BSNL. So certain, you can say, permission of DOT will be taken. The employee concerned will be allowed to be protected to extent that DOT will review such an order before a final decision is taken by BSNL. So some of the officers who were recruited by DOT, but now they are absorbed in BSNL. So a review of the order, any order that BSNL passes will be done by the DOT before it is implemented or final decision is taken. Rule 44 is about orders against which no appeal lies. Rule 45 is orders against which appeal can be made. So this is a difference you have to remember. Rule 46 is about appellate authority. Rule 47 is about limitation of appeal. So you have to remember the spirit. Appeal can be made within 30 days from the order. Okay. So that you have to remember. Rule 48 is about form and contents of appeal. क्या होना चाहिए? Rule 49 is about withholding of appeal. Rule 50 is transmission of appeal to the appellate authority. Rule talking of the appeal and review whatever. Rule 53 about power to relax time limit and condone the delay. Even after 30 days, the employee has done a appeal against the order of disciplinary authority. The appellate authority, if he thinks that the delay is justified, he can condone the delay and permit the appeal application. The appeal, we can say. Rule 54 about review. So order against appeal goes for review. Rule 55 is about retirement. So two ways: on medical ground, on attaining age of superannuation. Rule 56 is termination. That too about temporary employee, employee on probation, and permanent employee of BSNL. Rule 57 is about service orders, notices. Rule 58 is about repeal savings. Rule 59 is an interpretation. I am going little fast because next faculty is already waiting in. Rule 60 is about amendments. So BSNL board board has full power to modify, alter, relax, add, delete, whatever they wish. Rule 61 is disciplinary provisions for retiring employee. So even the retiring employees can also be considered if there is some case, disciplinary case comes out. So this is a schedule we have to remember, schedule of appointing disciplinary appellate and review authority, and it is based on the cadre, the anyone, any two. This is for non-executive, so you can see the IDA and CDA are given.
kindly. So I'm closing my session here. Thanks for patience listening. And any queries, anything you can put in the chat box. We'll review it later. Thank you. And I now invite next faculty, Mr. Naresh Singh. Thank you. Good morning, everyone. Yes, sir. Good morning, sir. Good afternoon. Kindly confirm, am I audible to everyone? So have a break or relaxation for 5 minutes. Thank you. Thank you, sir. हाँ आने आए मेरी क्लास होगी वो बात कर लेंगे अभी ब्रॉडबैंड डीएसएल टेक्नोलॉजी ब्रॉडबैंड नेटवर्क और हेलो हाँ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ अभी थैंक यू आप भी ज्वाइन कर रहे हो क्या सर गुड ओके थैंक यू हाँ सर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ कोई नहीं हम्म Very good morning to all of you.
Myself Naresh Singh and SDE LTTC Ghaziabad. And I am also the candidate of this AGM LIC. Okay. So I will try to cover 3 topics: DSL technology, broadband multiplay project of the BSNL, and what are the components of the broadband multiplay. These are the 3 topics. DSL technology is from the wired line business section, and broadband multiplay components from the data network and miscellaneous section. Okay. Dear participant, kindly confirm the slide share is visible and my voice is clear. Am I audible to everyone? Yes. Okay, Yes, sir. thank you. Yes, sir. Okay, so I am keeping you to mute all and not giving the permission to unmute. For any query related during my presentation, related to the topics, you can write in the chat box, and after completion of the topic, you can unmute yourself and ask the query. I will also monitor the different queries raised through the chat box. So I will try to cover these 3 topics, which are very important for the exam point of view. And my thinking is that the question may come from the contents provided by the BSNL to the exam conducting agency. So please stick on the contents available at the site from means training.bsnl.co.in, or you can say the CTMS website, from where you have downloaded the content. So in this ongoing session, we are going to discuss the broadband multiplay and its components. I think every participant is well aware about the broadband. So agenda of the topic will be broadband. What is the broadband? And what are the broadband access technologies? Broadband access project of the BSNL for providing the access to the customers for accessing the accessing to the website or different contents on the internet. And what are the value-added services being provided from these broadband connections. Then we will discuss the broadband multiplay project of the BSNL for providing the data connectivity along with the value-added services on these data connections. Then we will discuss the broadband network components. What are the components are required to provide the broadband connectivity, and how these are connected, and what types of the network a ISP is having for internet connectivity or for providing the broadband connectivity, and function of each and every network element, starting from the customer and up to the core network of the ISP, and some MSQs, multiple choice question I will provide, along with the answers and explanation from the PDF of LIC. So I have made the questions MCQs from the document provided for your preparation, which is provided by the BSNL, isn't it? So what is the broadband? Okay, आज की डेट में all data connection having minimum download speed of 512 kbps is categorized as a broadband connection,
as per the TRAI. But when the broadband services were started in year 2004, at that time, as per the DOT, an always on data connection that can support interactive services, including internet access, and has the capability of minimum download speed of 256 kbps to an individual subscriber from the point of presence of the service provider. So that is the definition at the time of the broadband services started by the BSNL in year 2004. As per this is the definition given in the document. So I am emphasizing nowadays every data connection having minimum download speed of it is omnipresent and affordable. So on a same telephone line or fiber line, individual can subscribe a data connection as per their requirement of download speed or as per the data they are supposed to download. And what are the requirements? Ubiquitous means it is present everywhere. The BSNL is having the biggest PSTN service providers, and we are having the telephone line in each and every corner of India. On that telephone line, we can subscribe the data collection along with our voice services. So that type of the ADSL broadband connection. And it is affordable from 250 rupees per month to the maximum differential speed plans are available. You can go through the different plans of on the broadband. You can see from the BSNL official website of the BSNL. So it is an economy enabler. Broadband is an economy enabler through innovation, private investment, and job creation. You know, we are providing the means jobs to the private operator in name of the third party OLT. So it is creating job. The broadband is measured by the speed, as I have stated, as per the data connection. Speed, we can say that is the broadband or narrowband data connection. That was the earlier data connection. And the most important, adoption and the competition we are facing in the area. So this is the BSNL. Broadband access technology, as we have XDSL, that is the copper-based broadband access technology. As I have stated, on a telephone line connection, the subscriber who are having the telephone connection, PSTN connection, can subscribe the data connection on that existing telephone line. So that type of the data connection, that is copper-based broadband access. This is our traditional broadband. The variant of the ADSL technology is ADSL, that is asymmetric digital subscriber line. Means the telephone line on which the broadband connection is subscribed will be termed as the DSL, digital subscriber line. So that may be the ADSL, means it is having more download in comparison of upload. Asymmetric or symmetric digital subscriber line. The same upload and download. BSNL are having the data connection of the ADSL variant as well as VDSL. So we were fulfilling the requirement of all types of the subscriber in the market with these two variants, ADSL and VDSL.
it is having the PCB, means card of the ADSL or VDSL, which can be plugged in the equipment of the ADSL technology that is known as the DSLAM, Digital Subscriber Line Access Multiplexer. By plugging in that card in that the slot available in the DSLAM, we can configure the ADSL data connection or VDSL data connection. In ADSL, there are three variants, further three variants, ADSL, ADSL2 and ADSL2 plus. ADSL2 means ADSL we can provide up to 8 Mbps download data connection and 1 Mbps upload. ADSL2 plus we can provide up to 12 Mbps download speed data connection and 1 Mbps upload data connection. In ADSL2 plus, we can provide 24 Mbps download speed data connection and around 1.5 Mbps upload data connection. So this is the maximum capability of the ADSL technology of the BSNL. As you know, the speed of any broadband connection is governed by the plan of the subscriber, or you can say in technical language that is the AAA policy of the subscriber, isn't it? So on subscription of the broadband service, every subscriber is provided a username and password. With that username of or user ID of broadband subscriber, the plan or AAA policy is binded and kept intact or stored in the database server. So according to that plan, each subscriber should get it speed. Okay. Now the BDSL, very high data rate digital subscriber line, means it is having two variants, VDSL and VDSL2. In VDSL, we can provide up to 55 Mbps download speed data connection and 15 Mbps upload. And the second variant of the VDSL, that is VDSL2, we can provide up to 55 Mbps again download speed data connection and 30 Mbps upload. So this is the maximum capability. Other variant, the full form of these variants can be high speed digital subscriber line and IDSL, ISDN digital subscriber line, integrated service digital network, that is PRI and BRI. You can go through the speed available on BRI and PRI connections. So we can provide from these data connection. So this is the maximum capability of the different variants available and type of the variants available for providing the data connection to our customer on existing telephone line. Okay. The second is the FTTX, fiber-based broadband access technology, that is our latest, through which we are providing the data connection. That may be FTTH, fiber to the home, fiber to the building, and fiber to the curb. These are the three variants, and these are the ITU and IEEE standard. The first three, APON, these are the three variants available. APON, ATM PON, and broadband PON, GPON, and GEPON. GEPON is also termed EPON. So this is the maximum capabilities available on these four variants or standard of the fiber-based broadband access technology. In case of the ADSL and VDSL, the connection between the subscriber modem and the DSLAM is made by using the ATM, asynchronous transfer mode, PVC values, permanent virtual channel values, that is 0.35 in case of the broadband and 0.32 in case of the VPN over broadband.
So, but in case of the fiber-based broadband, we can use the ATM as well as GEM values. GPON encapsulation method values are used to establish the logical data connection between ONT and OLT. So we are using the TDMA from ONT to OLT and TDM from OLT to ONT. So you should know, but here from the DSLAM or OLT up to the BNG, this is the layer 2 types of the net. For data transmission, data transportation, and accessing or configuring the different broadband network elements, we use the VLANs. So every service, every network element working in broadband multiplay is having a unique dedicated VLAN for that network element or that service. Like in case of the broadband services, we are having the inner VLAN. So every subscriber in DSLAM or in OLT are identified by the inner VLAN. So this is the ID of the subscriber of the subscribers. Inner VLAN are the, or you can say the internet VLAN or subscriber VLAN. So on the subscriber port in the DSLAM or OLT where the subscriber is physically connected is assigned a unique logical identity that is known as the inner. Isn't it? Okay. And every DSLAM is having a VLAN that is known as the Q in Q VLAN or outer VLAN. So the all subscriber data transported in form of the outer VLAN from the DSLAM to the BNG up to the BNG. And in BNG, it is segregated with respect to the subscriber that is the in form of the inner. Okay. So here is the, so for providing the broadband services written in your document, that is the entertainment services, professional services, and many services described and available. You can go through the document of the LIC document. You can have the different broadband services. To provide these broadband services, BSNL has installed the different network elements in phased manner under different project of the NIV. That is the NIV2. Initially NIV1, then NIV2. So all these listed project 1, that is the MPLS core network. Project 2, that is the access network. One is the project 2.1, that is the narrowband services earlier, in which the voice and data services were not available simultaneously. And the speed was only 64 kbps, not more than that. Okay. And in year 2004, BSNL has installed the different network element under the project broadband access project, that is project 2.2. So simply, if question is come that what is the name of the broadband access project, that is the project 2.2. And the project that is broadband multiplay project. This is the project commissioned, launched, or commissioned, enacted in year 2010. After commissioning of this project, BSNL was able to provide the broadband services, means internet services, along with the many value-added services like IPTV services, VPN over broadband services, and many more services. Okay, so we will discuss.
And project 3, that is the messaging and storage and EMS services are being provided from this project 3. In this project, BSNL has commissioned 4 data center, that is NIV 3, NIV project 3, 4 data center. The main data center is situated in Bangalore. Its DR data center is situated in Pune, and 2 secondary data center, one is in Noida and other is in Mumbai. So these services, many more services, messaging services, storage services, EMS services, AAA services, LDAP, TDS, that is the storage, LDAP services, security services, web co-location, web hosting, many more services are available from this project. Okay. Now, NIV2 broadband multiplay project. The main objective of this broadband multiplay project is to augment the broadband access network to support multiplay services like video on demand, IPTV on demand, VoIP and VPN services, and many more, with guaranteed control of critical parameters like latency, throughput, jitter to ensure the high-grade delivery of the real-time service, near real-time or non-real-time, and best effort. So, mainly our data connection on the ADSL. ADSL for providing these value-added services along with the voice and the data, that is the broadband data connection, we are using the ATM PVC values. So the multi PVC are there. So every service in modem is segregated by specific ATM PVC values. So multi PVCs are there. So I have already stated the data connection, logical data connection, or you can say in technical language, broadband is an always on data connection, which uses ATM PVC values to establish logical data connection between modem to the DSLR. So multiple services. So we are using the protocol that is the ATM PVC for establish on the copper data connection. Okay, and we are having the broadband service provisioning and configuration. Broadband service provisioning and configuration centrally through the NMS. Support the data aggregation, transportation, and enforcing the subscriber trust policies as per the plan they opt. I have already stated that every subscriber is having a specific plan as per their requirement of the download speed or data download, and storing the subscriber secret and the network elements database, and the authentication, authorization, accounting process, and billing. So for these different works, BSNL installed the different types of the network elements, or you can see the broadband network element need to be installed starting from the customer and up to the core network of the IS. So we will have the 3 types of the equipment: customer premises equipment, CP, broadband network elements, and servers. After understanding the connectivity of these network elements, different network elements, and their functionality, you will come to know what types of the error may be persisting and which network element may be responsible for these errors and the slow speed issues of the network.
means broadband connection. So here is the customer provides equipment, that is the modem in case of the ADSL broadband, ONT or ONU in case of the FTTH broadband connection, broadband network elements, that may be the access network element, means technologically specific like ADSL access network element, FTTH access network element. So these are the multiplexer which are providing the access to the subscriber by physical connectivity of the subscriber. And these make the access layer. And the second type of the broadband network element, that are the switches, which is working in aggregation layer. Aggregation layer means aggregating the traffic of all connected subscriber and services and switching to the upper network element for internet connectivity. So these are the basically switches, layer 3 switches. From these layer 3 switches, we are using the functionality which support the layer 2 as well as layer 3. But we are using the functionality of these switches for data transportation on layer 2 and layer 3 for ONM or for remote login of these networks. So you know, every network element like DSLAM, OCLAN, PNG or Tier 1, Tier 2 switches are having the IP address for man-machine communication or remote login of these network element, and VLAN for data transfer. And the core network element, that is the MSER, multi-services edge router. So BNG has replaced BBRES, which was working in project 2.2, that is the broadband project. And broadband multiplay is also a broadband project along with the value-added service. The BBRES was working in the broadband project, that is project 2.2, is replaced by the BNG, that is the MSER, multi-services edge router. So multiple services are segregated in the BNG. Why the name is the context. So service specific logical mini router or logical separation is made in the core network element, that is the BNG, known as the context in the BNG. So like you can have the BSNL.in context for the ADSL broadband services, FTTH.BSNL.in context for the fiber broadband, BB-ILL context for the internet lease line context. So many contexts may be there. So number of services we are accessing from the BNG, same number of the means context or routing instance may be there. So BNG ensure enforcing the traffic policy as per the plan of the subscriber. And the authentication, authorization, and accounting is done by the BNG in conjunction of the server that is known as the SSC. So 3 server SSC, that is one is the subscriber service selection center, and second is the authentication, authorization, and accounting server, and the third one is the LDAP, lightweight directory access protocol,
SSC is the proxy of the AAA. AAA is the radius server. The name of the AAA in the project 2.2, that is the radius. Remote authentication dial-in user services is now replaced by the physical server, that is the AAA server. These three servers may be working in the data center, NIV2 project 3 data center, or at the RPOP location of the BSNL, regional point of presence. Okay, so this AAA server has replaced the earlier radius server working in project 2.2 in the broadband multiple. So the three process, first is the authentication, second is the authorization, and the third one is the accounting. First, the username and password along with the port binding. So there are three parameters of the port binding. One is the inner VLAN, the subscriber ID. Other is the outer VLAN or Q in Q VLAN, the VLAN of the access network element, that may be the DSLAM or OLT. So the ID of the access network element, that is the outer VLAN. And the third one is the NAS IP, network address server, that is the IP address of the BNG for data transportation. The BNG is having the separate IP for the management point of view, and this NAS IP is used for the data transport. So these are the three port binding parameters which need to be verified along with the username and password of the broadband. So this is the authentication. Now the second parameter, that is the authorization. The subscriber user ID status need to know either it is suspended to the non-payment or active. If it is active, then how much speed and how much data download is subscribed by the subscriber. So that is the authorization. And after completion of the authentication authorization, BNG will assign a free IP address to the subscriber router, that is the CPE, in conjunction of the SSC server. And the accounting process will start. So SSC is the proxy of the AAA for the handling of the queries multiple subscriber of the BNG coming or requesting for internet services or asking for the activation of the internet. So AAA will communicate to the SSC, the process is okay, authentication, authorization is okay. Now the assign the free IP address. So SSC will communicate to the BNG, that is the router. MSER multi-services edge router is there. So the function of the router to assign the network credentials. So every subscriber is assigned a IP address assigned to the other CP as well. Okay. And the third server is the LDAP server, Lightweight Directory Access Protocol. This is the database, that is the protocol. And this protocol is being used as a database in broadband network. So username and password, port binding, name of the broadband subscriber means related subscriber data is kept stored in the LDAP server.
Okay, so the database of the broadband subscriber is LDAP server. So these three servers, SSC, AAA, LDAP, plays a vital role for providing the secured connectivity to the subscriber. If any of the server will get the error 678. This error is the network error. Oh, sorry, no, not 678. Sorry, error 691. Sorry for that. So, if any of the server will not respond to the subscriber queries, will get the error 691, that is the authentication. Okay, the function is okay, and you will get if the subscriber are not getting the internet connection, means no internet is there, means no IP address is assigned, no unique IP address is assigned to the subscriber modem or ONT, means any of the server is not functioning properly, or the username and password are entered wrongly. Okay, and if you are having the broadband connectivity, means internet connectivity, then you can browse the website. When you will browse the website, the DNS will come in the picture. So DNS will resolve the name of the website into the corresponding IP address of the web server. And the fourth one, the system. It is working as a portal. Differential speed plan are served from this SS server. It is, or you can say the content-based services are provided from the SS server. Or you can say the FUP, Fair Usage Policy of the BSNL is implemented in the SS server. And the FUP link is provided to the subscribers by the BNG, via BNG to the subscriber from this server. And many more the billing server may be. Now, this is the overview. You can understand, you know very well what are the customer provided, the equipment are there, modem, splitter, set-top box is exclusively required for if you are having the television IPTV services. FTTX optical network terminal or optical network unit for single subscriber, ONT is there, and multiple subscriber, that is the OLT. So, okay, so for any query, you can write in the chat box. Any doubt, any clarification? Okay, now I see. So this is the customer premises equipment. See here, the most important splitter. This is the high pass, low pass filter, which separates out the signal for the telephone, means voice and data signal. Okay, are segregated. Voice signal goes to the telephone line and data signal goes to the modem at the customer premise. This is the high pass and low pass filter used at the both home. And CP and access network element side. Okay, so both end, CP side and access network elements in inbuilt with the modem or inbuilt with the DSLAM.
And the CP, that is the modem, direct the signal to the PC, and IP service specific ATM PVC values and the subscriber secrets are configured as I have stated. So ATM protocol is being used for establishing logical data connection on a single telephone line between modem to the DSLAM. Isn't it? And enable the security feature to avoid the botnet and man in the middle attack. We are using the layer 2 and private network for providing the broadband access to the subscriber. So hacker will not be able to penetrate in the network directly. But the last mile, that is the CP, is vulnerable because we are providing the public IP address for the internet connectivity. And this public IP address is exposing to the internet. If proper security implementation like access control list and access control services like HTTP protocol, Telnet protocol, SSH protocol, SNMP protocol, or FTP protocol are not properly managed or secured or prudently not enabled or disabled at the modem or ONT, your router or modem will be exposed to the public network. And further, if you have not changed, altered the username and password of the broadband modem or ONT, someone can have login from the public as an administrator. Generally, we log in our CP from the private network or the LAN network of the broadband connection by browsing the IP address 192.168.1.1. So there is no need to enable the any protocol or any service on the LAN side. On the LAN side means no protocols should be enabled on the BAN side. The BAN network or BAN link is from the modem to the DSLAM side. And the LAN network is the network through which we are providing the different Wi-Fi client or different Ethernet client to be associated to your network to share your broadband. So we are using the only protocol, that is the HTTP protocol, to have the access or to have the man-machine communication of your router or ADSL router or ONT. So only HTTP protocol should be enabled on the LAN side. No protocol should be enabled on the BAN side. Need to be done by each subscriber, that is the administrator of the broadband connection. We should provide the disclaimer for that to the subscriber. And the second is the Wi-Fi security. WLAN security need to be controlled the access of different Wi-Fi clients available in the vicinity of your broadband wireless net. So if anyone or any hacker is connected in your Wi-Fi network, can launch the man in the middle. So for avoiding the different types of the man-in-middle attack,
or misuse, avoiding the misuse of your broadband connection, you have to implement the security, wireless security in your router. And to avoid the botnet effect, you have to implement, you have to control the ACS, Access Control Services, I have already stated, and you should also implement the ACL, Access Control List. So you have to enable and activate the ACL, Access Control List. You need to make the ACL of the single IP address, LAN IP address, that may be 192.168.1.2 or whatever the IP address of the PC from where you are trying or you are supposed to have the access of your router. So put only one IP address and activate. So if you have implemented the ACL in your CPU, your data connection will be secure. From the subscriber side. And choke the network as well, our network as well. We have seen the many cases in past. So broadband network element, I have already stated the access network element, that is DSLAM or OLT, aggregation network element, that are the switches, that are the tier 1, tier 2 switches, and OC-LAN switches. OC-LAN switch for aggregating the traffic of the rural areas, and the tier 1, tier 2 switches are the access network or aggregation network element for providing the or aggregating the traffic of the urban areas or in-city network. Core or gateway network element, that is the BNG. So all the aggregated traffic is assigned the quality of the service or traffic policy. So I have already stated, means how much speed need to be ensured or enforced to the subscribers is ensured by the core or gateway router, that is the BNG, and make its way to the global internet via the gateway. So there are the broadband network element already stated. The DSLAM, digital access multiplexer, that is working as a multiplexer. It is multiplexing all connected subscriber data and converting into a composite signal. That composite signal is known as the outer VLAN or Q-in-Q VLAN, as I have already stated. It supports the TCP point-to-point protocol over Ethernet. As I have already stated, the data connection is a point-to-point protocol over Ethernet, which uses ATM PVC values to have the logical data connection or virtual data connection between subscriber modem to the DSLAM. Support GE and FE ports for the uplink connectivity, cascading of the DSLAM, and other type of the data connectivity. Other type of the data connectivity, you can terminate the internet lease line. You can connect the node B, 3G node B. You can connect Wi-Fi hotspots or other types of the data connectivity on spared port available on the DSLAM. So for data connectivity for internet lease line, the DSLAM is feasible, or you can say the feasibility report can be provided. Okay, report can be provided if you are having the DSLAM for the internet lease line. Support the VLAN as I have stated. OLT, the same function which performed by the DSLAM in case of the ADSL is performed by the OLT in the FTTH. That is the optical line terminal, also called optical line terminal, is a device which serves as the service provider endpoint of the passive
optical network, that is the PON. Same function are performed by the OLT in fiber broadband as DSLAM performed with the copper based. ठीक है, OLT provide two main functions. By the service providers equipment and the fiber optic signal used by the passive optic to coordinate the multiplexing between the conversion device on the other end of the network, that is the CP. Every subscriber port at access network element is logically converted. वो मैंने बताया था already, I have communicated. So every service like VPN over broadband, IPTV over broadband. So every service along with the broadband service. So VPN VLAN may be there or inner VLAN for the broadband subscribe may be there. So multiple VLANs, one for providing the broadband connectivity, that is the inner VLAN, VPN VLAN for providing the VPN over broadband, and the management VLAN for providing the or making the connectivity or establishing the connectivity between access network element to the BNG. So these three types of the VLANs are used. Connectivity access between LAN, so that is the VLAN configure, management VLAN, I have already stated. Data traffic flow between access network element and gateway via aggregation network element, that is the Q equivalent access network element. So it is the form of the outer VLAN or Q equivalent access network element. Aggregate all the voice, video, data, traffic, and multiplexes into composite signal known as the Q equivalent, I have already stated. And that is the resilient packet ring. I want to communicate one more thing. The Tier 1, Tier 2 switches working in the project 2.2 for broadband connectivity are being used in broadband multiplay as the OC-LAN switches. The point is clear. And the DSLAM, earlier DSLAM are migrated as it and connected in our broadband multiplay. So the traffic from the access devices and the remote aggregation devices is aggregated at RPR and forwarded to the core network. Resiliency protection response protection automatically avoids failed response of 50 milliseconds. That is the resiliency period. Within 50 milliseconds, it should be traffic from the other side if fiber cut is taken place from one side. So 50 milliseconds. Ring topology gives the scalable option having more than 100 nodes in a ring. RPR has the ability to differentiate between low and high priority packets. Now, but nowadays, this RPR Tier 1, Tier 2 switches and OC-LAN switches are migrated on MNG PAN switches. MPLS, next generation packet aggregation network. Okay. Which is having 2 millisecond resiliency period. Here we are having now 1G ring or 10G ring, but in the MNG PAN it can reach up to the 100G and 400G ring in future. Here only single ring is supported, but in case of the FTTA means MNG PAN, it supports rings within ring. It supports the layer 3 as well for providing the internet lead line. Means for providing the internet lead line, we can bypass the BNG after commissioning of the MNG PAN. So a broadband remote access server, BS, that is the BBRS in broadband project 2.2, and BNG in case of the broadband network. It routes the traffic to and from the broadband remote access devices, DSLAM, OLT,
on an internet service provider ISP network, that is the MPLS 4 network. It works as multi-services edge router. Service-specific logical mini router are configured in the BNG called context for routing instances in BNG. I have already communicated. BNG maps the traffic coming from access network element in form of the outer VLAN and forwarded to the uplink layer 3 PE VLANs to the IP MPLS network through the corresponding service context to the provide layer 2 connectivity through either transparent bridging or point-to-point protocol session over Ethernet or AGM session. Authentication, authorization, and accounting process happen by a radius configured logically in the BNG. So the CCC IP address is logically configured in the BNG. DNS IP is also configured in the corresponding context in the BNG. And related data is configured. Related data means broadband service related data is configured in corresponding context of the BNG. And for the quality of the service, so how much speed need to be assigned to the subscriber router, it is enforced by the BNG inform the quality of service. Provide layer 3 connectivity and route IP traffic through an internet service provider's backbone network to the internet. Means up to BNG, it is working as the layer 2, and BNG and onward, it may be working as a layer 3, or if we are using the MPLS, that is the layer 2.5. So layer MPLS is working on layer 2.5. Listen carefully. By having or understanding this slide, you will understand each and everything related to the broadband subscriber broadband services, network elements, configuration, connectivity, and functionality as well. Here, see here, whatever I have discussed till now. CP is configured to send data, voice, video traffic as per the specific ATM PVC values in case of the EDSL broadband. So 3 services, 3 PVC values need to be configured in the modem, or whatever the values are configured in the DSLAM need to be configured in the modem. DSLAM or OLT aggregate all the voice video data traffic and multiplex it into a composite signal and switch to the upper network element. The upper network element may be tier 1, tier 2 switches in case of the in-city broadband connectivity, or the upper network element can be OCLAN in case of the out city or rural broadband, rural city, OCLAN. And RPR and OCLAN switches forward the traffic to the BNG. BNG maps the traffic to the corresponding context and forward the traffic to layer 3 PE with upstream VLAN tag for internet. Okay, so BNG assign the IP. Now, any doubt, any clarification in this slide, please let me know. Any doubt? Everything is okay, I think. Okay, thank you. Now the second slide. Second slide will also include the functionality. Listen here. One more thing I want to communicate. Any configuration issue or less configuration is there in any network element, or proper configuration are not done in any network element starting from the modem up to the BNG, the subscriber will get the error
678 if your modem is configured in bridge mode. Are you getting? So this error 678 is known as the configuration error, or you can also say the network error. Means any network issue between modem to DSLAM, or link is down, or the issue between DSLAM and OCLAN or Tier 1, Tier 2 switches, or the ring itself, or BNG if not responding, or configuration issues are there. All subscribers will get the error 678, which is known as the error, configuration error, or network error. Any issue starting from the, if you have not configured proper PVC values in the modem, the subscriber will get error 678. If you have not properly binded the inner VLAN, or the subscriber will get the error 678. Or the inner VLAN data is not configured in the BNG, the subscriber will get the error 678. Isn't it? Now this is the second slide, the most important second slide. Now see here, when username and password are configured in the modem or ONT, the subscriber will send a connectivity request. Connectivity request to the subscriber. Okay. Connectivity request to the subscriber means BNG for providing the connectivity. The connectivity request will land to the SSC server, which I have already communicated to you. That is the proxy of the AAA server. On getting the subscriber request coming for the or asking for the broadband connectivity, it is the means subscriber request handler or query handler. It will send the subscriber request to the AAA server for completion of the authentication, authorization, and ensuring the accounting of the subscriber to the AAA server. AAA server is not having the data, or even SSC is also not having the data. The database is residing in the LDAP server. Okay, so AAA server will send the request, subscriber request to the LDAP server. After verification or matching the username and password along with the port binding of the subscriber, LDAP database server will respond to the AAA server, and AAA server responds to the SSC server. SSC will communicate to the BNG all parameters related to the download speed, upload speed, how much data need to be downloaded by the subscriber, and how much time, up to what time. It will communicate to the BNG. On getting the proper response, okay response, BNG will assign a free IP address to this. If there is no free IP address available in the BNG, means all IP pools are exhausted in the BNG. The BNG is having the different capacity. Earlier, Redback BNG were supporting the 72,000 concurrent session. Juniper BNG, that is the 64K. Recording is available on YouTube, no issue in there. Okay. So, if any issue is happening, so this is the authentication, authorization. On getting the proper request from the SSC server or proper response to the SSC server, BNG will assign a free IP address to the modem. If there is no free IP address, the subscriber will get again the error
691, that is the authentication, isn't it? So if there is no free one, so you may have facing the some intermittent issue of connectivity of the broadband subscriber, means free IP address is not available. So different capacity, 72,000 in Redback, 64 and 128K BNG in Juniper BNGs, and now the cup BNGs are there. So different capacity. So multiple subscriber, if there is a issue in the ring or in the network, multiple subscriber on getting up connectivity, the multiple subscriber directly land to the SSC server. Okay, if it will not respond timely or properly, there will be a queue and the subscriber will be having the connectivities. Or if there is a free IP, no free IP address is available in BNG, the subscriber will get error 69. The point is clear now. So this is the authentication process. Now, the free IP address, after completion of this process, now it is having the data traffic. So that is the NAT super for filtering the traffic and DNS server. Now the internet is available on the subscriber router. The subscriber can plug in through the Ethernet port available in the modem or through the Wi-Fi, can browse the website. If it is browsing the website, the DNS will resolve the name of the website into the corresponding IP address of the website. Okay, so if your now same time there will be a session between the BNG and the billing servers. So at this time there is a logical session between subscriber modem and the BNG. So all broadband CPEs are the client of the BNG. One more thing I want to communicate, only the live sessions can be available in the BNG for checking the working status of a particular subscriber in the BNG. After disconnection, there will be no record on the BNG because BNG is not having the data. So all connected CP are the clients of the BNG. So BNG will be keeping the session of all connected subscriber with the MAC address of the, along with the MAC addresses of the modems or CPEs. And CPE is the, or all Wi-Fi clients or Ethernet clients sharing the broadband connection speed are the clients of the CP. So live session may be available at the modem. Okay. After disconnection of the Wi-Fi client, no session or no record will also be available at the modem. So the only option for subscriber to implement the security at the subscriber side, which is the responsibility of the administrator of the broadband connectivity, that is the subscriber on. BSNL can only provide the disclaimer by having the list of the do's and the record will further can be available from the CDR net, can be extracted by checking from record. Isn't it? Okay, so this is the second slide need to be understood by each and every. Now see here, in broadband multiplay network, we are providing the connectivity between two tier 1 and tier 2 or two tier 2s, 40 kilometers on the dark fiber, and the maximum distance between DSLAM and OLT and DSLAM, that is the 10 kilometers. If you want to provide the broadband services,
So every means a district or SSA can have the BNG. So up to 10 kilometer in ECT, we can connect the DSLAM, and beyond 10 kilometer, we need to equip one more equipment, that is the OCLAN, other city local area network switch, which can further provide the connectivity of the DSLAMs, OLTs, internet lease line, means these are having the Ethernet port, FE port, GE port, and if you are having the Ethernet port, you can provide all types of the Ethernet connectivity of the different services of the B. You can connect the Wi-Fi hotspot, you can connect the node B from the OCLAN port, you can have the cascading the OCLAN. Okay, so these are the ports are available. Similarly, you can connect the internet lease line from the tier 1, tier 2 switches, which are having the Ethernet port, which are working in the ring to provide the redundancy in the network. Okay. So this is the, and up to 20 kilometer, we can connect the OLT on GPON. So for GPON or FTTH, for FTTH related configuration and the different data related to the FTTH, you can go through the FTTH topic. I think we are also having the FTTH topic as well. Okay. So these are the services: internet, inline, FTTH, IPTV, C.VoIP, WiMAX, IPTV, DSBT, digital satellite, phone terminal, NGN, and Wi-Fi. These type of the connectivity can be connected in different network elements working in our network. Okay. So these all are about the things. Okay. So any doubt, any clarification, I am providing the unmuting, means you can unmute yourself and let me know any query, any doubt related. I have not got any query in the chat box. Sir, any MCQ is here? Yes, now please. for discussing? Yes. Any question bank? MCQs. MCQs. Okay. Okay, I am also having the MCQs. If time permit, then I can continue. Please share the file if possible in the group. Share this file. नरेश जी CDA रूल वाला भी क्लास चालू है अभी. Okay, okay. Because वो तो YouTube आपने अगर स्टार्ट कर दिया होगा ना, तो YouTube पे पुरानी लिंक से चल रहा होगा. Okay, so I will share. I have made some MCQs as per the document available for the study. I will share that MCQs as well for practice purpose only. Okay. Okay, any doubt? So I am concluding my class. For any query further, you can contact me on my mobile number or my email ID available in the document as well. I will share this document as well if you want to continue, if you want to have the study. Otherwise, the sufficient document is available on the means LIC document is there. You can go through that. Okay. So thank you very much for joining and giving me this opportunity. I want to convey my gratitude to all the organizers of this session for the LIC.
बताओ ऐसे गुजर नाम से जुड़ रहा हूँ। नहीं एसडी हाँ एसजी SAG मैं जोड़ा भाई हूँ तो मैं कैसे करूँ मीटिंग आईडी
Hello, everybody. Hello, hello. Am I audible to all? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you, sir. Thank you. So, today we are going to have a discussion on tendering, BSNL tendering procurement manual. क्या आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है मेरी आपको सबको? जितेंद्र जी, हाँ दिख रही है। Okay, thank you, sir. Thank you so much. So, our topic is procurement process in BSNL. We are going to have a discussion on these things such as tendering types, how many types of tender we float in the BSNL, tendering process, how we process the tender, online or offline mode, and what are the objective of the tender evaluation. Apart from it should be fair and just and in an efficient manner, some more objectives are there for the evaluation of tender so that we can procure our product or services. Next, tender opening committee. When the tender is opened, before that, we have to form a committee which will play a crucial role for the opening event of the tender. Then we are going to have a discussion on evaluation of tender. So, a evaluation committee is formed for that. Next, CVC guidelines that we have to adhere to keep it transparent and beneficial for the purchaser and the seller point of view. So, for the discussion, as you know that most of the product or services we procure from open market, we have to follow some guidelines from CVC, and we have to through offline or online, we have to go for the tendering process. Tendering normally we do at the corporate office and the circle office. Earlier, we used to have a tendering on the SSA level, BA level, but after the streamline, that is going to be happen only on circle and the corporate office level. More advanced tender, such as we have to procure some 4G or some switches, towers, etc., which are very state of the art जितेंद्र जी, equipment. Yes, जितेंद्र जी, yes. थोड़ी इंटरप्शन, प्लीज इसको ना पूरा कर लो, फुल स्क्रीन कर लो। Okay. Like this. Is it okay? Fine, fine, thank you. Okay, sir. Then some product and service I can name, such as UG cable we have to procure, equipment or terminal, switching equipment, transmission equipment or towers equipment we have to procure. So we have to follow tendering process. Apart from that, if we have to
get CDA are given. excuse me, सीडीए क्लास and भी Linux. चल रहा है अभी सर अभी सीडीए क्लास भी चल रहा है पैरेलली नो 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 सर, सीडीए क्लास नहीं चल रहा है सर अभी अभी केवल ये टेंडरिंग प्रोक्योरमेंट मैनुअल जैम एंड सीपीपी के बारे में क्लास चल रहा है सर फॉर द लाइस एग्जाम एसडी टू एजीएम. ओके अभी जस्ट पहले थोड़ा उनकी भी रिकॉर्ड भी चल रहा था I'm closing my session here. Thanks for patience listening. And any queries, anything you can put in the chat box. We'll review it later. Thank you. And I now invite next faculty, Mr. Naresh Singh. Thank you. Sir, Mr. Naresh is there. Good morning, everyone. Yes. Okay, please go on. Yes, sir. Good morning, sir. Good afternoon. Kindly confirm, am I audible to everyone? यार वो उसमें ना पुरानी पीपीटी वो रिकॉर्डिंग चल रही है उसे बंद करो So have a break. पुरानी For 5 minutes. Thank you. सर पुराना वाला कौन है लाइव स्ट्रीम का मतलब ये चलना चाहिए ना लाइव वाला सर पुरानी रिकॉर्ड भी चल रही है सर वो पुरानी भी चल रही है वो कह रहे हैं अभी नरेश जी वाली स्टार्ट हो गया सीडीए के बाद नहीं बेसिकली टेंडरिंग प्रोक्योरमेंट मैनुअल से रिलेटेड ही क्लास चल रही है इस टाइम पे और यही मतलब डिसाइडेड था. नहीं सर वो रिकॉर्डेड भी आ रही है आवाज आपकी आवाज आ रही है दोनों की साइमल्टेनियसली आवाज आ रही है अब नहीं आ रही है सर उन्होंने स्टॉप कर दिया. थैंक यू सर ठीक है ओके Okay, next sir, we are moving on. First, we are taking tendering types. So there are various tendering methods are available. First of all, there is a open tender. I am discussing it. Open tender. Open tender may be called or competitive tender or public tender because it is open to all qualified bidders. And in the as we used to do in the earlier traditional way tendering process, there were sealed box used to place in the telephone exchange, etc. in the or AGM planning room, where जो बिडर थे वो आके अपने ड्रॉप बॉक्स में डालते थे अपना टेंडरिंग के कमर्शियल एंड टेक्नो कमर्शियल बिड के एनवलप. तो वही सेम चीजें ओपन टेंडरिंग में होती हैं और मोस्ट ऑफ द सर्विसेज दैट आर प्रोक्योर्ड बाय द बीएसएनएल आर थ्रू द ओपन टेंडर. ओके, इसमें हम डिपेंड करता है कि हम कोई क्लैरिफिकेशन वगैरह उसके बारे में हम आगे बात करते हैं. अभी नेक्स्ट देयर इज ए नेगोशिएशन रूट. When tender has been called and services are running through the open tender, and sometimes there are circumstances, there is some requirement of more services or more product in between. Then what can we do? We follow the negotiation route. Through the negotiation route from the same vendor that is providing us the service, we can procure the same service up to 100% of the quantity. Actually, we can place the repeat order to him and we can negotiate the price of the new quantity. That may be normally it is the prevailing price, but if we can negotiate with the vendor, then it can be up or down. So with the repeat order or with the negotiation route, we can procure 100% of quantity with the same existing vendor. That is called the negotiation route. We actually by this route we are saving our time and resources. That if we go for the tendering process, then it will take more time and it will delay our services to provide the customer. So we follow the negotiation in a very faster manner, but with the existing vendor. So it cuts short our time. Then there is a limited tender route.
Limited tender route we follow when there is a equipment of very sophisticated nature and state of the art equipment we are procuring from the open market, but there are few service providers are available only, such as for the 3G and 4G equipment cases. We used to run the presentation from the Nokia, Ericsson, because we have the limited service provider for these state of the art technologies. So we follow limited tender route. Limited here means limited number of vendors are available in the market. Then there is a expression of interest route. In the expression of interest, we know what services. Moreover, one thing more to say about the limited tender, we don't know much about the services that we want to avail from the vendor. So we. सर फिर से नरेश जी का क्लास शुरू हो गया सर. Of the broadband multiplay. These are the. हाँ स्टॉप हो गया सर. सो लिमिटेड टेंडर में हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली सर्विसेज हमें वेंडर से लेनी है, उनके बारे में भी हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होती नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडवांस. ओके. ये इसको जरा वो करो आप म्यूट टू ऑल, क्योंकि वो सर म्यूट करिए Dear participant, kindly confirm the somebody slide also and opening my that voice YouTube is clear. lecture. Am I audible to everyone? Sir, Sir, no voice. ओके ओके सॉरी. नेक्स्ट देयर इज EOI रूट. EOI रूट में और लिमिटेड टेंडर रूट में हमें थोड़ा सा डिफरेंस को बाद में ये डिस्टिंग्विश करना है कि लिमिटेड टेंडर के में हमें पता नहीं होता है कि आखिरकार हमें क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम द वेंडर वी हैव टू प्रोक्योर. एंड EOI रूट में वी आर फुल्ली अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट वी हैव टू अवेल फ्रॉम द वेंडर. सो हमारे पास जो टेंडर डॉक्यूमेंट होता है वो भी हमारे पास फुल्ली वेल फर्निश्ड होता है. सर फिर से सर दोनों की आवाज आने लगी है सर, नरेश सर की और आपकी भी. About the broadband. तो ये क्यों हो रहा है बार बार? ये नरेश सर भी बोल रहे हैं और आप भी बोल रहे हैं. The topic will be broadband. What is the broadband? Sir. What are the broadband access technologies? ये उनकी आवाज आने लगती है नरेश जी की. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू 1.4 द टेंडरिंग प्रोसेस. जब भी हम टेंडर डॉक्यूमेंट टेंडर फ्लोट करते हैं तो वी हैव टू डिजाइन द टेंडर डॉक्यूमेंट एंड देयर इज ए इन द सेक्शन 1 देयर इज ए NIT, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर. नोटिस इनवाइटिंग टेंडर के थ्रू किसी भी वेंडर को. अरे ये बार बार. Then we will discuss the broadband network components. What are the components are required? 5 मिनट 2 मिनट हेलो सर, नरेश सर भी सर क्लास ले रहे हैं सर, आप भी क्लास ले रहे हैं. चौरसिया जी. हाँ सर. Are connected. यार एक जगह ज्वाइन करो, या तो यूट्यूब ज्वाइन करो या फिर ये जूम के थ्रू ज्वाइन करो. आपने शायद दोनों जगह ज्वाइन.
नेक्स्ट, एनआईटी जो पार्ट होता है टेंडर डॉक्यूमेंट का, उसके थ्रू पता लग जाता है वेंडर को कि मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में कि आखिरकार वो किस वर्क के लिए एनआईटी है, एंड उसका स्टार्ट डेट क्या है एंड एंड डेट क्या है, कब तक उसे अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, और जो भी स्पेसिफिक क्वांटिटी या ईएमडी एटसेट्रा जो भी उसको डिपॉजिट करनी है उस टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसका एट ए ग्लांस उसे पता लग जाता है। दैट्स व्हाट इज एनआईटी। जब ये उसमें हुआ करता था पहले ऑफलाइन मोड में, तो एनआईटी पब्लिश की जाती थी उसमें आपके न्यूज़पेपर में। अब क्योंकि ऑनलाइन टेंडरिंग होती है तो ये एनआईटी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाती है, और उस पे जो जितने वेंडर होते हैं वो भी सब कनेक्टेड रहते हैं, तो उनको नोटिफिकेशन भी पहुंच जाता है। अगर हम एक सर्विस को प्रोक्योर करना चाहते हैं और टेंडर करते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ रिलेवेंट बिडर्स को नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। नेक्स्ट, व्हेन वी डिजाइन एनआईटी, so we have to keep something in mind that जो कंपिटेंट अथॉरिटी है हमारी, जो एनआईटी को अप्रूव करेगी, उसको उसमें हम ये लिखते हैं कि विदाउट एनी नोटिफिकेशन और विदाउट एनी कंडीशन वी हैव टू कैंसिल आर बिड एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन और सो। ये एक तरह का डिस्क्लेमर टाइप हम उसमें देते हैं, ताकि किसी भी तरह से कोई वेंडर बाद में क्लेम ना करने लगे कि आपने बिड क्यों कैंसिल। और सारे वेंडर डॉक्यूमेंट जो हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट होता है उस पर वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन करके देता है, ताकि वो इस चीज को वो ना कर सके किसी तरह से लीगली बाइंडिंग हम पे। एंड और हम नेक्स्ट नंबर 3 में हम कोई भी हमारे एमएसई बिडर्स होते हैं उनको हम परचेज प्रेफरेंस देते हैं। इसमें लिखा है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के लिए, पर हम बेसिकली जैसे अब चल रहा है तो उसमें हम एमएसई बिडर्स को हम प्रेफरेंस देते हैं। अगर कोई ऐसा बिडर होता है जो L1 मतलब अपनी बिड को लोएस्ट रखता है, और वो बिड को लेने के लिए क्वालिफाई भी कर जाता है, तो हमारी ये रहती है प्रेफरेंस कि हम किसी एमएससी बिडर्स को ही दें, सब्जेक्ट टू कि वो कोटेड प्राइस जो L1 ने किया है उसके विद इन द 10% रेंज में आता है। तो हम प्रेफरेंस देते हैं कि हम एमएससी बिडर को ही वो ऑफर दें। एंड हम फर्दर निगोशिएट भी करते हैं उस एमएससी बिडर से कि L1 इतने पे हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर वो भी इस पे देगा तो हम फुल्ली सर्विस कंप्लीटली एमएससी बिडर्स को दे देंगे। तो ये सब कंडीशंस हम टेंडर डॉक्यूमेंट जब डिजाइन करते हैं उसमें हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं पहले ही। नेक्स्ट, फॉर ऑल द टेंडर्स इन विच एनी ऑफ द
आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर। We were discussing about the document that we mention in the tender document. Notice inviting tender we earlier discussed. Uh, uh, Hello. What are the instructions to the bidder? How can they participate in the bid, online or offline? If there are some general conditions of the contract. Yes, sir. Screen not shared. Okay, okay. Connecting and still we incident. Thank you. Okay, now it's okay. ओके फाइन है। ओके ओके देन शेड्यूल और रिक्वायरमेंट उसमें होनी चाहिए। हमारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हमारी क्या है, बिड डॉक्यूमेंट में सब कुछ ये चीजें मेंशन होनी चाहिए। टेंडर फॉर्म में वो भी हम फॉर्मेट उसमें फॉर्म में बेसिकली ये होता है कि वो जो प्रोस्पेक्टिव बिडर है वो मेंशन अपने साइन करके सबमिट करेगा कि सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी मेंशन है टेंडर डॉक्यूमेंट में, आई फुल्ली एग्री विद एंड प्लीज अलाउ मी टू पार्टिसिपेट इन द बिड। प्राइस शेड्यूल में प्राइस शेड्यूल का फॉर्मेट होता है कि जो बीओक्यू या जो भी फाइनेंशियल बिड में वो प्राइस अपने कोट करेगा तो किस फॉर्मेट में वो डालेगा, तो ये प्राइस शेड्यूल में मेंशन होता है। बिड सिक्योरिटी फॉर्म होता है जो बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए ईएमडी उसको सबमिट करनी है, तो वो ऑनलाइन मोड में है या ऑफलाइन मोड में, लाइक डीडी चेक एटसेट्रा, तो उसके लिए एक फॉर्म होता है। तो वो फॉर्म वो भर के विद दैट चेक और डीडी और ऑनलाइन जो उसने सबमिट किया उसकी रिसीट के साथ में बिड के साथ इसको डिपॉजिट करता है, बिड सिक्योरिटी फॉर्म को। तो ये सारे डॉक्यूमेंट बिड डॉक्यूमेंट में एज ए फॉर्मेट और एज ए जो भी डिटेल्ड मैनर में उसमें मेंशन होने चाहिए, सेक्शन बाय सेक्शन। मतलब ये बेसिकली क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रोक्योरमेंट मैनुअल ऑफ बीएसएनएल है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। जो कोई एक बिडर जो क्वालिफाई हो जाएगा, जिसको हम बाद में एडवांस परचेज ऑर्डर या वर्क ऑर्डर देंगे लास्ट में और जिसके साथ हम एग्रीमेंट करेंगे, वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का एक बॉन्ड हमें देगा। और जब भी हमारी अगर 1 साल के लिए टेंडर है तो वो अराउंड 30 मंथ उसकी वैलिडिटी होती है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की। तो वो किसी बैंक से, जो भी नेशनलाइज बैंक है, उससे हमें उस पर्टिकुलर अमाउंट की, बेसिकली ये क्या होता है कि जो टेंडर्ड वैल्यू होती है, जो लास्ट में सपोज करिए 1 लाख का कोई टेंडर था और वो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, तो हमने उसमें वो 80,000 पे किसी ने हमने किसी बिडर को दे दिया, तो 80,000 का 5% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होगी, तो वो बैंक से ये करा के हमें देगा विद दिस फॉर्म। ऐसा ही बिड सिक्योरिटी फॉर्म में होता है, वो भी बीजी की फॉर्म में दे सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये सारे जो ये सारे फॉर्मेट, ये नेक्स्ट इज लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। जो ऑफलाइन बिड होती थी पहले, तो उनमें बेसिकली ऑथराइजेशन टू अटेंड द बिड, कोई जो प्रोप्राइटर है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो किसी पर्सन को ऑथराइज करता था और उसे एक लेटर देता था ताकि वो अटेंड कर सकता है बिड में कि वेदर एवरीथिंग इज गोइंग फेयर एंड फाइन और नॉट। सो ये लेटर ऑफ ऑथराइजेशन चाहिए होगा। क्लेरिफिकेशन ऑफ द बिड, क्लेरिफिकेशन में जो भी अगर किसी वेंडर को किसी तरह की कोई डिफिकल्टी आ रही है किसी क्लॉज को समझने में, अगर उसका कोई क्लेरिफिकेशन उसे चाहिए, तो वो ही कैन मेक रिक्वेस्ट
Earlier, through fax or through post, or he used to send to the concerned office, and it should reach with that office prior to 14 days. But nowadays in the online tendering, it can be reduced to 3 days also. वो अपना क्लेरिफिकेशन रेज कर सकता है, और एंड वी हैव टू लॉग इन आर पोर्टल। अगर किसी कोई क्लेरिफिकेशन किसी बिडर ने मांगा तो नहीं है उसमें, तो हमें उसको एड्रेस करना होता है। विदाउट एड्रेसिंग वी कांट गो फर्दर टू ओपन द बिड। सो क्लेरिफिकेशन हो गया। अगर किसी तरह का क्या यू आर सेइंग स्क्रीन शेयर होगी, आपको दिख रही? आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? प्लीज बताएंगे। ये अमेंडमेंट ऑफ बिड डॉक्यूमेंट एटसेट्रा आपको शो हो रहा है, दिख रहा है? जितेंद्र जी दिख रहा है, बढ़िया, फाइन है। ओके ओके ठीक है। हाँ, तो अगर कोई भी बिड हमारी जब पब्लिश हो चुकी है, उसके बीच में किसी तरह की कोई हमें अमेंडमेंट अपने बिड डॉक्यूमेंट में करना है ड्यू टू एनी रीजन, तो हम उसका अमेंडमेंट उसमें हम ड्रॉप कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन बिड में। अब नॉर्मली वी डू ऑनलाइन बिड, ऑफलाइन बिड करने का तो शायद टाइम चला गया, एंड गवर्नमेंट वांट्स इट इन दैट वे। सो जो भी अमेंडमेंट हम करते हैं, जो भी क्लेरिफिकेशन हम देते हैं, वो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेबल टू ऑल द बिडर एंड टू द परचेजर। We are the tendering authority, so we are playing the role of purchaser, and the bidder that putting their bid on the portal, basically they are seller. Okay. Next, some of the document that we require from the bidder while in the bidding process, such as the certificate of incorporation. Certificate of incorporation, if there is a company, then there is a certificate of incorporation is issued by the Ministry of Corporate Affairs according to the Company Act 1956. तो वो उसको सबमिट करना होता है, उसके शायद जितेंद्र जी पुट ऑल इन म्यूट। अरे हम तो कर देते हैं, पर बाद में नहीं, प्लीज वो म्यूट ऑल, प्रिविलेज सभी को म्यूट कर लें सर। म्यूट टू ऑल, वो हटा दो उसको, क्लिक वो। नाउ इट इज ऑल आर द, ठीक है। नेक्स्ट, article of memorandum. These are some document that bidder has to give to qualify in the bid. बेसिकली क्या, बाद में जो टेंडर रिवोल्यूशन कमेटी होती है वो सारे डॉक्यूमेंट, ये जस्ट जिस्ट है, इसके अलावा भी काफी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, और ऑल द डॉक्यूमेंट आर मेंशन्ड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट दैट वी रिक्वायर फ्रॉम द बिडर, such as I can name a few. If there is a proprietor, then there should be Aadhaar. If there is a MSC bidder, then Udyam Aadhaar there should be, PAN of the proprietor, or if there is a company, then the certificate of incorporation is required. Memorandum of association and partnership deed. If there is some proprietor, then proprietor deed is required from the bidder, or some solvency certificate from the bank, or there are various documents that we require from the bidder, and these are well mentioned in the tender document. Bid security. Bid security is, this question may be asked in your exam, that bid security is the 2% of the estimated cost. This question may come, and गारंटी जो बिडर क्वालिफाई कर जाता है, जिसको हम एग्रीमेंट जिसके साथ हो जाता है, जिसे सर्विस हमें प्रोवाइड करनी है, तो उसे परफॉर्मेंस गारंटी देनी पड़ती है, वो एक बैंक से, नेशनलाइज बैंक से करा के। तो बेसिकली दैट इज 5%। इन द कोविड पीरियड इट वाज रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू 3%, बट अगेन इट इज नाउ 5%, एंड दिस इज EMD, this remains the 2%.
to participate in the bid, 2% of the tendered estimated tender cost he has to submit. But if there is some bidder MSE, micro small enterprises, not medium, micro and small, then this estimated cost is relaxed. So he can participate in the tender without any cost. So these things you have to keep in mind, because these things can cause. Next, we are going further. Number 4, the bid security of the unsuccessful bidder will be discharged if some bidder has submitted the EMD. If he becomes unsuccessful or unqualified, then his bid security is discharged from the account section. A letter may be issued from the MM cell to the claim officer or account officer, and he can discharge, and he can deposit that money of the bid security into the bidders, unsuccessful bidders account. Fifth, the successful bidders bid security will be discharged upon the bidders acceptance of the APO. ये उसके केस में है कि अगर कोई बिडर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसकी भी जो बिड सिक्योरिटी होती है वो भी डिस्चार्ज करनी पड़ती है हमें, अगर वो बिडर क्वालिफाई हो गया और रिस्पॉन्सिव है, और उसने जो हमने एपीओ उसे हम जारी करते हैं एडवांस परचेज ऑर्डर, वो उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो और उस सक्सेसफुल बिडर को परफॉर्मेंस गारंटी सबमिट करनी है डिपार्टमेंट में, तो हम उसकी जो ईएमडी वाली कॉस्ट थी, ईएमडी की जो मनी थी, उसको हम डिस्चार्ज कर सकते। ये नंबर 6 को हम जरा स्टडी कर लेते हैं। अगर कोई हम बेसिकली बिड सिक्योरिटी हम लेते क्यों हैं? बिड सिक्योरिटी हम इसलिए लेते हैं कि हमारे पास जो जेन्युइन सेलर हैं वो ही आए, और उसमें बेसिकली क्या, एक तरह की क्राउड ना इकट्ठी हो, ताकि फिर वो फर्दर इवेल्युएशन प्रोसेस को हमारे को स्लो करेगी। तो बिड सिक्योरिटी हम जो ली जाती है वो इसीलिए ली जाती है कि दैट कैन बी फॉरफिटेड इफ, अगर कोई सक्सेसफुल बिडर है, उसने हमारे साथ वो सक्सेसफुल तो हो गया, उसने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, पार्टिसिपेट किया बिड में, हमने उसे एपीओ भी जारी कर दिया, पर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा, वो हमें ही इज नॉट रेडी टू प्रोवाइड आवर सर्विस, सो वी कैन फॉरफिट द बिड सिक्योरिटी। सो इस तरह से क्या है, बेसिकली जो जेन्युइन बिडर है वही बिड में पार्टिसिपेट। नेक्स्ट, वैलिडिटी ऑफ बिड्स, नॉर्मली इट इज कैप्ट 150 डेज। जो भी हमारे बिडर होते हैं, अपने जो भी उसमें वो रेट कोट करते हैं फाइनेंशियल बिड में, वो कम से कम वैलिड होने चाहिए 150 डेज के लिए। अगर उससे कम के लिए हैं तो वी कैन आउटराइटली रिजेक्ट दैट बिड। एक ये वैलिडिटी ऑफ बिड्स है, और एक वैलिडिटी ऑफ बिड्स फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो नॉर्मली हम उसे क्या 180 डेज का रखते हैं। ये वैलिडिटी ऑफ बिड्स है जो बिड अपने पार्टिसिपेट करता है उसमें डालता है। मल्टीपल आवाजें जाती हैं। नेक्स्ट, देखिए बिड डॉक्यूमेंट काफी बड़ा है और इसमें टाइम भी काफी लगेगा। अब चलो नेक्स्ट वी कम टू 1.5.7 सीलिंग एंड मार्किंग ऑफ बिड्स। अब ये सीलिंग एंड मार्किंग ऑफ बिड हम पहले किया करते थे जब ऑफलाइन टेंडर किया करते थे इन द ट्रेडिशनल वे। उसमें बेसिकली क्या, दो कवर होते थे, एक फॉर द टेक्निकल बिड एंड अदर वन फॉर द फाइनेंशियल बिड। तो उसे कहते थे हम टेक्निकल।
ये आवाजें आ रही हैं। ये वो स्टार्ट हो जाता है सर। गूगल वाला है। ये मौर्य साहब थोड़ा शांत हो जाए। अब ये मेरा ध्यान उस पे है। अ, तो बेसिकली सीलिंग एंड मार्किंग बिड में हम जो एनवलप पे जो बिडर था वो उस पे लिख दिया करता था कि दिस इज द ओरिजिनल, दिस इज द कॉपी एंड इट इज टू बी सबमिटेड, ड्यू डेट क्या है, उसकी टाइम क्या है। और ये इसमें हम बेसिकली पहले 4 कॉपीज मांगा करते थे, क्योंकि जो टेंडर रिवोल्यूशन कमेटी थी उनको भी टेंडर डॉक्यूमेंट उसकी जो डॉक्यूमेंट थे उनकी रिक्वायरमेंट होती थी, तो हम उनसे मल्टीपल कॉपीज मांगते थे। तो which is the original and which is the copy in this sense। पर अब इन चीजों की बेसिकली अब रिक्वायरमेंट नहीं है जब से ई टेंडरिंग हम कर रहे हैं। हम अपने टेंडर डॉक्यूमेंट में जैसे कि वेन्यू है, वेन्यू टेंडरिंग इवेंट, ये सब चीजें हम उसमें मेंशन करते थे। अब नॉर्मली क्या है, ये सब चीजें पोर्टल पे ही हो जाती हैं, और हम बेसिकली उसमें कहते हैं पब्लिक ऑनलाइन टेंडर ओपनिंग इवेंट फोटो है। उसमें बेसिकली टाइम भी मेंशन होता है और वो पोर्टल पे हो जाती है, एवरीबडी कैन सी फ्रॉम द बिडर पॉइंट ऑफ, एंड दे कैन सी अदर्स डॉक्यूमेंट जो उनके कंपेटिटिव अदर बिडर्स हैं उनके भी डॉक्यूमेंट वो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वी कम टू सबमिशन ऑफ बिड्स। सो जो भी हमारी ड्यू डेट होती है, जो जिस डेट से हम स्टार्ट करते हैं अपने टेंडरिंग प्रोसेस को अपना, तो वो उस डेट के बाद में जो बिडर है वो पार्टिसिपेट कर सकता है बिड में। जैसे कि पहले टेंडर बॉक्स होता था, वो टेंडर बॉक्स में वो डाल दिया करता था, तो एक उसमें डेट मेंशन करते हैं। और जो भी लेट बिड होती है उसको हम एंटरटेन नहीं करते, उनको वी कैन आउटली रिजेक्ट और रिटर्न। मॉडिफिकेशन एंड विड्रॉल के लिए मॉडिफिकेशन के लिए हम कह ही चुके हैं, अगर किसी तरह का मॉडिफिकेशन या एडेंडम उसमें डालते हैं, किसी तरह का मॉडिफिकेशन करते हैं, तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आर टेंडर डॉक्यूमेंट। और एनी बिडर कैन विड्रॉल, अगर फ्रॉम द बिडिंग प्रोसेस कोई विड्रॉ करना चाहता है तो ही कैन विड्रॉ। एक उसके लिए एक फॉर्मेट होता है सेक्शन 7 में अपने प्रोक्योरमेंट मैनुअल के हिसाब से, तो वो एक फॉर्म लिख के कंसर्न अथॉरिटी को अपनी बिड को वापस दे सकता है, वो विड्रॉ कर सकता है। सो द बिड ऑफ दैट पर्टिकुलर बिडर विल नॉट बी इवेलुएटेड। ओपनिंग ऑफ द बिड बाय परचेजर, ये एक पर्टिकुलर इवेंट होती है जो जिसमें कि जो जिनके पास ऑथराइजेशन लेटर होता है फ्रॉम द बिडर साइड, द पर्सन कैन पार्टिसिपेट एंड कैन सी व्हाट इज गोइंग ऑन ऑल द इवेंट, एंड जो टेंडर ओपनिंग कमेटी होती है उनके भी लोग सामने होते हैं। तो ये बेसिकली सब फेयर एंड फाइन एंड ट्रांसपेरेंट करने के लिए होता है, और एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। पहले तो इसमें काफ़ी सारे लोग लगते थे, सिक्योरिटी वगैरह भी होती थी, और जो भी लोग उनमें डिप्लॉय किए जाते थे उनकी सब कुछ उनका नाम मेंशन होता था, एक अटेंडेंस रजिस्टर रखा जाता था कि किन किन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया फ्रॉम द बिडर साइड, फ्रॉम द डिपार्टमेंट साइड, सब का उसमें साइन होता था। तो
सिक्योरिटी वगैरह भी चीजें की जाती थी। तो ये वेल प्लान मैनर में टेंडर ओपनिंग इवेंट की जाती थी। पर आजकल ऑनलाइन टेंडर में ये इजीली हो जाता है और ट्रांसपेरेंट भी होता है। क्लेरिफिकेशन ऑफ बिड, इसके बारे में अभी पीछे बात कर चुके हैं। नाउ वी कम टू ऑब्जेक्टिव ऑफ टेंडर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के लिए हमारा बेसिकली जो पर्पज रहता है वो ये है कि जो भी हमारे, जो मैं रीड आउट कर देता हूँ इनको। कंप्लायंस टू स्टिपुलेटेड टेक्निकल एंड कमर्शियल कंडीशन, जो भी टेक्निकल एंड कमर्शियल कंडीशन टेंडर डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है उनको हमें कंप्लाई करना, डिट्टो वर्ड टू वर्ड। एंड बी, इवैल्यूएशन ऑफ बिड फॉर द सेलेक्टिंग रीजनेबल एंड कंपेटिटिव रेट्स, जो भी रीजनेबल बिडर हैं उन्हीं को हमें सिलेक्ट करना है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके दो एनवेलप होते हैं, एक टेक्निकल एंड एक कमर्शियल। तो टेक्निकलिटीज हमें उसकी देखनी है कि वेदर ही इज क्वालिफाइड, ही हैज ए प्रेस्क्राइब्ड, जो हमने टेंडर डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है उसका टर्नओवर है, उसके पास सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट है, उसके पास रिलेवेंट सर्विस को प्रोवाइड कराने का एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस दैट शुड बी क्वांटिफाइएबल विद इन 3 years पीरियड ऑफ टाइम, हाउ मच वर्क ही हैज डन, सो इन सेटिस्फैक्टरी मैनर। और कंपेटिटिव रेट आनी चाहिए ताकि वो उसके हमें एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस को प्रोवाइड करने वाला कम से कम लीस्ट पॉसिबल रेट में हमें मिल पाए। फॉलो द इवेल्युएशन, नंबर सी, फॉलो द इवेल्युएशन इन ए वेरी ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, ओके। और एंश्योर द कंप्लायंस टू द सीबीसी गाइडलाइन, हमें सीबीसी गाइडलाइन से क्वालिफाई कंप्लाई करना है। तो ये टेंडर इवेल्युएशन कमेटी इसमें मेजर रोल प्ले करती है। नंबर ई, कंप्लीट द इवेल्युएशन प्रोसेस इन द डिफाइंड टाइम फ्रेम। सपोज कोई टेंडर ओपन होता है और उससे पहले टीओसी वगैरह, टेंडर ओपनिंग कमेटी अपनी मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड रिपोर्ट सबमिट करती है एमएम सेल को। तो फिर टीईसी, टेंडर इवैल्यूएशन कमेटी इज कॉल्ड अपॉन एंड विद इन ए टाइम फ्रेम इट हैज टू गिव इट्स रिकमेंडेशन एंड ए डिटेल्ड रिपोर्ट। टीईसी को बेसिकली ये करना होता है कि which bidder is responsive and which bidder is non-responsive, and उसका एक जस्टिफाइएबल डॉक्यूमेंट, मतलब वो इस तरह से हमें उसका जस्टिफाई करना होता है कि ताकि अगर कोई कंप्लेंट भी करता है तो वो वी कैन एड्रेस दैट। ये जनरल चेक में बेसिकली हम जो टेंडर डॉक्यूमेंट डिजाइन करते हैं उसके लिए ये कंडीशन है। स्पेशल कंडीशन, क्लैरिफिकेशन, अमेंडमेंट, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। एएमसी कंडीशन एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जो भी एएमसी कंडीशन आर गिवन बाय द यूजर सेक्शन, द यूजर सेक्शन इज गोइंग टू अवेल दैट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। टेक्निकल इवैल्यूएशन, अब जैसे कि 1.8 टेक्निकल इवैल्यूएशन एंड 1.9 फाइनेंशियल इवैल्यूएशन, दीज आर द जॉब ऑफ द टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी। टेक्निकल इवैल्यूएशन में हम जो भी स्पेसिफिकेशन है उनको देखते हैं कि कंप्लाई वो होनी चाहिए। ऑल आइटम्स हैव बीन कोटेड एज पर द शेड्यूल ऑफ द रिक्वायरमेंट जो मेंशन्ड है टेंडर डॉक्यूमेंट में, एंड बिल ऑफ द मटेरियल सबमिटेड विद द बिड आर रिक्वायरमेंट एंड देयर इज नो अंडर प्रोविजनिंग किसी भी तरह की। उन चीज़ों को हमें बेसिकली ध्यान रखना ये इवैल्यूएशन कमेटी को करना होता है। एंड फाइनेंशियल इवैल्यूएशन में हमें कोई अरिथमेटिक एरर है कुछ, उन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करना, और जिसका L1 कौन है, ऑल द थिंग दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द रुपीज आर इन द वर्ड और फिगर और देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी, ऑल द टैक्सेस जीएसटी एटसेट्रा हैज बीन अकाउंटेड फॉर और नॉट एटसेट्रा। इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। उसमें जो भी L1 होता है, जो लोएस्ट बिडर होता है, उसको हमें क्वालिफाई करना होता है। सो दिस इज द जॉब ऑफ टीईसी। सो टीईसी प्लेज ए वेरी क्रूशियल रोल। टेंडर जो जो हमारा बीच में बिडिंग प्रोसेस चल रहा होता है, सपोज 21 डेज की विंडो है या 14 डेज की विंडो है, स्टार्ट टू ओपन, बिडिंग प्रोसेस जैसे स्टार्ट हुआ एंड बिडिंग प्रोसेस जब एंड हुआ, तो सपोज करिए 14 डेज की विंडो है, तो उस बीच में ही हम अपना जो टीईसी एंड टीओसी उनको हम कॉन्स्टिट्यूट करा लेते हैं थ्रू द अप्रूवल फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी। सच एज जब टेंडर ओपन होता है तो उसमें टेंडर ओपनिंग कमेटी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो सारी इवेंट को रिकॉर्ड करती है
और जो भी डॉक्यूमेंट किसी भी बिडर से आए हैं उन सबको फुल्ली वो अपनी रिपोर्ट में अकाउंट फॉर करके रखती है। तो इसमें अगर नॉर्मली अगर हम देखें तो टीओसी इज हेडेड बाय एजीएम and accompanied by uh, SD level officers, one from the finance and one from the technical side. TOC is lower powered than the TEC, Technical Evaluation Committee. TEC, in comparison to TOC, TOC is high powered and headed by DGM level and accompanied by AGMs and a chief account officer from the finance side. Normally, TOC and TEC are three-membered committee. There may be convener also from the MM cell as per the requirement. So preparation for the bid opening team में बाकी ये सभी चीजें हैं। आजकल ये सब चीजें वैसे irrelevant हो गई हैं जब से e-tendering आया है। ये सब चीजें इसमें इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट अभी है नहीं, तो मुझे लगता नहीं कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। एंड 1.12 इंफॉर्मेशन टू बी रीड आउट इन द बिड। अब जब बिड ओपनिंग होती है तो ये मतलब ट्रेडिशनल वे में कह रहे हैं कि उसमें बेसिकली बोला जाता था कि हु इज द बिडर एंड व्हाट इज द क्वांटिटी दैट ही हैज कोटेड, प्राइस एटसेट्रा, कोई डिस्काउंट वगैरह उसे मिला या नहीं मिला, जैसे कि वो एमएससी बिडर है तो उसको ईएमडी को रिलैक्स किया एटसेट्रा, इन सब चीज़ों को रीड आउट करना पड़ता था पहले। पर अब ये चीज़ें ऑलरेडी ई टेंडरिंग में ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाती है। उसको हम उसमें क्वालिफाई एंड डिसक्वालीफाई कर देते हैं और वो एनी बिडर कैन सी मिनट्स ऑफ द बिड ओपनिंग। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड इट्स टेंडर ओपनिंग report by the TOC. The TOC has to submit, and we have to take approval of the TOC, and further we have to submit this minutes or TOC report to the TEC, Tender Evaluation Committee, for the further evaluation of the tender, technical or financial. We have discussed these things already. Now you can remember these things. This chart is very important for the exam point of view. You can see we are talking about the TEC, Tender Evaluation Committee. Sometimes it is also called CET, Committee for the Tender Evaluation, Committee for Evaluation of Tenders, or more generically it is called TEC, Tender Evaluation Committee. So the value of the tender, technical, commercial and finance, up to 10 crore, 10 crore here, it is the estimated cost of the tender, and this is headed by the DGM and membered by AGM from the commercial side, and the AGM rank officer like chief account officer from the finance side. And in this way you can remember these things, because I think this may come in your exam. This chart is important. There are some CVC guidelines for the tendering process. I can read out these for you. All the bids accepted at the time of the bid opening. When actually जो आप बिड ओपन करने जा रहे हैं कर रहे हैं उस टाइम तक सारी बिड वो एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। आपको किसी को रिजेक्ट नहीं करना है ड्यू टू यानी अगर बिड ओपनिंग टाइम के बाद में कोई बिड आती है दैट यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट, you have to reject it straight forward. अगर आप उसके बाद एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट इज ए वायलेशन ऑफ द सीवीसी गाइडलाइंस। पहले जब ऑफलाइन टेंडर हुआ करते थे तो उसमें इस तरह की डिस्क्रिपेंसी पाई जाती थी, पर ई टेंडरिंग में इट इज नॉट पॉसिबल। जब उसका ड्यू डेट एंड टाइम लैप्स हो गया बिड ओपनिंग का, तो नो बिडर कैन पार्टिसिपेट इन द बिडिंग प्रोसेस। सो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है ई टेंडरिंग में। एंड बिड डॉक्यूमेंट अलोंग विद द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जो भी हमने रिक्विजिट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बिडर्स उसमें हमने मांगे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट सारे उसको सबमिट करने, तो ये भी सीबीसी गाइडलाइंस में आता है।
और कोई गाइडलाइंस टीईसी को अगर इशू की गई है तो भी टीईसी को उनका ध्यान रखना है फॉर द इवेल्युएशन पर्पज। मिनट्स ऑफ द बिड ओपनिंग इवेंट के जो भी मिनट्स हैं टीओसी की रिपोर्ट है उसको भी कंसिडर करना है, दैट शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड। नेक्स्ट वी कैन कम टू 1.16.4, that is important. Any document which has an impact on price of bidder and which is submitted by the bidder after opening of the tender should not be considered and should be ignored. Okay. वन पॉइंट 1.6.5 ओनली जो टेक्निकली जो रिस्पॉन्सिव बिडर होते हैं उन्हीं को हमें इवेलुएट करना है बाद में फॉर द फाइनेंशियल इवेलुएशन। A respective bidder is a bid which satisfies the following condition of the bid. It meets all the technical clauses of the bid document. It meets all the commercial clauses that are mentioned in the tender document. The offer is accompanied by the bid security deposit. अगर किसी बिडर को बिड सिक्योरिटी डिपॉजिट करना था उसने नहीं किया तो दैट ऑटोमेटिकली कैन बी डिमांड ऑन द प्रेस्क्राइब्ड। एक प्रोफॉर्मा हम उसमें मेंशन करते हैं सेक्शन 7C में, तो उसे वो मेंशन करके एंड जो भी ईएमडी की जो अमाउंट है इट इज 2% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट दैट वो भी उसमें होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हमें फॉलो करना है, ये सीबीसी की गाइडलाइंस ये कहती है। वन पॉइंट 1.6.6 the TEC should hold a preliminary meeting within 1 week of the handing over the tender document। पर नॉर्मली ये क्या है इमीडिएट नेचर का वर्क है तो ये हमें तुरंत ही करना होता है, वी डोंट हैव टू वेट फॉर द 1 week। ये मैं रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए। कमर्शियल इवेल्युएशन इज टू बी कैरिड आउट बाय द एमएमसीएल रिप्रेजेंटेटिव इन द टीईसी एंड वेटेड बाय द फाइनेंस रिप्रेजेंटेटिव। सो इसमें फाइनेंस भी का भी रोल काफी होता है। और वेटिंग ऑफ द कंपेरेटिव, एक लास्ट में जब हम फाइनेंशियल बिड को इवेलुएट कराते हैं टीईसी से तो एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाना होता है कि हु इज L1 L2 L3 विच बिडर हैज कोटेड व्हाट रेट। तो एक कंपेरेटिव चार्ट फॉर्म में हम बनाते हैं, उसमें क्लियरली स्टैंड आउट हो जाए कि आखिरकार L1 कौन है। सो दैट बिकम्स वेरी यूजफुल फॉर अप्रूवल पर्पज। सो इस तरह से टीसी को अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना होता है। नॉर्मली ये टाइम फ्रेम एक विद इन टाइम फ्रेम हमें करना होता है जो टीसी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। और अगर वो ड्यू टू some circumstances there are maybe there are number of bidders that have participated are in a huge number or some more problems are there, so TEC can be given more time to evaluate the bids। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है क्योंकि ऑनलाइन टेंडरिंग है तो मोर देन 100 बिडर्स भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो उनकी स्क्रूटनी करने के लिए काफी लंबा वक्त लग सकता है। तो उसके लिए एक अप्रूवल टीईसी जो चेयरमैन है वो ले सकते हैं। और क्योंकि बेसिकली पर्पज ये है कि जो भी होना चाहिए फेयर फाइन एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए। We have discussed all these things that are written in this. Here and there I have already mentioned these things. जब भी टीईसी की रिपोर्ट आ जाती है तो हमें उसका फर्दर अप्रूवल लेना होता है और फिर एपीओ जारी करते हैं हम उसको बिडर को। मतलब पहले टेक्निकल इवेल्युएशन होगा। मैं अगर शुरू से बताऊं तो पहले टेक्निकल बिड की ओपनिंग होगी, फिर टेक्निकल बिड का इवेल्युएशन करेगी टीईसी। नेक्स्ट उसका अप्रूवल लेंगे कि उसमें टीईसी अपनी मेंशन करेगी कि
विच बिडर इज रिस्पॉन्सिव, विच इज नॉन रिस्पॉन्सिव बिडर। उसका अप्रूवल लेने के बाद में जो नॉन रिस्पॉन्सिव बिडर होंगे उनको हम आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड जो फाइनेंशियल बिड ओपन होगी, जो कि टीओसी ओपन करेगी, उसको हम उसी उसी की फाइनेंशियल बिड को ओपन करेंगे। हालांकि अब ई टेंडरिंग में सिस्टम ही अलाउ नहीं करता, जिसको हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया तो नॉर्मली हमें जो क्वालिफाइड है उसी की फाइनेंशियल बिड को ओपन कर, फिर फाइनेंशियल बिड को ओपन टीईसी इवेलुएट करेगी। और उसका इवेल्युएशन होने के बाद में उसमें जाहिर सी बात है एक ही L1 होगा। नॉर्मली ऐसा तो होता नहीं है कि मल्टीपल L1 हो जाते हैं। अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे सिक्योरिटी के केस में, क्योंकि पहले से ही रेट्स वगैरह सब डिफाइन होते हैं ऑलरेडी, तो वो गवर्नमेंट के रेट हैं, जो उनके सिक्योरिटी के इतने ही रेट देने हैं, जो कि सेंट्रल लेबर कमिश्नर के द्वारा वो 6 मंथ में अक्टूबर एंड अप्रैल में डिफाइन होते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मल्टीपल बिडर्स हैज कोटेड सेम रेट। तो उसमें जैसे कि जैम अलाउ करता है अपने, वो सिस्टम के द्वारा ही अपने आप ही, अगर मल्टीपल L1 है तो उसमें से एक सिंगल L1 देगा, तो वो सिस्टम के द्वारा होता है। तो अल्टीमेटली हमें वी हैव टू गिव ऑर्डर टू वन वेंडर ओनली। सो ये ओवरऑल प्रोसेस रहता है। ये थोड़ा कर लेते हैं रीड, कभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। इवेल्युएशन ऑफ द, अगर कोई जब टीसी ने इवेल्युएट किया और उसमें जो रिस्पॉन्सिव बिडर था टेक्निकली क्वालिफाइड सिंगल बिडर था। अब सीधी सी बात है कि जब उसका हम बाकी सबको तो हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अब लास्ट में एक ही सिंगल रिस्पॉन्सिव बिडर बचा, तो उसी की बिड ओपन होगी। तो दैट इज नॉट द परफेक्ट, मतलब कंपटीशन नहीं हुआ उसमें, तो एक ही बिडर क्वालिफाई हुआ और उसी की हम बिड को टेक्निकल फाइनेंशियल को ओपन भी कर रहे हैं। तो इस केस में क्या है कि जो अप्रूविंग अथॉरिटी है वो ये देखती है कि अगर नॉर्मली क्या है ई टेंडरिंग में अपने आप ही पब्लिसिटी हो जाती है। तो जो कंपिटेंट अथॉरिटी वो देखती है कि वाइड पब्लिसिटी वाज गिवन फॉर द सब्जेक्टेड टेंडर और नॉट। सो जब हम ई टेंडरिंग करते हैं तो जब हम पब्लिश करते हैं अपना टेंडर, तब ही, जैसे कि जैम का एग्जांपल लें, तो वो थाउजेंड्स ऑफ बिडर्स को ऑलरेडी नोटिफिकेशन भेज देता है। तो वाइड पब्लिसिटी तो ऑटोमेटिकली हो जाती है उसकी। एंड नेक्स्ट, टेंडर स्पेसिफिकेशन आर जेनरिक इन नेचर। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट स्पेसिफिकेशन थी जिसमें कि बिडर्स पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए, ऐसा तो नहीं था। तो ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं कंपिटेंट अथॉरिटी। इन सब केसेस में जो जैसे कि रेट्स आर रीजनेबल और नॉट, द क्वालिफाइड बिडर सेटिस्फाई ऑल द टेंडर स्पेसिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशन, इन सब चीजों को ध्यान में रख के अल्टीमेटली अगर सिंगल रिस्पॉन्सिव बिडर है और उसकी फाइनेंशियल बिड जब ओपन होती है, तो हम इस तरह से सिंगल रिस्पॉन्सिव बिडर को भी टेंडर अवार्ड कर सकते हैं। निगोशिएशन रूट के बारे में हम पहले से ही वैसे निगोशिएशन रूट के बारे में बात कर चुके हैं पहले, पर दिस इज निगोशिएशन दैट इफ हम भी चूज L1, तो L1 से हम फर्दर निगोशिएट नहीं कर सकते। जैसे ये नो पोस्ट टेंडर निगोशिएशन विद L1 except in the certain exceptional conditions. So normally it is not very much in nature. Now we can come to e-tendering. What do you think? इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको टेंडर प्रोक्योरमेंट मैनुअल का थोड़ा दिखा देता हूँ, क्योंकि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस। दिस इज व्हाट आवर टेंडर प्रोक्योरमेंट मैनुअल। There are 9 sections in the procurement manual, and in the section 1 there is a detailed NIT. In section 2 there is a tender information, that what is the EMD, what is the work that is to be procured from the market, और सपोज हम हाउसकीपिंग का कर रहे हैं तो हाउसकीपिंग में एरिया कितना क्लीन कराना है हमें, या हम सिक्योरिटी का कर रहे हैं तो हाउ मनी सिक्योरिटी गार्ड्स भी रिक्वायर। सो ये सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट, और उसमें उसको पार्टिसिपेट करना है तो EMD कितनी होगी,
एटसेट्रा, इन सब चीजों की डिफाइन हम उसमें करते हैं। सेक्शन 3 में बेसिकली क्या स्कोप ऑफ वर्क होता है, जो कि यूजर सेक्शन को अप्रूव करा के और फाइनेंशियली कंकर्ड करा के जो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसको एमएम सेल को देना होता है। तो इसमें स्कोप ऑफ वर्क होता है सेक्शन 3 पार्ट ए में। एंड सेक्शन 3 पार्ट बी में टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो जो हमारे स्कोप ऑफ वर्क की हैं उनको डिफाइन करना होता है। दैट इज ऑल्सो द जॉब ऑफ यूजर सेक्शन। सेक्शन 4 पार्ट ए, देर आर सम जनरल इंस्ट्रक्शन टू द बिडर। ये एमएम सेल का ही एमएम सेल को डिजाइन करना होता है कि उसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस में बेसिकली ये होता है कि हाउ द बिडर कैन पार्टिसिपेट इन द बिड। तो उसको इजी गोइंग बनाने के लिए कि उसे जैसे कि डीएससी, जैसे कि सीपीपी पे डीएससी उसकी मस्ट है, या जैम है तो जैम पे वो हाउ ही कैन पार्टिसिपेट इन द जैम पोर्टल एटसेट्रा। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द बिल्डर होती है कि उसमें बेसिकली हम ये भी डिफाइन करते हैं कि हु इज द परचेजर, हु इज द सेलर, और वेरियस टर्मिनोलॉजी दैट हैज बीन यूज्ड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट, तो हम उनको डिफाइन करते हैं। तो और सेक्शन 4 पार्ट बी और सेक्शन 4 पार्ट ए ने सॉरी टू मेंशन वी हैव टू क्वांटिफाई द experience, how much experience we require from the bidder uh, in the duration wise and uh, quantity wise. Suppose whether he has done 1 lakh rupees of work in a period of time or so. So we have to mention these in the general instructions. Section 4 part B में special instruction to the bidder होती है, that is also defined by the user section. नेक्स्ट सेक्शन 5 पार्ट ए, इसमें जनरल कमर्शियल कंडीशन होती है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की, जैसे कि उसे पेनल्टी लगेगी तो कितनी लगेगी, कौन आर्बिट्रेटर होगा अगर किसी तरह का कोई लीगल डिस्प्यूट होता है एटसेट्रा। सब चीज़ों का इसमें फार्स मेजर, अगर कोई अनफोर्सिन कंडीशन हो जाती है तो किस तरह से उनको एड्रेस किया जाएगा। तो ये जनरल कंडीशन, जनरल कमर्शियल कंडीशन सेक्शन 5 पार्ट ए में डिफाइन होती है। सेक्शन 5 पार्ट बी स्पेशल कमर्शियल कंडीशन होती है, ये भी जॉब जो स्पेशल कंडीशन होती है ये यूजर सेक्शन को डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट वी कैन कम टू सेक्शन 6। सेक्शन 6 के ऑनवर्ड्स बेसिकली देयर आर फॉर्मेट्स। we have various proforma, and after filling the proforma and signing these proforma, he can participate in the bid. These are the prerequisite to participate in the bid and qualify for the bidding process by the TEC. So ये सारे फॉर्मेट जो इसमें मेंशन होते हैं यहाँ पे, इन सबको उसे फिलअप करके साइन करके सबमिट करना होता है बिडर्स को। मैं रीड आउट कर देता हूँ इसमें, जैसे कि अंडरटेकिंग एंड डिक्लेरेशन है। अंडरटेकिंग एंड डिक्लेरेशन में वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्नॉलेज करता है, एग्री करता है, तो इसमें ये परफॉर्मा होता है। एंड नियर रिलेशन सर्टिफिकेट है, जैसे उसमें कि उसका नियर रिलेशन में या डिस्टेंट रिलेटिव कोई डिपार्टमेंट में काम तो नहीं करता है बिडर का, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन साइन करके वो। सेक्शन सी में बिड ईएमडी का फॉर्मेट है। फिर परफॉर्मेंस गारंटी का फॉर्मेट है सेक्शन 7B में। और ये लेटर ऑफ ऑथराइजेशन टू अटेंड द बिड, ये पार्ट सी में होता है। इस तरह से ये परफॉर्मा है, अभी आगे चल के देख लेंगे, दिखा देंगे आपको। एंड सेक्शन 8 में बिडर्स प्रोफाइल एंड क्वेश्चन होता है। इसमें सेक्शन 8 में बिडर्स प्रोफाइल एंड क्वेश्चन में वी आस्क वेरियस क्वेश्चन फ्रॉम द bidder and he has to answer and submit these performa in the while participating in the bid. Bidders profile में अगर जो कोई कंपनी है तो कंपनी में how many board of directors are there, their names, their qualification etc, and their mobile number or their contact details, it is mentioned bidders profile में। bid form, बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए ये जो एजीएम एमएम है उनके लिए एक लेटर एड्रेस करके देना होता है कि आई एम पार्टिसिपेटिंग, प्लीज अलाउ मी इन द बिड एंड आई हैव read all the clauses of the bid document and I fully aware with all the clauses। जो भी चीजें हैं उनको वो उसमें, और आई हैव सबमिटेड माय ईएमडी इन दिस फॉर्मेट, ईएमडी एटसेट्रा, डीडी फॉर्म में है या चेक की फॉर्म में है या ऑनलाइन सबमिट की, वो सब चीज़ें उसमें बिड फॉर्म में वो सबमिट करता है।
फिर नेक्स्ट सेक्शन 9 पार्ट बी में प्राइस शेड्यूल होता है। लास्ट में सेक्शन 9 ये प्राइस शेड्यूल होता है। इसमें प्राइस शेड्यूल में बेसिकली फॉर्मेट होता है कि किस फॉर्मेट में हम उनसे फाइनेंशियल बिड में डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। वैसे इसमें बेसिकली एक बीओक्यू की होता है और वो डिटेल्ड होता है कि सपोज वी आर फ्लोटिंग द टेंडर फॉर व्हीकल and various type of vehicle be required. So for that particular vehicle, what would be the rate and what would be the timing of the period of service? मतलब नाइट आवर्स में देना है, डे आवर्स में देना है, कब से लेकर कब तक देना है, तो उसके प्राइस क्या होंगे। अगर बियॉन्ड द ड्यूटी आवर्स देना है तो उसके प्राइस क्या होंगे। तो ये सब चीज़ों से मेंशन होता है। डीजल की गाड़ी होगी, पेट्रोल की गाड़ी होगी, एक्सेट्रा। तो ये डिटेल्ड होता है इसमें। वो बीओक्यू में अपने प्राइस कोट कर सकता है और उसकी एक वर्ड में प्राइस आ जाएंगे एंड उसका इन टोटल में भी प्राइस आ जाता है प्राइस शेड्यूल में। तो दैट ये बेसिकली क्या है कि एक्सेल के फॉर्मेट में होता है बीओक्यू। पर जैम में ये कभी कभी क्या है कि इन्हें वन को वो सिंगल प्राइस कोट करता है, तो दैट इज नॉट मच रिक्वायर्ड इन द जैम, बट इन द सीपीपी this price schedule is very much required. Although price schedule is required in both of the cases, but BOQ is required in CPP, Central Public Procurement Portal. So this is what the idea of our procurement manual. You can see these formats, and you can go through these procurement manual. But, price schedule is it in this format. This is the bid form like that. These are the performer. Questionnaire, bidders profile and questionnaire, section 8. These are the, I'm just giving you the idea of that. Although you have to go through for your own. Letter of authorization for the attending the bid opening event, section 6. 7B, performance security के लिए जो गारंटी उसका परफॉर्मा कुछ किस नेशनल बैंक से लेना होता है, ये EMD की गारंटी के लिए फॉर्मा सेक्शन 7A लाइक दैट। ओके, next we come to CPP, Central Public Procurement Portal, that has been designed by the NIC, National Informatics Center, by the Ministry of Electronics and Information Technology. Actually, it is basically a web portal designed by the NIC under the GEP NIC, Government E-Procurement System for NIC. On this website, we can go for publishing and tendering process, etenders.gov. नहीं, पहले मैं प्रोक्योरमेंट मैनुअल दिखा, मैनुअल के फॉर्मेट वगैरह दिखा रहा था मुझे परफॉर्मा लगा, क्योंकि बेसिकली एग्जाम तो प्रोक्योरमेंट मैनुअल के हिसाब से देख सकते हैं इसको etenders.gov.in। यहाँ पे आप इसमें लॉग इन करके ऐसे
यहाँ से अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो नोडल ऑफिसर होते हैं सर्किल के, वो आपको देते हैं आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दैट यू हैव टू ऑथेंटिकेट थ्रू दी DSC, डिजिटल सिग्नेचर. But we don't work central public procurement portal for the tendering process. Not in this manner. We first we have to try to do any tender through JAM. If some product or service is not available on the JAM, actually a certificate is downloaded from the JAM portal, JAM availability report. So is actually hands-on. For the JAM portal, your email ID should be of BSNL or to be provided by the NIC. Otherwise, it will not work. JAM ID is also generated by the nodal officer of the circuit, and that can be authenticated through digital signature or Aadhaar and Aadhaar-based mobile number. We were talking about JAM availability report. If any product or service is not available on the JAM, then we can download that certificate and can show to the concerned authority and can upload on the CPP portal. Actually, JAM is built for to procure some generic type of service or product, and for the engineering work or services, we go for the CPP portal, such as for the civil tender, for electrical tender, and some hardcore telecom tender, we go for the CPP portal. Otherwise, all the services and products can be availed from the JAM tender, JAM portal. Okay, we come to the document because it is not download. Why it is not second document? Okay. So CPP पे basically क्या है, the prime objective is to educate, encourage, incentivize and thus facilitate the government department. मतलब हम क्या है, ये एक तरह का वे आउट है कि हम ऑफलाइन टेंडरिंग से ऑनलाइन टेंडरिंग की तरफ जाएं. CPP पोर्टल के थ्रू हम कर सकते हैं. अर्लियर आपको अगर ध्यान हो तो ई टेंडरिंग जब BSNL में इंट्रोड्यूस किया तो हम
ITI के थ्रू टेंडर किया करते थे। उससे पहले टेंडर बॉक्स हुआ करता था, फिर हमने ITI के थ्रू टेंडरिंग ई टेंडरिंग करना स्टार्ट किया। देन CPP एंड जैम है। तो अब जो भी टेंडर करना है हमें ई टेंडर ही करना है, एंड वी हैव टू यूज CPP पोर्टल एंड द जैम। I already mentioned the jam portal is used for to procure some generic type of product services. We have to procure furniture, computer, laptop, or other this type of devices, and we have to go for the tendering for vehicles or housekeeping work or security purpose, security guards we have to procure. So these type of tender are done with the jam, and for the engineering works which are very sophisticated work that we have to procure, we have to go for the CP. And there is one thing to mention, there is a SLA and tendering document already is there in the jam, so we don't have to worry about that. We can just create our specification and can upload on the jam. Otherwise everything is already in a tailored manner is there in the jam. So coming to the CPP, so CPP, there is a requirement of DSC, and this DSC should be of class 3, having the encryption and the authentication in the DSC, and we have to create the username and password on the CPP portal. That is the job of the nodal officer of the respective circle. And actually there is a hierarchy in the CPP portal for each PSU or each department. And there is a onboarding form that is submitted by the department to the CPP on a letterhead, and their ID is created at the headquarter level on the CPP. Then they can further create the username and password from the remote units like EP West, head BSNL corporate office को पहले create करना होता है, then hierarchy is mentioned and the nodal officer is created for the each circle, and then nodal officer of that circle can create further username and password, giving the role to the person like a procurement officer, publishing officer, tender evaluator, etc. And having the DSC to work on the CPP is must. These are not so much important, I think. Nodal officer. Okay. देखिए इसमें ये हायरार्की क्रिएट होती है, उसकी मैपिंग हम CPP पोर्टल पे करते हैं थ्रू द कॉर्पोरेट ऑफिस, और फिर ये यूजर अकाउंट उनके क्रिएट किए जाते हैं। जब ये लॉन्च हुआ था तो उसकी ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड कराई जाती थी, और जो वेबसाइट फॉर दिस इज etenders.gov. Now this is the JAM portal. JAM, GAR, JAM availability report. जैम पे बेसिकली क्या है कि हम थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। ये CPP का है। CPP में गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम एट NIC में एक ऑनबोर्डिंग फॉर्म होता है जिसको फिलअप करके डिपार्टमेंट को देना होता है CPP हेल्प डेस्क पे, एंड दे क्रिएट देयर यूजर आईडी।
and the at the corporate office level, then they can create the user ID of the respective circles. DSC, नोडल ऑफिसर, एंड जो उसकी हायरार्की है उसको सीपीपी पोर्टल पे क्रिएट करना एंड यूजर क्रिएट करना और फिर उनकी मैपिंग थ्रू डीएससी करना, ये सब सीपीपी करना होता है। और to run CPP portal on the computer, there should be Java, and of course internet connectivity should be there, and this type of page comes when you log in on the jam. Just which manner I can show you like this. You log in here. When you log in through your username and password, you have to authenticate yourself through the DSC. This is the login for digital signature. Here you can see your profile. These are some buttons through which you can publish your tender, and how many tender you have published in the tender list you can find. When you have to publish new tender, you can publish new tender from here. Publish tender. And these are the list of already published tender. This process is not going to come in the exam, I think. Cover, number of cover means here number of envelope, technical envelope and financial envelope. The tender that you are going to do for product or services. For civil works. 2 of 3, 3 of 3, 2 of 4. If you mention 4 members here, evaluator, bidder, party, and publisher, if 2 persons are there out of 4, then they can open the bid and evaluate them. This is for 2, maybe 1 or 2, maybe absent or some or busy in some other works. So this is a facility here. 2 out of 4 can open and evaluate. So this is a very long document. These are the document that is being shown here. This is the bid, and these are the documents or envelopes that you can click and open that have already been put down by the bidder. All the documents are in the form of PDF. So that is very long, and I think this is not going to come in your exam. Whenever you submit your bid, it is authenticated by the digital signature like this. And you have to put the key of your DSC. Work item detail, product category that you are going to procure, standard value, what is the estimated cost, pin code where there will be multiple consignee. I am leaving this because this is very lengthy, around 100 pages are there. Next, I can show you some. Time is not permitting me more. This is about the jam. You can log in and participate in and publish your bid. How you log in this window, and next this type of first window. You see there is some dashboard. In dashboard you can have the report of already published tender by yourself or product that you have procured from the jam. In the dashboard you can find.
jam availability. There is a process of jam availability report. This create manual report. You write some keyword that you are going to procure from the jam, but they are not available on the jam. Then if you find the key, write down the keyword, type the keyword there. If it is available, then it will show. Otherwise, if not available, then you can do this. This. I certify. Then generate report. A report is generated, and that you can show to your respective authority that this service or product is not available on the chain. This type of document is generated from the chain. But we have to, if we have to procure some service from the jam, then in this way, actually some hands-on experience should be there, and I can show you, but time is very limited, so all the things can't be done. This is the procedure how you can bid on the jam or procure some product or service from the jam. These are some filters that you can put here, and the bid duration you have to fill, and what time the bid will be open or bid will be end, and after half an hour of the bid end time, the bid can be opened by the purchaser. Some questions you can have may come in your exam. That what are the differences between the physical or offline tendering and online tendering, physical tendering and online tendering, and what are the types or method of the procurement that we discussed: negotiation route, EOI route, open tender, etc. And what are the differences? What are the level of TEC, TOC up to 10 crore? Who can be chairman of the TOC, like that? Or what are the things that are mentioned in the NIT? And this thing is mentioned in which section of the procurement manual, like that. Okay. Okay, now we are closing the session. This is all about the JAM, CPP, and the procurement manual. Moreover, you can read out the notes that I think these are available with you, and the procurement manual that you can download from our internet also of various properties. Thank you so much. Next session will going to be start after 10 minutes. Thank you.
Class will within 5 minutes. Okay, class will be start within the 5 minutes, please. Thank you.
Am I audible? Yes. So welcome in the topic of overview of optical fiber communication. We will study the little about optical fiber communication, and then after CPAN we will discuss for exam point of view. So starting from optical fiber communication, we will see slowly the basics and the application and the principle behind this. After that, we will discuss meanwhile some question regarding optical fiber communication, and after that we will take a little session about CPAN. Okay. So this is our overview optical fiber communication. अपना overview है basic components optical fiber communication. Starting from optical fiber communication, information in the form of voice, data and video. Any types of formation हो सकता है, इंफॉर्मेशन हमारा वॉइस भी हो सकता है, डेटा भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है. हम लोगों को सभी को थ्रू ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेट करना है. तो वाया दिस इंफॉर्मेशन आइदर फॉर्म और फॉर्मेट, इट में बी एनी टाइप्स ऑफ फॉर्मेट, हमें सभी को ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के थ्रू ले जाना. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन किस तरह से होता है. ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन स्टार्टिंग से लेकर सेंडर एंड से लेकर रिसीवर एंड, सम फॉर्म ऑफ एनकोडर मीन सम एनकोडिंग होती है. उसके बाद हमारा जो एक सीक्वेंस ऑफ पल्स होती है, उसके बाद हम लाइट सोर्स. अब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ अराइज होता है कि लाइट सोर्स हमारा कौन कौन सा हो सकता है. तो दैट्स वन मीन्स वन फ्रॉम एलईडी एंड सेकेंड वन इज लेजर. लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें, दोनों लाइट सोर्स हैं. डिफरेंस इज दैट कि हमारा एलईडी जो है, इसकी फुल फॉर्म एक तो हमें पता होनी चाहिए, लाइट एमिटिंग डायोड. सभी फुल फॉर्म मैंने लास्ट वाली स्लाइड्स में रखी है, तो डोंट वरी अबाउट द फुल फॉर्म. लास्ट वाली स्लाइड डेडिकेटली उसी के लिए डिजाइन की. जितनी भी फुल फॉर्म है सभी को हमने, क्योंकि जनरली फुल फॉर्म भी पूछी जाती है. तो हमारा लाइट एमिटिंग डायोड है, ये हमारी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है. कारण इसका ये है कि इसकी जो बीम की विड्थ है वो हमारी बहुत ज़्यादा वाइड है, तो हमारा डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर पाते. तो इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हमेशा हम लेजर यूज करते हैं, एलईडी यूज नहीं करते. फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन हम एलईडी यूज करते हैं, कर भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में 100% एलईडी यूज नहीं करते. तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन these types of light source is used, LED, laser and none of these, all of these like that. तो हमारा आंसर क्या होगा, लेजर. अब लेजर की फुल फॉर्म में पूछ सकते हैं, जो हमने अभी आगे आप एक स्लाइड में आएगी, अभी डिस्कस करेंगे. अब उसके बाद हमारी पिक्चर आती है फाइबर. हमारा फाइबर किस चीज का बना होता है, पहले तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे उसमें भी. अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारी फाइबर की आइडियली बैंडविड्थ कितनी है. आइडियली बैंडविड्थ जो फाइबर की है इनफाइनाइट है, कितनी भी हम कैपेसिटी है इसको कैरी कर सकते हैं. इनपुट क्या है, हमारी लाइट. अब वो कहाँ से आएगी, आउटपुट ऑफ एलईडी एज वेल एज लेजर. एलईडी की आउटपुट हो या लेजर की आउटपुट हो, दैट इज ए बीम, लाइट बीम. वो लाइट बीम हमारी कहाँ ट्रेवल करेगी, फाइबर. तो हमारा सिग्नल किस फॉर्म में होगा, लाइट फॉर्म में. और जो हमारी फाइबर इनफाइनाइट कैरी कर सकता है. तो आइडियली जो फाइबर की बैंडविड्थ है वो डिपेंड करेगी हमारा लाइट सोर्स क्या है, कितनी हमारी लाइट सोर्स लाइट को फाइबर को दे रहा है. तो इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारा ट्रांसमीटर किस टाइप का है. अगर ट्रांसमीटर हमारा इस तरह से है कि वो
जीरो टाइम में पल्स ऑन कर दे, जीरो टाइम में पल्स ऑफ कर दे, मीन्स स्विचिंग जो हमारी कैपेसिटी है ट्रांसमीटर की, जीरो टाइम ऑन जीरो टाइम ऑफ, इट मीन्स क्या है, उसकी एफ क्या होगा, अगर टी इक्वल टू जीरो है तो एफ क्या होगा, इनफाइनाइट। अगर जीरो टाइम में ऑन है जीरो टाइम में ऑफ है, इट मीन्स एफ इक्वल टू 1/0, दैट इज इनफाइनाइट। तो हमारा आइडियल कंडीशन में ऐसा हम एक स्विच डिजाइन करें, ऐसा एक लेजर या ऐसा एक एलईडी डिजाइन करें जो जीरो टाइम में ऑन है या जीरो टाइम में ऑफ है, वो हमारा आइडियल कंडीशन होगी। उस केस में हमारी बैंडविड्थ कितनी होगी, है इनफाइनाइट। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, इम्पल्स जिसे कहते हैं जीरो टाइम में ऑन जीरो टाइम में ऑफ। तो हम उसको 100% इसलिए नहीं बोलते कि इनफाइनाइट है, क्योंकि हमारा जो ट्रांसड्यूसर है या ट्रांसमीटर है, इस तरह से हम प्रैक्टिकली सिनेरियो में डिजाइन नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन कि हमारी फाइबर की बैंडविड्थ जो है वो लिमिटेड है, इनफाइनाइट नहीं है। देन आफ्टर हम सोर्स पर आएंगे, उसके बाद फाइबर पे आ जाएंगे, फिर हम आ जाएंगे डिटेक्टर। अब हमने ट्रांसमीटर एंड पे किया, इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल में कन्वर्ट किया। देन आफ्टर हमारा फाइबर में हमने लाइट सोर्स को दे दिया। आफ्टर दैट देयर इज ए रिसीवर। रिसीवर जस्ट क्या काम करेगा, रेसिप्रोकल ऑफ दैट ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर ने काम किया, हमारे लाइट को इलेक्ट्रिकल टू लाइट में कन्वर्ट किया। रिसीवर हमारा जस्ट अपोजिट काम करेगा, लाइट सोर्स को हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे। वो कौन कौन से हो सकते हैं, हम इस स्लाइड में जितनी भी हमारी स्लाइड है 1 बाई 1 देखेंगे। हमारा एलईडी लेजर होगा, ट्रांसमीटर, रिसीवर होगा, फोटो डायोड। अब किस टाइप का फोटो डायोड होगा वो भी एक क्वेश्चन बनता है, वो हम देखेंगे स्लाइड्स में। फोटो डायोड डिफरेंट टाइप्स के हैं, उनमें क्या डिफरेंट है, क्या उसमें चेंजेज होते हैं, वो हम देखेंगे। तो ये हमारा सिनेरियो है, बेसिक कंपोनेंट्स है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। हमारा ट्रांसमीटर होगा, ट्रांसमीटर कौन कौन से होंगे वो हमने डिस्कस किए। फाइबर, हमारा फाइबर की बैंडविड्थ, फाइबर के बारे में भी पढ़ेंगे, पूरा सेशन ही हमारा फाइबर का है। फिर हमारा डिटेक्टर्स है, ठीक है। आगे बढ़ते, अब हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर हमारा जो केबल है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, दैट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। क्या कहता है ये TIR, ये डायग्राम देखिए आप। N1 जो एक मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.48, और जो N2 जो सेकंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.46। तो डेंसर एक रेयर एक वेव हमारी इंसिडेंट हुई लेस देन क्रिटिकल एंगल पे, हमने उसको उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है CI वो हमारा क्रिटिकल एंगल से लेस है। तो हमने देखा N1 से वेव आई मीडियम 1 से और N2 में चली गई, ठीक है। अब हमने थोड़ा थोड़ा नंबर 2 आप वेव पर देखें तो हमने थोड़ा उसका क्रिटिकल एंगल जो सब कुछ था उसके इक्वल हमने ये नंबर 2 वेव रखी, नंबर 2 इंसिडेंट वेव हमने प्रोजेक्ट की। तो हमने देखा वो वेव ना तो हमारे फर्स्ट मीडियम में वापस आई, ना सेकंड मीडियम में आई। वो क्या हुआ, 1 और 2 जो मीडियम है उसके जो बाउंड्री है उससे जस्ट बाउंड्री के साथ साथ पास हुई, ठीक है। अब सेकंड जो हमारी थर्ड वेव, हमने जो वेव को इंसिडेंट किया लाइट वेव को, वो हमने ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे किया। फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो स्नेल्स लॉ बोलते हैं इसको, कि वो वेव जो है थर्ड ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल वो उसी मीडियम में, दैट मीन्स N1 मीडियम, N1 मीडियम से ही वापस हो गई। तो हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर का जो प्रिंसिपल है वो इसी पर काम करता है, थर्ड पर। अगर हम इस तरह से वेव को इंसिडेंट करें कि वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पर उसका इंसिडेंट एंगल हो तो उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ कौन सा मीडियम क्या कहता है और क्या होता है, क्लैडिंग क्या होती है, देखेंगे धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। अब देखिए ये ऑप्टिकल फाइबर, सबसे पहले ये देख लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर किस चीज का बना होता है। ये भी क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है।
तो ऑप्टिकल जो फाइबर हमारा मैन्युफैक्चर होता है, बना होता है, ये फ्यूज सिलिका ग्लास, फ्यूज्ड सिलिका ग्लास, ग्लास का बना होता है। और इंटरनल पार्ट जो होता है इसका, वो होता है कोर। और आउटर पार्ट सिलेंड्रिकल है, देखें आप, सिलेंड्रिकल है। इसकी आउटर पार्ट जो कोर के बाहर जो पार्ट है, ये होगी क्लैडिंग। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन कि इंटरनल जो इनर पार्ट है वो क्या होगा, दैट इज कोर। आउटर पार्ट क्या होगा, दैट इज क्लैडिंग। सेकंड वन, इसकी डायमीटर की बात करते हैं। अब वो पूछ सकते हैं कि कोर का डायमीटर क्या होता है। पहला क्वेश्चन इट में भी पूछा जा सकता है जनरली कि हमारा ये ऑप्टिकल फाइबर किस चीज का बना होता है। तो जो आंसर है फ्यूज सिलिका ग्लास, ठीक है। सेकंड वन, इनर पार्ट क्या होता है, ये कोर। और इसका डायमीटर क्या होता है, 6 to 10 माइक्रोमीटर। अगर सिंपल ये फाइबर की बात करते हैं, उसके अंदर और भी चीजें हैं, वो आगे देखेंगे। क्लैडिंग का डायमीटर क्या होता है, 125 माइक्रोमीटर, ठीक है। इनर पार्ट कोर, आउटर पार्ट क्लैडिंग। डायमीटर ऑफ कोर इज 6 to 10 माइक्रोमीटर। ये देखिए माइक्रोमीटर में डायमेंशन है, ना तो मिलीमीटर में है ना सेंटीमीटर में। तो माइक्रोमीटर में अगर डायमेंशंस हैं तो हम क्या अपनी आइज से देख सकते हैं, नहीं। तो अगर हम अपनी आइज से देखें इसको, तो हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कि विच वन इज कोर विच वन इज क्लैडिंग। हमें दोनों ही एक से लगेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डायमीटर बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो अगर आंसर में ये पूछा जाए 6 to 10 मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, तो ऐसा नहीं है कि 6 to 10 माइक्रोमीटर और 6 to 10 देखा और हमने देख लिया। हमें साथ में डायमेंशन भी देखनी है कि डायमेंशन हमारी मिलीमीटर में है, माइक्रोमीटर में है या सेंटीमीटर में। ओके, देखिए अब 3 सिनेरियो हैं जो हमने बात की थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। प्रिंसिपल हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्या सिनेरियो है, ये हमारी ऑप्टिकल फाइबर है, ये क्या हुआ कोर, और ये क्या है आउटर क्लैड। किस चीज का बना है, ग्लास ग्लास ग्लास। क्या चेंज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोर का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पिछली स्लाइड में दिखाया था, n1 इज इक्वल टू 1.48, एंड क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.46। तो जनरली इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के कंपेयर में लेस होता है, ग्रेटर होता है, इक्वल होता है, और नन। तो हमने या तो ये पूछ सकते हैं क्या होता है 1.48, या ये इस तरह से हम इसको पूछ सकते हैं कि विच वन कोर हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस और ग्रेटर, ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन एक ही है लेकिन पूछने के तरीके हमारे अलग अलग हो सकते हैं। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखें 1.48 एंड 1.46। अब ये देखिए 3 सिनेरियो हैं। लाइट प्रोपोगेट्स ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये तो हमने डिस्कस किया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब एंगल, लाइट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल विल बी कन्फाइंड टू द कोर। अगर हम सिनेरियो नंबर 3 जो हमारी दूसरी स्लाइड का था, अगर हमने इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर देन रखा तो ये कोर में ही रहेगी, हमारी जो वेव है, इंसिडेंट वेव है, लाइट वेव है। और लाइट एंगल जो है अगर लेस देन इंसिडेंट एंगल, जो लेस देन क्रिटिकल एंगल के है, तो वो क्या होगी, ये क्लैडिंग में चली जाएगी। तो हमारा सिनेरियो जो है इस पर काम करता है। सारी जो हमारी लाइट वेव है वो ध्यान रखें आप कोर में ही चलती है, क्लैडिंग में बिल्कुल नहीं चलती। ये पूछा भी जा सकता है कि लाइट वेव ट्रेवल इन साइड द कोर और नोट। क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है किसी भी तरह से। तो लाइट हमारी जो ट्रेवल करती है इन कन्फाइंड टू द कोर, ये लिखा हुआ है, ठीक है, कोर में ही रहती है, कोर से बाहर हमारी नहीं जाती। अदरवाइज वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है प्रिंसिपल वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखिए ये डायग्राम देखिए, कोर क्या है, इनर पार्ट, और क्लैडिंग क्या है, आउटर पार्ट। कोर भी सिलेंड्रिकल है, क्लैडिंग भी सिलेंड्रिकल है।
तो एक सरफेस है सिलेंड्रिकल, उसके चारों तरफ दूसरी सरफेस है, इनर पार्ट जो सबसे इनर पार्ट हो गया दैट इज कॉल्ड N1, और इसमें दिया हुआ है N1 इज ग्रेटर देन N2, जो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। तो हमें ये ध्यान रखना है कि N1 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका है, कोर, क्योंकि कोर इंटरनल इनर पार्ट है, और जो क्लैडिंग है दैट इज आउटर पार्ट, वो क्या है हमारा, लेस देन है कोर। तो देखिएगा ये लिखा हुआ है कोर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 सपोर्टेड बाय कॉन्सेंट्रिक क्लैडिंग लेयर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। ठीक है, ये डिस्कस किया, ये कोर है, ये क्लैडिंग है। द क्लैडिंग लेयर इज सराउंडेड बाय वन और मोर प्रोटेक्टिव कोटिंग। बहुत सारी लेयर्स होती हैं, क्योंकि ये तो ब्रिटिल है, ये तो ग्लास का है कोर क्लैडिंग। तो हमने जो देखते हैं हम नॉर्मल फेज में वो ग्रीन, येलो होती है, ऑरेंज होती है, और हमारी ब्लैक होती है फाइबर, लेकिन उसमें बहुत सारे कवर्स होते हैं प्रोटेक्टिंग कवर्स, नहीं तो वो ब्रिटिल होती है, टूट जाएगी। हम लेइंग करेंगे या इसको कहीं भी हम एक से दूसरी जगह पर हम फाइबर को ले जाएंगे तो वो टूट सकती है। तो इसलिए हम उसमें बहुत सारे हमारी लेयर्स होती हैं। तो ये लिखा हुआ है वन और मोर प्रोटेक्टिंग कोटिंग। चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अचीव्ड बाय सिलेक्टिवली डोपिंग। अब आपको हमने जिक्र किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है किसका, कोर और क्लैडिंग का। तो क्या ऐसा लगता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कोर का है, एक हमने मटेरियल लिया कोर और जो बना दिया फिर क्लैडिंग और उसको आप उसको ऊपर चिपका दिया, ऐसा नहीं होता। हमने जो जिक्र किया, डिस्कस किया अभी कि ये किस चीज का बना होता है, फ्यूज सिलिका ग्लास, लेकिन ये नहीं बताया या ये अलग से नहीं कहा कि कोर फ्यूज सिलिका ग्लास का बना होता है और क्लैडिंग इसका बना होता है। ये दोनों ही फ्यूज सिलिका ग्लास। द डिफरेंस इज दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज होता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है कंपेयर टू क्लैडिंग। अब ये कह रहे हैं चेंज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे करते हैं क्लैडिंग का, 1.48 से 1.46 कैसे लाते हैं, बाई सेलेक्टिवली डोपिंग। सब डोपिंग एजेंट उसमें हम ऐड कर देते हैं कोर में, आउटर सरफेस पर कोर की। तो वो जो एरिया हमारा डोपिंग से कम हो गया दैट इज कॉल्ड क्लैडिंग। तो इस तरह से हम कोर का आउटर वाला पार्ट हमने क्लैडिंग बना, और उसकी डायमेंशन हमने 6 to 10 माइक्रोमीटर कोर की बताई थी, और जो है ये वाली स्लाइड्स तो 125 माइक्रोमीटर क्लैडिंग की जिक्र किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें से एक दो डिस्कस किया जा सकता है। अब वेवलेंथ हमारी इंफ्रारेड रीजन में होती है, जो हमारी लाइट वेव ट्रेवल करती है फाइबर के अंदर, दैट इज इन द रेंज ऑफ इंफ्रारेड। इंफ्रारेड तो विजिबल लाइट नहीं होती, इंफ्रारेड रीजन में होती है, तो ये हमें दिखाई नहीं देती बिकॉज दैट इज नॉट इन द रेंज ऑफ विजिबल। अगर आप रिमोट से अपने घर पर रिमोट दबाते हैं तो वो भी लाइट हमारी इंफ्रारेड में है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो ट्रेवल कर रही है लाइट दैट इज आल्सो इन द इंफ्रारेड रीजन। तो ये ध्यान रखिएगा, इंफ्रारेड रीजन में होती है। अब इंफ्रारेड रीजन में लाइट तो हो गई, लेकिन उसकी वेवलेंथ क्या है जो ट्रेवल कर रही है। अब ऐसा नहीं कोई भी हमने वेवलेंथ उसमें से ट्रेवल करा दी। तो आईटीयू ने स्पेसिफिक किया है, जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है आईटीयूटी, उसने स्पेसिफिक किया है कि हमारी वेवलेंथ क्या क्या है। अब देखिए इस डायग्राम को देखिए, हमारा वाई एक्सिस पे क्या है, एटेन्यूएशन डीबी पर किलोमीटर, ये एटेन्यूएशन की जो हमारी यूनिट है डीबी पर किलोमीटर, और ये वेवलेंथ नैनोमीटर, इसकी यूनिट जरूर देखिएगा वेवलेंथ की नैनोमीटर। तो ये हमारी फर्स्ट विंडो, विंडो का मतलब क्या है, एक हमारा रेंज हो गई दैट इज कॉल्ड विंडो। जैसा हमारी बैंडविड्थ होती है, हम एनालॉग में पढ़ते थे बैंडविड्थ या फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो एक रेंज होती थी बैंडविड्थ इतने से इतना। तो यहाँ हमारे उसी चीज को ऑप्टिकल में विंडो बोल दी। ठीक है, अब इसमें देखिए एटेन्यूएशन इसका बहुत ज्यादा है। फर्स्ट विंडो जहाँ है ये हमारा धीरे धीरे लेस हो रहा है, लेकिन प्रीवियस सेकेंड और थर्ड विंडो के मुकाबले जो फर्स्ट विंडो का जो एटेन्यूएशन है वो ज्यादा है। और किस रेंज में है, 800 to 900 के बीच में है फर्स्ट विंडो, और मिड में है देखो ये
मिड बैंड रेंज। तो सबसे पहले जो इन्वेंट हुई ITU के थ्रू ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए वेवलेंथ, दैट इज इन द रेंज ऑफ, ये मैं आगे में जिक्र करेंगे, देखो इसको हमने बनाया हुआ है इस तरह से, तो आप पता लग जाएगा क्या क्या है, लेकिन ये डायग्राम से समझना है। तो 800 to 900 हमारी वेवलेंथ हो गई, दैट इज बिलोंग्स टू फर्स्ट विंडो, दैट बिलोंग्स टू फर्स्ट विंडो। फर्स्ट विंडो मीन्स, तो ITUT ने जो स्पेसिफिक किया फर्स्ट विंडो, विंडो में द रेंज ऑफ वेवलेंथ दैट इज कॉल्ड विंडो, तो वो हमारी 800 to 900। उसके बाद इन्वेंट हुई सेकंड विंडो। देखिए सेकंड विंडो का जो एटीन्यूएशन है वो फर्स्ट विंडो के कंपेयर में कम है, लेस है, ठीक है। तो हमारा SDH जो इक्विपमेंट है वो सेकंड विंडो पे भी काम करता है, जो जब SDH डिस्कस किया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर देखो इसमें स्पाइक आई, तो ये वाली ITUT ने छोड़ दी। फिर ये आई थर्ड विंडो। थर्ड विंडो का जो एटीन्यूएशन है वो कंपेयर टू फर्स्ट विंडो एंड सेकंड विंडो ये हमारी लेस है। तो हमारी फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो, तो देखिए ये अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में है, तो हम बात कर रहे हैं 800 to 900। अगर इसी को हम माइक्रोमीटर में बात करें तो ये हो जाएगा 0.8 to 0.9, ठीक है। तो वेवलेंथ का जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट विंडो की वेवलेंथ क्या है, सेकंड विंडो की वेवलेंथ क्या है, थर्ड विंडो की। हमें तो ये भी गौर करना पड़ेगा हम लोगों को कि हमारी यूनिट क्या है। 800 to 900 नैनोमीटर है, 800 to 900 माइक्रोमीटर है। तो विच वन यूनिट इट इज देयर, यू मस्ट सी कि हमारी यूनिट क्या है, ठीक है। तो देखिए अब ये फर्स्ट ऑप्टिकल विंडो, उसमें डिस्कस किया था 800 to 900 नैनोमीटर। यही अगर हम डिस्कस करेंगे माइक्रोमीटर में तो ये हो जाएगा 0.8 to 0.9 माइक्रोमीटर। और सेंटर पॉइंट कहाँ होगा 800 to 900 का 850, ठीक है। सेकेंड ऑप्टिकल विंडो 1250 नैनोमीटर टू 1350 नैनोमीटर। जनरली इसको क्या आपने सुना होगा 1310, सेंटर्ड एट 1310। लोगोस सबसे ज्यादा किस में होगा एटीन्यूएशन 850, देन आफ्टर 1310 नैनोमीटर। थर्ड ऑप्टिकल विंडो 1450 to 1600 नैनोमीटर, एंड जो जनरली इसको हम बोलते हैं 1550 नैनोमीटर, सेंटर्ड एट 1550। तो सबसे ज्यादा लोसी जो विंडो है हमारी 800 to 900 फर्स्ट विंडो, सेकंड लोसी विंडो सेकंड विंडो, एंड थर्ड ऑप्टिकल विंडो दैट इज लेस attenuation, that have less attenuation, third window। and currently fourth window भी ITU ने डिफाइन की है 1600 to 1700 नैनोमीटर, एंड न्यू ऑप्टिकल विंडो सेंटर्ड एट 1650 नैनोमीटर। तो जनरली कितने हमारी विंडोज हो गई, कितनी वेवलेंथ हो गई 4। कौन कौन सी 800 to 900 फर्स्ट, 1250 to 1350 नैनोमीटर सेकेंड, 1450 1600 थर्ड, एंड लास्ट वन इज 1600 to 1700। ओके अब देखिए ज्योमेट्री हमारी फाइबर केबल की क्या है जो हमने देखा है। मान लीजिए ये डायग्राम आ गया और इससे पूछ लिया कि ये दिस वन क्या है। ये मान लीजिए सिंपल एक डायग्राम इस तरह से बन के आ गया और ये एरो लगकर आ गए, या एरो की जगह 1 2 3 लिख कर आ गए। तो ये हमें इनर पार्ट क्या है हमने डिस्कस किया, कोर, क्लैडिंग, फिर कोटिंग, ये प्लास्टिक कोटिंग होती है। देन आप देन आफ्टर स्ट्रेंथिंग फाइबर्स, एंड तो हम लोग को जनरली दिखाई देती है वो केबल जैकेट, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्लैडिंग हैज ए लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन कोर। तो ये सबसे इनर पार्ट क्या है, कोर, सेकंड वन क्लैडिंग, थर्ड वन कोटिंग, फोर्थ वन स्ट्रेंथिंग फाइबर्स, एंड लास्ट वन इज केबल जैकेट। केबल जैकेट में भी दो तरह की हो सकती है, आउटर जैकेट, इनर जैकेट, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्रॉस सेक्शन व्यू है इसका। कोर ग्लास का बना है, प्योर सिलिका ग्लास, क्लैडिंग बिल्कुल, एंड लास्ट वन इज कोटिंग, बफर्स लाइक दैट। अब देखिए टाइप्स हमारे फाइबर्स के। ऑप्टिकल फाइबर का हमने डिस्कस कर लिया। एक ब्लॉक डायग्राम किस चीज का बना होता है, कौन सी वेवलेंथ यूज होती है,
कोर क्लैडिंग हमारी किस डायामीटर क्या है उसकी और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये अभी तक हमने डिस्कस की। अब टाइप्स हमारे फाइबर के कितने टाइप्स हैं? देखिए इनर पार्ट क्या है, N1, दैट इज कोर, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड एंड जो रिफ्लेक्ट रहा ये N2 हमारा क्या है, N2 ये हमारा क्लैड। अकॉर्डिंग टू अवर मटेरियल यूज, फाइबर में क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है उससे क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो ये क्या है, प्लास्टिक फाइबर। सेकेंड वन इज प्लास्टिक क्लैड सिलिका फाइबर एंड थर्ड वन इज ग्लास फाइबर। तो हम जो मटेरियल यूज करते हैं फाइबर का उसके अगर अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 टाइप्स के हमारे फाइबर होते हैं, प्लास्टिक फाइबर, प्लास्टिक क्लैड सिलिका फाइबर एंड थर्ड वन इज ग्लास फाइबर। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोफाइल में फाइबर को क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू RI मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट वन इज स्टेप इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स। स्टेप इंडेक्स का मतलब क्या है, स्टेप इंडेक्स मीन्स अगर हमारा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सडनली चेंज हो रहा है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन, दैट इज स्टेप में चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टेप इंडेक्स। ग्रेडेड इंडेक्स अगर ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, मान लीजिए एक सर्कुलर फॉर्म में ले लिया, एक तो हमने वर्टिकल लाइन ले ली, दैट मीन स्टेप, जैसे स्टेप फंक्शन होता है। ग्रेडेड इंडेक्स मीन्स ग्रेजुअली चेंज हो रहा है क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी कोर का, तो वो हमारा क्या होगा, ग्रेडेड इंडेक्स। तो अगर हमारे पास सडनली चेंज हो रहा है किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर, किसी फाइबर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर में, दैट इज कॉल्ड स्टेप इंडेक्स। और अगर ग्रेजुअली चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड ग्रेडेड इंडेक्स। ठीक है, तो मटेरियल यूज हमारा क्या हो रहा है अकॉर्डिंग, ये हमारा प्लस उसके अकॉर्डिंग हमारा 3 टाइप्स के फाइबर हो गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमारे 2 टाइप्स के हो गए। हमारे मोड क्या है, मोड का मतलब एट ए टाइम कोर में हमारी कितनी ऑप्टिकल पल्स जा रही है, ऑप्टिकल हमारी वेव जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या होगा, सिंगल मोड और मल्टी मोड। तो सिंगल मोड आपने देखा होगा फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हमेशा सिंगल मोड फाइबर यूज होता है। ठीक है, और शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हमारे मल्टी मोड मीन्स मैनी मोड एट ए टाइम, सिंगल मोड में मीन्स ओनली वन मोड ट्रेवलिंग इनसाइड द कोर। ठीक है, तो टाइप्स हमारे फाइबर के कितने टाइप से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ये इन्होंने यहाँ डिस्कस किया। ठीक है, अब देखिए मल्टी मोड, सिंगल मोड है ना, तो पहले हम सिंगल मोड देख लेते हैं। सिंगल मोड हैव ए स्मॉलर कोर रिलेटिव टू द क्लैडिंग डायमीटर। अब 8 to 9 माइक्रोमीटर ये टिपिकल कोर साइज सेंटर्ड इन ए क्लैडिंग ऑफ 120। अब देखिए ऐसा है 6 to 10 माइक्रोमीटर हमने जिक्र किया था पहली या दूसरी स्लाइड में कोर का, और क्लैडिंग का किया था 125। तो वो क्या होगा, वो सिंगल मोड का फाइबर होगा। 6 to 10 इसी रेंज में है ना, 8 to 9 माइक्रोमीटर। अब मल्टी मोड, अब बहुत सारी मोड एक साथ ट्रेवल होंगी, इसका मतलब उसका थोड़ा लॉजिक ये लगाते हैं कि कैसे होंगी, तो इसका मतलब क्या है कि उसका कोर ज्यादा बड़ा होगा, तभी तो उसमें बहुत सारे मोड एक साथ आएंगे। तो यहाँ देखिए मल्टी मोड फाइबर हैज ए लार्ज कोर रिलेटिव टू द क्लैडिंग, रीजन मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। अब आप इसका डायमीटर याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है 6 to 10 माइक्रोमीटर कोर का। हमें ये भी देखना है अगर कुछ लिखा हुआ नहीं आता, सिंगल मोड मल्टी मोड कुछ नहीं है, तो वो ठीक है सिनेरियो 6 to 10 माइक्रोमीटर वाला। लेकिन अगर साथ में वो जोड़ देता है सिंगल मोड मल्टी मोड का कोर क्या होगा, क्लैडिंग क्या होगा, तो यू हैव टू मस्ट केयर, आपको वो केयर करनी है कि क्या हमें क्या है। तो ये 50, 62.5 और 100 ये हमारे टिपिकल कोर साइज हो सकते हैं। इनमें से कोई एक साइज होगा जो अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो क्लैडिंग का हमारा 125 से लेकर 250 माइक्रो। ठीक है, तो यू मस्ट अवेयर टू आइदर सिंगल मोड इज देयर और मल्टी मोड इज देयर। ठीक है, देखिए ये बड़ा भी है, ये डायग्राम में देखिए कोर हमारा ये बड़ा है कंपेयर टू सिंगल, इसीलिए डायग्राम सही दिखाए गए हैं कि आपको कुछ कम से कम ये रिकॉल रहे डायग्राम के थ्रू। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मटेरियल के, ये हम लोगों को पता ही है मोटा मोटा। एयर का क्या होता है, जनरली 1 होता है, इसलिए एयर जो है 1 होता है, तो उसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उसका फार्मूला इन एयर अपॉन मीडियम, तो दोनों सेम ही है, तो फिर हमारा उसकी स्पीड ठीक एक ही रहती है। अब ग्लास का देखो, फ्यू सिलिका ग्लास, दिस वन,
1.46। ठीक है, तो ये हमने इसलिए डिस्कस यहाँ कर रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली हमने जो बार बार जिक्र कर रहे हैं ये हमारा पूरी टेबुलेशन फॉर्म में है। अब देखिए हमारे एडवांटेज क्या है ऑप्टिकल फाइबर की, क्यों यूज करते हैं, क्या जरूरत है ऑप्टिकल फाइबर की, ये वन बाई वन हम देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी हमने बताया आइडियली कितनी है, इनफाइनाइट, लेकिन जनरली इनफाइनाइट क्यों नहीं ले जाते वो भी हमने डिस्कस किया, क्योंकि हमारा स्विचिंग लिमिट करता है, जीरो टाइम पर ऑन ऑफ नहीं करता। हमारे इस रिसोर्स ऑलरेडी हमारे पास इंडिया में अवेलेबल है, जो हमारा ग्लास जिससे बनता है, लेस एट्यूनेट करता है, एट्यूनेशन आपने देखा ही बहुत कम एट्यूनेशन डीबी पर किलोमीटर है कंपेयर टू कोएक्सियल और कॉपर। सेफ्टी बहुत ज्यादा है, आप जो है बीच में वहां चोरी नहीं हो सकती, कोई ऐसा नहीं है कि कॉपर या मेटल है उसे बेच दे कोई। इम्यूनिटी रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस, कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी का इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि कोई सिग्नल ही हमारा या वेव नहीं है उसमें, लाइक ओनली ऑप्टिकल पल्स है, वो भी बाउंडेड मीडियम है, कोई ओपन में नहीं है। इम्यूनिटी टू ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, नो क्रॉस टॉक, कोई हमारा क्रॉस टॉक संबंध नहीं है एज कंपेयर टू जब हम देखते हैं लैंडलाइन वाले केस में। हायर सिक्योरिटी, कोई कोडिंग या डिकोडिंग करके हमारी बात नहीं सुन सकता। स्मॉल साइज है, लाइट वेट है बहुत ज्यादा कंपेयर टू कोएक्सियल की बात करें तो। कोरोजन लेस है, मेटल नहीं है तो कोरोजन भी नहीं है, और लेस टेम्परेचर सेंसिटिव है। तो एडवांटेज हमारा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का जो हमने इतने सारे डिस्कस किए, ये 1 2 3 4 में हो सकते हैं, लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। इस तरह से हो सकता है, या कोई एक सही होगा बाकी सारे गलत होंगे, तो ये एडवांटेज है हमारा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी एप्लीकेशन क्या है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की, टेली कम्युनिकेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। अब तो सब जगह ही हमारा ऑप्टिकल फाइबर हो रहा है, जहाँ भी हमारा अभी वायरलेस है धीरे धीरे वो भी कन्वर्ट हो रहा है। ये हम देखिए वीडियो ट्रांसमिशन में हम एफटीटीएच आने के बाद हम कितना, हम कोई भी हम वीडियो स्ट्रीमिंग है लाइव देख सकते हैं, कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। ब्रॉडबैंड सर्विसेज हमारी एफटीटीएच के थ्रू ही जा रही हैं, जैसे कंपेयर टू प्रीवियस वन एडीएसएल कॉपर के थ्रू जा रहा था। हाई ईएमआई एरियाज में हम ये यूज करेंगे, क्योंकि ईएमआई का कोई इसके ऊपर इफेक्टिव नहीं है। मिलिट्री एप्लीकेशन अपना सब मिलिट्री वाले सारे यूज करते हैं, क्योंकि हायर सिक्योरिटी है। तो ये हमारे एप्लीकेशंस हैं, हमारे किस चीज के, ऑप्टिकल फाइबर्स। ये एफटीटीसी, एफटीटीबी, एफटीटीएच, ये फुल फॉर्म फाइबर टू द कर्व, फाइबर टू द बिल्डिंग एंड फाइबर टू द होम। ये एफटीटीएच वाला जब पार्ट पढ़ाया जाएगा, और मुझे लगता है नरेश सर ने भी डिस्कस किया था। अब देखिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर की हमने बात की, कितने टाइप्स की हैं, इनर पार्ट क्या है, किस चीज की बनी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हमने देखा कि आउटर जो हमारी केबल है, जो हमारे रोड के किनारे आपने देखी होगी, वो सिटी से सिटी जोड़ती है, या वन प्लेस से दूसरा प्लेस हमारा कनेक्ट करती है फाइबर। तो वो हमारी ये देखिए, ये ज्यादा ही, इसमें नंबर ऑफ फाइबर्स कितने सारे हैं, दैट इज कॉल्ड आउटडोर फाइबर। ये आउटडोर फाइबर जो हमारी टर्मिनेट होती है एक्सचेंज में, ये इंडोर केबल, जो इंडोर फाइबर केबल, ये सिंगल फाइबर की केबल है, ये मल्टी फाइबर। तो दो चीजें हैं, कहाँ जाके टर्मिनेट होती है वो, देखिए ये हम डायग्राम दिखा रहे हैं आपको, फिर पीछे आएंगे। ये हमारी आउटडोर केबल है, देखिए मल्टी फाइबर्स की केबल है, ये दूसरी सिटी से आई कहीं, और ये हमने राउंड शेप लेकर ये हमने कनेक्टर्स लगाए, कनेक्टर अभी जिक्र करेंगे थोड़ा सा, राउंड शेप में, जिससे हमारा बेंडिंग लॉस सबसे कम रहे। और हमने यहाँ परमानेंट स्प्लाइस कर दी। मान लीजिए इसमें 6 फाइबर है एक फाइबर केबल में आउटडोर, तो हमने ऐसे ऐसे इंडोर केबल जो नंबर ऑफ फाइबर 6 केबल को टर्मिनेट किया विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसिंग मशीन। ये हमारी फाइबर ट्रे है, इसमें हमने टर्मिनेट कर दिया, फिक्स है। वन टाइम हमने परमानेंट स्प्लाइस कर दी, उसके बाद हमारा सारा काम इसके थ्रू होगा, किसके थ्रू, कनेक्टर्स, फेरूल कनेक्टर्स। और इसको हमने क्या नाम दिया, एफडीएमएस। क्या फुल फॉर्म है इसकी, वो आगे बताएंगे, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। और आगे भी लास्ट वाली स्लाइड्स में सब कुछ दिया हुआ है। तो हमारा आउटडोर केबल इंडोर केबल से कहाँ आकर टर्मिनेट होती है, दैट इज एफडीएमएस। वाल स्प्लाइसिंग चैम्बर भी बोल देते हैं, WSC, जनरली हम टर्म्स यूज करते हैं, WSC, वाल स्प्लाइसिंग चैम्बर्स। ठीक है, तो ये हमारा देखिए केबल जाने के लिए रास्ता भी बना हुआ है, ये जो है ये इस तरह से। तो यहाँ हमारी फाइबर की केबल हम निकाल सकते हैं।
फिर इसको आते हैं हम, फिर बैक आते हैं, ये अब हमारा जो कनेक्टर हमने एफडीएमएस में जिक्र किया था, हमने बोला ये फेरूल टाइप्स के कनेक्टर्स है। तो देखिए इसको बोलते हैं एफसी, ये मेटल वाला पार्ट है, ये जो टिप वाला है इसका स्पेरिकल शेप में है, राउंड शेप में है, तो इसको बोलते हैं एफसी का मतलब फेरूल कनेक्टर्स, वो भी उसमें लिखा हुआ है स्लाइड्स में। उसके बाद पहला इसमें स्लाइड नाम दे रखा है कनेक्टर्स का एससी। एससी मींस स्क्वायर कनेक्टर या सब्सक्राइबर कनेक्टर। इस एससी की फुल फॉर्म है स्क्वायर कनेक्टर्स या सब्सक्राइबर कनेक्टर्स। ठीक है। थर्ड वन स्ट्रेट टिप कनेक्टर्स, इसमें भी हमारा मेटल वाला पार्ट है, लेकिन जो मोस्टली यूज हो रहा है करंट में वो ये यूज हो रहा है एलसी, लूस एंड कनेक्टर। ठीक है। तो 4 टाइप्स के कनेक्टर्स हैं, एससी, एफसी, एसटी, एलसी। इन चारों की फुल फॉर्म हमने उसमें स्लाइड्स में, लास्ट वाली स्लाइड में दी हुई है, मैंने बोल भी दी है। स्क्वायर कनेक्टर, फेरूल कनेक्टर, स्ट्रेट टिप कनेक्टर एंड लास्ट वन इज लूस एंड कनेक्टर। ठीक है। करंटली हम यूज क्या कर रहे हैं, 100% या 90% लूस एंड। अब देखिए दो तरह की हमारी केबल है। एफडीएमएस में आ गए हम, एफडीएमएस में कनेक्टर लगा हुआ है फेरूल कनेक्टर, तो उस कनेक्टर से कनेक्टर ही टर्मिनेट होगा, तो उसकी दूसरी साइड में भी फेरूल कनेक्टर होगा, और वो कहाँ आके टर्मिनेट होगा, हमारा डीडीएफ पर, सॉरी एफडीएफ पर, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। अब एक साइड में कनेक्टर, दूसरी साइड में भी कनेक्टर, ये देखिए केबल। कनेक्टर किसी भी तरह का हो सकता है, ये स्क्वायर कनेक्टर्स है। ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, क्या बोला, पैच कोड। दोनों साइड में जिसके कनेक्टर हैं, किसी भी तरह, किसी भी टाइप्स के, अगर ये स्क्वायर कनेक्टर है तो हमने क्या बोल दिया, नाम दे दिया SC टू SC-SC पैच कोड। अगर एक साइड में स्क्वायर कनेक्टर है, दूसरी साइड में फेरूल कनेक्टर है, तो हमने नाम दे दिया SC-FC पैच कोड। अगर हम बीच में से पैच कोड को कट कर देते हैं, बिल्कुल मिडिल से या कहीं से भी, तो ये क्या होगा, देखो एक साइड इसकी ये हो जाए, इसको हमने क्या बोल दिया, पिक टैग। पिक का माउथ को हम जनरली ये ट्रीट कर लो कि पिक का माउथ जस्ट लाइक ए कनेक्टर, आइदर किसी भी टाइप का कनेक्टर हो सकता है, और जो उसकी टेल होगी वो ओपन है। तो ये याद रखने का तरीका है, अगर किसी को जानकारी नहीं है कि पिक टेल क्या होगी, पैच कोड क्या होगी, तो पिक टेल एज नेम सजेस्ट, पिक टेल, पिक की टेल जो दिस वन, पिक का माउथ दिस वन, इट मींस जिसके एक साइड में कनेक्टर लगा है, एक साइड में ओपन है, दैट इज कॉल्ड पिक टेल। एंड जिसकी दोनों साइड में कनेक्टर्स लगा हुआ है, आइदर ऑफ एनी टाइप्स ऑफ कनेक्टर, दैट इज कॉल्ड पैच। ठीक है। और ये लिखा भी है, देखो, टाइट बफर ट्यूब। ये टाइट बफर ट्यूब केबल होती है, और ये कौन से एप्लीकेशन में यूज होती है, इंडोर के लिए। आउटडोर के लिए मल्टी फाइबर्स होती है, जहां आउटडोर इंडोर टर्मिनेट होता है, दैट इज कॉल्ड एफडीएमएस। एफडीएमएस में हमने क्या किया था, आउटडोर से एक फेरूल वाला कनेक्ट किया था, तो उसे हम रिलेट करें तो वो आउटडोर वाला ये जो ओपन था, जो बाहर से केबल आ रखी थी, उसको हम इससे कनेक्ट करेंगे, इस ओपन वाले पार्ट्स। और ये हम उस एफडीएमएस में जो डिफाइन था वो ये था फेरूल कनेक्टर, यहाँ पर ये स्क्वायर, तो वहां पर यूज होता है ये। और लास्ट में फिर हम एफडीएमएस से एफडीएफ पर आएंगे, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। तो कनेक्टर से कनेक्टर कनेक्ट होगा, और दूसरी साइड में भी कनेक्टर होगा, वो क्या होगा, पैच। ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन है ये फाइबर मैनेजमेंट ट्रे, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एफडीएमएस के फॉर्म में। अब देखिए स्प्लाइसिंग मशीन। स्प्लाइसिंग मशीन क्या है, ये हमारा, इसका नाम क्या है टेक्निकली, फ्यूजन स्प्लाइसिंग मशीन। पहले हम मैकेनिकल स्प्लाइसिंग भी करते थे, लेकिन आजकल 100% हम क्या करते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग पॉइंट तक उसको टेम्परेचर जनरेट करते हैं ग्लास के, फ्यूज सिलिका ग्लास जो है, ये मशीन ऑटोमेटिकली अलाइन करती है, क्या अलाइन करती है, कोर से कोर, क्लैडिंग से क्लैडिंग, एक्स और वाई लिखा भी है। तो स्प्लाइसिंग मशीन है, और इसको नाम दिया हमने फ्यूजन स्प्लाइसिंग मशीन। ठीक है। तो इसमें अलाइनिंग ऑटोमेटिकली होती है, एक्स और वाई एक्सिस में, कोर से कोर, क्लैडिंग से क्लैडिंग। एक फ्यूजन होता है, उसके बाद कूलिंग होती है, फिर हम उसमें कुछ कोटिंग ऑलरेडी हटा देते हैं, प्लास्टिक कोटिंग, आउटर जैकेट, इनर जैकेट, तो उसमें आर्टिफिशियली हम कुछ लगाते हैं एक्स्ट्रा, जिससे हमारा वहाँ जो पॉइंट है वो ब्रेक ना हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे ज्वाइंट क्लोजर है, ये देखे होंगे कभी रोड के किनारे, तो ये ज्वाइंट क्लोजर है। ये ज्वाइंट क्लोजर जहां भी हमारा स्प्लाइस होगा,
जैसे एक फाइबर की ड्रम की लेंथ कितनी होती है, 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, जनरली 2 किलोमीटर होती है। तो हमारा मान लीजिए 50 किलोमीटर का एक रूट है और हमें उसको कनेक्ट करना है, तो एवरी 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर जो भी हमारी ड्रम की लेंथ होगी, वहां पर हम क्या होगा, ज्वाइंट क्लोजर लगाए। ठीक है, या कोई ब्रेक हो गया फाइबर ऑलरेडी जो एग्जिस्ट है, ऑलरेडी लेड फाइबर है, उसको ब्रेक, मान लो किसी भी एट एनी हाउ वो ब्रेक हो गया, तो हम स्प्लाइसिंग मशीन के थ्रू स्प्लाइस करेंगे, लेकिन आउटर जैकेट इनर जैकेट कहाँ से लगाएंगे एक्स्ट्रा? तो हम क्या करते हैं उसमें प्रोटेक्टिंग के लिए ज्वाइंट क्लोजर हम लगा। ठीक है, अब देखिए ये हम लेइंग जो फाइबर की करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि हमने मशीन एचडीडी के थ्रू करी है या मैन्युअली करी है डिगिंग, हम करेंगे हम पीएलबी पाइप के थ्रू। अब ये पीएलबी पाइप है, देखिए आप, लिखा भी है पीएलबी। पीएलबी की फुल फॉर्म क्या है, प्री लुब्रिकेटेड एचडीपी ई की हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन ये भी लिखा हुआ है उसके लास्ट वाले स्लाइड्स में। और इसका जो डायामीटर है याद रखें आप, इनर डायामीटर जो एचडीबी पीएलबी पाइप का होता है वो 40 mm होता है करंटली, जो हम यूज कर रहे हैं स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, डीओटी डीओटी स्पेसिफिकेशन या बीएसएनएल स्पेसिफिकेशन, वो 40 mm डाया है इनर पार्ट। और ये जो प्री लुब्रिकेटेड हमने बोला, इसका इनर पार्ट जो लुब्रिकेटेड होता है, जिससे हमारी ये पहले लेट हम पाइप क्या कर देते हैं, पीएलबी पाइप, पीएलबी डक्ट को हम लेट कर देते हैं, उसके बाद हम इस ऑप्टिकल फाइबर को ब्लोअर के थ्रू डालते हैं। ठीक है, तो जो हम रीजन क्या है इसका, अगर हम पीएलबी पाइप नहीं डालेंगे तो क्या ये सिग्नल ट्रेवल नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, लेकिन हमारे बहुत चीजें हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, एडवांस में हमने पीएलबी पाइप डाल दी, या कहीं मान लीजिए ऑलरेडी पाइप पड़ा हुआ है, केबल पड़ी हुई है उसके अंदर, कहीं कोई लेबर काम करती है या कोई और एजेंसी काम करती है, तो कहीं वो डिगिंग करेगी तो सबसे पहले हमारा कट किसका होगा, पीएलबी पाइप का, हमारी केबल सेफ है। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन है इसके, केबल लेइंग फास्ट है। अब देखिए एचडीडी मशीन, जहां हमारा मैनुअल डिगिंग पॉसिबल नहीं है, कहीं आरसीसी की रोड है या बहुत ज़्यादा नैरो है या बहुत ज़्यादा हमारा क्राउडी है, तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ हम ओपन डिगिंग कर ही नहीं सकते, और आज की तारीख में कोई अपने घर के सामने करवाएगा भी नहीं। तो हम एचडीडी मशीन के थ्रू हम वहाँ डिगिंग करते हैं, बोरिंग के थ्रू। तो देखिए एचडीडी मशीन के थ्रू हम बोरिंग करते हैं। एचडीडी मशीन, इसका मीन्स क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग, मतलब एक डायरेक्शन में ड्रिलिंग करेगी, जिस डायरेक्शन में ये जाएगा हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो ये भी आगे हम दिया हुआ है एचडीडी मशीन की। अब देखिए हमने पहली ही स्लाइड में जिक्र किया था, डिस्कस किया था ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो क्या ये पॉसिबल है मैं ट्रांस करूं आप रिसीव करें? ये सिंप्लेक्स मोड का ट्रांसमीटर हो जाएगा। भाई आप, मैं बोलूंगा आप सुनेंगे, लेकिन मेरे रेफरेंस में आप भी तो बोलेंगे, मैं सुनूंगा। इट मीन्स क्या, डुप्लेक्स मोड में ट्रांसमिशन होता है। मेरा ट्रांसमीटर तो आपके रिसीवर के थ्रू कनेक्ट होगा, विद द रेस्पॉन्स ऑफ दिस ट्रांसमीटर, आप भी उसे रेस्पॉन्स देंगे, तो आपके एंड पे भी एक ट्रांसमीटर होगा और मेरे रिसीवर से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज कॉल्ड एसएफपी। एसएफपी मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर एज वेल एज फोटोडायोड। ठीक है, तो देखिए ये हमारे क्या वेवलेंथ एमिट करेगा हमारा लेजर, इसकी जो रिसीवर है उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, सब इस पर लिखा होता है। एक हमारा लूसेंट कनेक्टर इससे कनेक्ट होगा इस पॉइंट से, और रिसीवर का हमारा इससे कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर का कॉम्बिनेशन होगा, एसएफपी, स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल, प्लग एंड प्ले वाला है। ये एसएफपी की फुल फॉर्म भी हमने आगे लिखी हुई है। तो ये एसएफपी अगर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, राइट। सारी वेवलेंथ जो भी हमारा फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो जो लैम्डा थे हमारे नैनोमीटर या माइक्रोमीटर, वाट्स एवर सो, तो वो सारे इस पर लिखे होंगे इसी पर, क्योंकि देख के तो हम बता ही नहीं सकते कि कौन सा एमिट कर रहा है, ना तो हम लाइट को देख सकते, विजिबल है ही नहीं। तो या तो हम पावर मीटर लाएं, या हम किसी और इस के थ्रू, एनालाइजर के थ्रू देखें, एसडीएच एनालाइजर या और भी एनालाइजर है, तो उससे पता लग पाएगा। अदरवाइज हमारा सब इस पर लिखा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंडिकेटर है, क्या इंडिकेटर है, ये डायग्राम पहले दिखा देते हैं। ये ऑप्टिकल इंडिकेटर्स हैं, आपने देखे होंगे रोड के किनारे। अब इतने सारे ऑपरेटर हो गए आज की तारीख में, और यूटिलिटीज भी हो गई, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नगर निगम, लाइक दैट। तो हमारा किसकी यूटिलिटी कहाँ पर है, किस पर एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारा क्या होगा, थ्री टाइप्स के इंडिकेटर हैं, रूट इंडिकेटर्स, ज्वाइंट इंडिकेटर्स। ज्वाइंट इंडिकेटर मीन्स ड्रम की लेंथ कितनी है,
2 और 4 किलोमीटर, तो हम एट एनी कंडीशन हमें 2 और 4 किलोमीटर जो भी ड्रम की लेंथ है वहां तो हमें स्प्लाइस करना ही है विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसिंग मशीन। ठीक है। रूट इंडिकेटर, हर 200 मीटर पर हमारा रूट होता है। ये हमारी केबल इधर से जा रही है, या दूसरी भी एजेंसी है, दूसरा ऑपरेटर है, उसकी केबल इधर से जा रही है। क्या क्या लिखा रहेगा? रूट लेंथ मीन्स नेम ऑफ द रूट, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली टू गाजियाबाद, तो DLI डैश GZB। सीरियल नंबर ऑफ इंडिकेटर लाइक 1 2 3। जॉइंट इंडिकेटर, तो कहीं मान लीजिए T पॉइंट है जहां हमें डाइवर्ट करनी है केबल, 6 फाइबर की केबल है या 12 फाइबर की केबल है, 6 फाइबर को डाइवर्ट करना है, तो हमने क्या किया? रूट डाइवर्जन इंडिकेटर इस तरह से। तो देखिए OFC BSNL की क्लियर हो गया, BSNL की OFC है, यहाँ रूट का नाम लिख दिया और यहाँ नंबर डाल। ठीक है, इसी के नीचे हमारी केबल पड़ी हो। फिर आगे थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। हमारा क्या होगा? एक ट्रांसमीटर होगा लाइट सोर्स, एक सेंसर होगा जो हमारा सेंस करेगा। ऑप्टिकल ट्रांसमीटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ऑप्टिकल में कन्वर्ट करेगा। रिसीवर क्या करेगा? कन्वर्ट ऑप्टिकल टू बैक इलेक्ट्रिकल। ठीक है, कौन कौन से होंगे? देखिए LED और लेजर। ठीक है, ये ट्रांसमीटर हो गया। रिसीवर क्या होगा? अब रिसीवर के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। एवलांचे फोटोडायोड, APD की फुल फॉर्म एवलांचे फोटोडायोड, पिन फोटोडायोड। पिन का मतलब P टाइप मटेरियल, दूसरी साइड में N टाइप मटेरियल और बीच में इंट्रिंसिक। तो ऐसा नहीं है इसकी फुल फॉर्म है P इंट्रिंसिक देन आफ्टर N। तो ये हमारा पिन फोटो फोटोडायोड हम जनरली यूज करते हैं। क्यों? रीजन क्या है लिखा हुआ है, देखिए इस पर। एवलांचे फोटोडायोड यूज वेयर रिसीवर इज टू डिटेक्ट लोअर पावर। अब हमारे यहाँ क्या है, कहीं भी किसी भी टेलीकॉम प्रोवाइडर की बात करें तो एक हमारा ऑप्टिकल पावर बड़ी मेन कंसर्न है कि बहुत कम है। मान लीजिए हमने कोई प्लान किया, कोई हमने रूट प्लान किया, मान लीजिए हमने कोई रूट प्लान किया और वो आज हमने प्लान कर दिया, वो 8-10 साल के लिए हमारा इफेक्टिव रहा, लेकिन केबल तो हमारी लगातार कटती रहेगी। लगातार भी कटती रहेगी तो हमारा ट्रांसमीटर तो एक पर्टिकुलर पावर रेडिएट कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो हमें वो भी एकोमोडेट करना पड़ता है अपना, जो हमारा पावर बजटिंग करते हैं। तो हम क्या है, इसलिए एवलांचे फोटोडायोड यूज करते हैं, क्योंकि क्यों? ये डिटेक्ट लोअर पावर, ये लोअर पावर को डिटेक्ट कर सकते। तो जनरली APD हमारा एवलांचे फोटोडायोड, पिन फोटोडायोड। ठीक है, ये डिटेक्टर्स हो गए। ट्रांसमीटर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, LED एज वेल एज लेजर। ठीक है, लेजर हमारा यूज होता है मैक्सिमम 100% ही माने लमसम, एंड देन आफ्टर APD। अब देखिए हम मार्जिन इतना रखते हैं, मैंने आपको बोला रिसीवर सेंसिटिविटी के इक्वल। जो हमारा रिसीवर सेंसिटिविटी क्या है देख ली, हम ये देखते हैं रिसीवर सेंसिटिविटी वो मिनिमम पावर है जो रिसीवर डिटेक्ट कर सकता है, जो हमारा APD या पिन फोटोडायोड डिटेक्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड रिसीवर सेंसिटिविटी। तो अगर रिसीवर सेंसिटिविटी के इनपुट पर वो पावर नहीं आएगी तो क्या हम उसको सेंस कर सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए कभी कभी -28 dB, -30 ये बहुत आउट चली गई। -24 FTTH में जो लोग काम करते हैं, ट्रांसमीटर में काम करते हैं, वो देखते हैं कि हमारा मिनिमम पावर ये है, तो वो मिनिमम पावर की बात करते हैं, वो क्या कहलाती है? वो रिसीवर सेंसिटिविटी कहलाती है उस केस के लिए। अब देखिए कितने कितने लॉस हैं, ट्रांसमिटिंग पावर में ही लॉस घटा देते हैं। कौन से? कपलिंग लॉस। मान लीजिए हमारी फाइबर हमारी टर्मिनेट है लेजर के थ्रू, तो कितनी पावर कपल हुई, कितनी पावर हमारी टर्मिनेट हुई फाइबर में। कनेक्टर्स भी होंगे, कितने भी टाइप्स के, फेरूल हो, लूसेंट हो, फाइबर का अपना भी लॉस होता है, डिस्पर्जन है, स्प्लाइस भी होगा, स्प्लाइसिंग करोगे तो स्प्लाइस लॉस भी होंगे। तो इतने सारे लॉस हैं हमारे। ट्रांसमिट हमने पावर 1 टाइम कर दी, और कपलिंग लॉस, कनेक्टर्स लॉस, फाइबर लॉस, स्प्लाइसिंग लॉस, ये सारे एकोमोडेट करने हमें, और ये समय के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। मान लीजिए कहीं फाइबर का लॉस समय के साथ साथ एजिंग होगी, बढ़ेगा, केबल कटेगी, स्प्लाइसिंग लॉस आएंगे। ठीक है, तो हमें मेंटेनेंस मार्जिन हमें रखना ज्यादा जो इक्वल और ग्रेटर देन रिसीवर सेंसिटिविटी के रहे, अदरवाइज हमारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और वो हमारा रूट बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखिए OTDR, ट्रांसमिशन की बात हो, ऑप्टिकल फाइबर की बात हो, और हमारा OTDR की पिक्चर में ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है,
तो ये हमारा ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, इसकी फुल फॉर्म है। जनरली ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि ये OTDR ट्रांसमिशन का नाम आते ही सभी के पिक्चर में आ जाता है। OTDR, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, ये क्या करता है, ये हमारी रेंज को फाइंड आउट करता है कि हमारी ऑप्टिकल केबल की हमारी रेंज कहाँ पर हमारा केबल कट हुआ आए। तो OTDR हम फाइंड आउट करते हैं रेंज के थ्रू। रेंज हमारी फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर हमारा पोजीशन क्या हुई केबल कट की, कितने किलोमीटर पर केबल कटेगा, दैट इज assigned by OTDR. With the help of OTDR, you can easily trace how much distance the cable is cut. Okay. Then after पावर मीटर, ऑप्टिकल पावर मीटर, वो ऑप्टिकल पावर भी आपको विंडो बताई। ऑप्टिकल पावर यूनिट क्या है, DVM। ठीक है, अब ऐसा नहीं है हमने ऑप्टिकल पावर सीधे नाप ली, हमने पहले ये देखना कौन सी वेवलेंथ में नापनी है। देखो ये लिखा हुआ है इस पर 1550 1550, तो थर्ड विंडो है। तो हमें ये पावर नापने के साथ साथ ये भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी किस वेवलेंथ की ये पावर आ रही है। तो इसमें एक पावर मीटर, ऑप्टिकल पावर मीटर में एक पुश बटन होता है, वो प्रेस करने के बाद हम देख सकते हैं किस वेवलेंथ ऊपर शो करने लगता है। तो ऑप्टिकल पावर मीटर को हम किस लिए यूज कर सकते हैं, पावर मीटर हम ऑप्टिकल पावर को मेजर। अब देखिए ये कुछ फुल फॉर्म है, एब्रीविएशन यूज्ड, ऑप्टिकल फाइबर, SFP, HDD, HDP, FDMS कनेक्टर्स 4 टाइप्स के, एज वेल एज OTDR। तो ये हमारी आप देख लीजिएगा, ये लास्ट स्लाइड्स है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, जो हम करेंगे CPAN। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड वी विल स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर आफ्टर 2 मिनट्स। ओके।
सो सर वेलकम बैक। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना सी पैन ओवरव्यू ऑफ सी पैन और एग्जाम पर्पज। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया, तो एग्जाम पर्पज के लिए ही हमने जो फाइबर का डिस्कस किया था बहुत कॉम्पैक्ट किया था। अभी सी पैन के बारे में भी हम स्लाइड के अकॉर्डिंग भी हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे उसमें किया था इसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो एक बार सर स्पेसिफिक ही डिस्कस कर रहे हैं। एम आई ऑडिबल? चैट बॉक्स में प्लीज टाइप करें। एम आई ऑडिबल? ओके ओके, थैंक यू। तो हम देखेंगे अभी सी पेन। ये हम सी पेन कहाँ से पिक्चर में आया, ये हमारे जो कंटेंट्स हैं इसके। हम सी पेन, व्हाट इज सी पेन, व्हाई वी आर यूजिंग सी पेन, इवोल्यूशन ऑफ सी पेन, ये क्या क्या फेजेज रही हैं हमारी। एम प्लस टीपी ये पिक्चर में जो आया ये कहाँ आया। जनरली ये बड़ा कॉमन सा वर्ड हो गया आज की सिनेरियो में। एम+टीपी पोजिशनिंग इसकी कहाँ है और सी पेन के इक्विपमेंट क्या है। बेसिकली जो सी पेन आया उसके भी इक्विपमेंट हैं, वो इक्विपमेंट क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके पोजिशनिंग क्या है, वी विल सी वन बाई वन। तो सर सबसे पहले तो सी पेन का नाम आते ही, अगर सी पेन हमारे सिलेबस में है या कोर्स में है, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि सी पेन की फुल फॉर्म क्या है। सी पेन की फुल फॉर्म है या कुछ भी इसमें जो भी फुल फॉर्म आएंगी, जैसे पहले वाली स्लाइड में डिस्कस किया था, लास्ट स्लाइड्स में हमने यही रखी है फुल फॉर्म। तो सी पैन इज बेसिकली कन्वर्जेंट पैकेट एक्सेस नेटवर्क। पैकेट एक्सेस नेटवर्क 100% हमारा पैकेट बेस्ड पूरा सिनेरियो है पैकेट। तो हमारा पैकेट तो चले गई पैन बेस, लेकिन कन्वर्जेंट क्या है इसमें, कन्वर्ज क्या हो रहा है हमारा। कहीं भी कन्वर्ज टेंडम है या पैकेट स्विचिंग है, हम कन्वर्ज कर रहे हैं सी पैन में। तो ये हमारा कन्वर्जेंट पैकेट एक्सेस नेटवर्क इज डिजाइन टू वर्क बिटवीन एक्सेस एंड कोर। ये देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू ये क्या कह रहे हैं। सी पैन स्विच एग्रीगेट। अब देखिए ऐसा नहीं है कि वॉइस वीडियो एंड डेटा के लिए अलग अलग कुछ हम इक्विपमेंट लगा रहे हैं सी पैन के, नहीं। एनी टाइप्स ऑफ ट्रैफिक वेदर इट इज STM1, ईथरनेट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, IP बेस्ड ट्रैफिक और ATM टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, किसी भी टाइप्स का हमारे पास ट्रैफिक है इनपुट पर, सी पैन स्विच हमारा किसी भी फॉर्मेट में इररेस्पेक्टिव ऑफ फॉर्मेट कैरी कर सकता है। वॉइस भी, वीडियो भी एंड डेटा, उसे कोई इट ऐसा मैटर नहीं है कि क्या है, वो केवल पैकेट की लैंग्वेज समझता है। इस पैकेट में आपकी वॉइस है, वीडियो है पैकेट फॉर्म में या डेटा है, किसी भी फॉर्मेट में है, वॉइस वीडियो डेटा STM1 ईथरनेट IP ATM वट एवर। सो हमारा पैकेट बेस पैकेट की भाषा समझता है, तो हमारा ये सब कैरी कर सकता है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि वॉइस वीडियो एंड डेटा के में किसको कैरी कर सकता है सी पेन, या एनी कोई रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं सर इसमें, क्योंकि पैकेट बेस्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो भी ऐसा नेटवर्क है कि एक्सिस से लेकर हमारा बिटवीन एक्सिस टू कोर ये भी जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी टाइप का ट्रैफिक, किसी भी फॉर्मेट का ट्रैफिक ये ले जा सकता है। ठीक है, कहाँ से ले जा सकता है, फ्रॉम एक्सिस, कस्टमर के एंड से ही हम उठा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सी पैन। सी पैन हमने कस्टमर के एंड पर रख दिया, सी पैन हमारा पैकेट। अब ओरिजिन कहाँ से हुआ, पैकेट हमारा कहाँ से आया, कस्टमर के एंड से, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर कहाँ हैंड ओवर करना है, कोर को। हमारा कोर क्या है, IP MPLS बेस्ड कोर है या OTN बेस्ड कोर है, ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। सी पैन इक्विपमेंट है हाई कैपेसिटी, बहुत ज्यादा कैपेसिटी हाई है, क्या क्या है वो डिस्कस करेंगे अभी। और देखिए ये इसमें लास्ट लाइन लिखी हुई है, इट वर्क्स इन रिंग टोपोलॉजी। ये ध्यान रखें कि ये हमारी रिंग टोपोलॉजी पे भी काम हमारी PPT के आउटपुट में आई। सी पैन की फुल फॉर्म क्या है, ये किस टाइप का ट्रैफिक ले जा सकता है, रिंग टोपोलॉजी पे काम करता है। जहां रिंग का नाम आया तो रिंग का मीन्स क्या है, प्रोटेक्शन। जैसे SDH में प्रोटेक्शन थी, SDH का लेक्चर भी आएगा, तो ऐसे ही हमारी रिंग प्रोटेक्शन किसमें है, सी पैन। बेसिकली हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें धीरे धीरे चीजें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, अब देखिए सी पैन हम लाई क्यों, क्या नीड थी। IP टैक्स हमने लगाया, उस समय हमारे पास कुछ ट्रैफिक पैकेट था, कुछ टेंडम था,
टीडीएम ट्रैफिक था हमारे पास, टैंडम बेस्ड ट्रैफिक, तो हमने वो लगा दिया कि हमारा चेंज करता रहे पैकेट एंड वाइस वर्सा। जब हमारा 100% ही पैकेट बेस हो जाएगा तो हमें नो नीड फॉर आईपी टैग्स। ठीक है, तो हम क्या है, टीडीएम ट्रैफिक इज बिकमिंग लेस एंड लेस, दिन पर दिन क्या है, पैकेट पैकेट बेस, रिक्वायरमेंट फॉर पैकेट ट्रैफिक इज स्ट्रॉन्गली राइजिंग। अब थर्ड वन चीज आई इसमें, एमपीएलएस टीपी। एमपीएलएस टीपी अभी हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटेलिजेंस ऑफ पैकेट। एमपीएलएस टीपी क्या है बेसिकली, इसमें पैकेट की तो इंटेलिजेंस है, स्विचिंग कैपेसिटी, प्लस हमने एसडीएस का भी इसमें फीचर लिया। कौन सा फीचर हमने एसडीएस का लिया, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। जैसे हमारा उसमें रिंग थी, इसमें भी है, उसमें कुछ अलार्म थे जनरेट होते थे, इसमें भी हमारे अलार्म जनरेट होते हैं। ठीक है, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वॉइस वीडियो एंड डेटा। और ये कैरी कहाँ कर लेता है, आईपी एमपीएलएस को, और ये एमएनजी पैन। एमएनजी पैन भी हमने, इसके फुल फॉर्म क्या है वो भी हम जिक्र करेंगे अभी। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है, वो दो दो अभी एक स्लाइड में 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए, इस स्लाइड में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीपैन ये किस टेक्नोलॉजी पर बेस है। एमपीएलएस टीपी, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग, टीपी मींस ट्रांसपोर्ट प्रोफाइल। मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग, टीपी मींस ट्रांसपोर्ट प्रोफाइल। तो ये सीपैन जो है किस टेक्नोलॉजी पर बेस है, एमपीएलएस टीपी बेस। ओके, अब रिंग टोपोलॉजी पे काम करता है, प्रोटेक्शन भी है, लेकिन 100% पैकेट होने के बाद भी हमने एसडीएच का भी फीचर इसमें इंक्लूड किया, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो हमने उसे कनेक्शन ओरिएंटेड बना दिया। अब देखिए, आपने जो देखा या सुना भी होगा, तो पैकेट जो हमारा जनरली है वो सब कनेक्शन लेस है। किसी भी हमारा पैकेट का रूट कोई भी हो सकता है, बफर पर हमारे पैकेट असेंबल होंगे, नंबरिंग होगी पैकेट की, और वो असेंबल हो जाएगी। लेकिन यहाँ कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है हमें इसको, सीपैन को लगाने के लिए हमें पहले कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, देन आफ्टर ये ऑपरेट होगा। तो इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस नहीं है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। In spite of being a packet-based technology, CPAN is connection oriented. ओके, ये हमारा एग्जिस्टिंग नेटवर्क डायग्राम है। हमारे पास पैकेट क्या था ऑलरेडी, जो हमारा पास पैकेट बेस्ड टेक्नोलॉजी थी, आरपीआर। आरपीआर का मतलब रेजिलिएंट पैकेट रिंग, 1G 2.5G 10G। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पैकेट के लिए कुछ नहीं था, इससे हमने ओसी लैन कनेक्ट कर दिया, अदर सिटी लैन, ओएनटी, ओएनयू, डीस्लैम, ये सब हमारे आरपीआर रिंग के थ्रू हुए कनेक्ट। ठीक है, देखिए रिंग रिंग में काम किया, बीएनजी। एंड देन आफ्टर आरपीआर के बाद देखिए ये पैकेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, एनजीएसडीएच। एसडीएच के बाद आया फीचर हमारा एनजीएसडीएच, जिसमें ईथरनेट हमारा इंक्लूड था। एनजीएसडीएच पैकेट, ये पैकेट बेस्ड एसडीएच था। रेजिलिएंट पैकेट रिंग, सीपैन हम डिस्कस कर ही रहे हैं, दैट इज एमपीएलएस टीपी। अभी मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, सीपैन इज एमपीएलएस टीपी बेस। एंड लास्ट जो करंट हो रहा है, एमएनजी पैन, एमएनजी पैन एमपीएलएस टीपी बेस। ठीक है, तो ये हमारे आज की तारीख में जो पैकेट बेस्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, ये आप देखिए, ये हमारे ये हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हो सकता है इसमें एक हटा दे और ये पूछ ले कि कौन सा पैकेट बेस्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, कौन सा नहीं है। बहुत क्वेश्चन के टाइप हो सकते हैं। ठीक है, अब एमपीएलएस टीपी की पोजिशनिंग क्या हुई सर। एमपीएलएस टीपी की पोजिशनिंग हमारे पास देखिए, ये एक्सिस में लिखा हुआ एमपीएलएस टीपी और एग्रीगेशन में भी लिखा हुआ एमपीएलएस टीपी, और हमने बोला सीपैन जो वर्क करता है एमपीएलएस टीपी। इट मींस क्या है, एमपीएलएस टीपी को हम क्या यहाँ मान सकते हैं, सीपैन, यहाँ क्या है सीपैन, और ये कहाँ जा रहा है, आईपी एमपीएलएस कोर। ठीक है, इसको और थोड़ा और अंदर जाते हैं इसके, ये बात। अब देखिए, ये हमारा रिंग है, रिंग का क्लाउड बना हुआ है, इसका मतलब रिंग पर काम कर रहा है, प्रोटेक्शन है, और ये सीधे हमारा एक्सेस इससे कनेक्ट है, और ये हमारा आईपी एमपीएलएस कोर। लेकिन उससे पहले हमने डिस्कस किया था एक्सेस एग्रीगेशन। तो हमारा इस डायग्राम के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हमारा सीपैन एक्सेस में भी काम करता है और एग्रीगेशन में भी काम करता है। देखिए दिस वन, एमपीएलएस टीपी, एमपीएलएस टीपी, एक्सेस एग्रीगेशन। तो पोजीशनिंग क्या हुई, अगर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हमारी पोजीशनिंग क्या है सीपैन की,
तो आंसर क्या होगा? एक्सेस एज वेल एज एग्रीगेशन। ठीक है, एक्सेस में भी है यानी कस्टमर के लास्ट माइल तक जा रहे हैं हम लोग, जहां हमारा सीपेन लगा हुआ है। और एग्रीगेशन यानी हमारा जो बीएसएनएल का नेटवर्क है वहां हमने वो लगा रखा है सीपेन। ठीक है, और उसकी जो आउटपुट है वो हमने कहा दी? कोर। देखिए ये और थोड़ा सर्विस लेवल, ये कोई बीटीएस लगा हुआ है नोड बी, जीई रिंग, 10G रिंग, आईपीएम प्लस, ये एक्सेस वाला पार्ट, ये एग्रीगेशन वाला पार्ट, ये दोनों रिंग में है। रिंग बार बार हम दिखा रहे हैं, प्रोटेक्शन रिंग दोनों चीजें याद रहनी चाहिए। और ये हमारे इसके नाम है A1 A2 B1 B2। थोड़ा और आगे देखेंगे इस स्लाइड में, हम सब चीजें एक साथ जिक्र नहीं करेंगे। A1 A2 B1 B2, सी पैन हमारी पोजिशनिंग एक्सेस में हुई, एक्सेस वाली पोजिशनिंग हुई तो क्या हो गई? जी रिंग। जी रिंग का मतलब क्या है? 1G। तो एक्सेस में जो रिंग बनती है हमारी वो कितने कैपेसिटी की होती है? 1G। और एग्रीगेशन में जो रिंग बनती है दैट इज बिलोंग्स टू 10G। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक्सेस वाली जो रिंग है या A1 A2 वाली जो रिंग है वो क्या है? 1G। और B1 B2 वाली जो रिंग है दैट्स बिलोंग्स टू 10G। और जो हमारा देखिए A1 A2 हमारा किससे कनेक्ट है? B1 B2 वाली रिंग से। और B1 B2 वाली रिंग किससे कनेक्ट है? आईपीएम प्लस को। तो इस तरह से हमारी कनेक्टिविटी है। ठीक है, लास्ट ये हमारी लास्ट माइल जो है सर्विस है, कोई भी हो सकती है, गवर्नमेंट, एंटरप्राइज, नोड बी, बीटीएस, कुछ। ये किससे कनेक्ट है? हमारे जी रिंग्स, एक्सेस वाले पार्ट्स, इसलिए इसका नाम एक्सेस भी है। लास्ट माइल पर हमारा एक्सेस वाला पार्ट जो है उसी से हम सर्विस दे रहे हैं। अब देखिए हमने सीपैन तो हमने पिक्चर में ले आए अपने बीएसएनएल नेटवर्क में, लेकिन किसको रिप्लेस कर रहा है? ये कर रहा है एसडीएच को। एसडीएच में रिंग थी, एसडीएच में कुछ अलार्म थे, वहां हमने इसमें इंक्लूड कर लिए एसडीए एसडीए STM16 की रिंग, सीपैन 40/80G, यानी जो इसका स्विचिंग कैपेसिटी। सीपैन STM4 की रिंग हमने किससे कनेक्ट चेंज की, रिप्लेस की सीपैन 5G, यानी ये कह सकते हैं A1 A2, ये B1 B2। तो हमें इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एसडीएच जो हम रिप्लेस कर रहे हैं उसकी जगह क्या ला रहे हैं हम? सीपैन। तो ये कई बार देखा गया है कि ये क्वेश्चन जनरली इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सीपैन को हमने क्यों हमने पिक्चर में लाए? पैकेट की एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, पैकेट में एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एसडीएच में परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, AIS LR, कैरियर ग्रेड फीचर्स, जीटर बाइंडर मेजर कर सकते हैं, है ना। तो सीपैन में हमने वो दोनों चीजें ले आए, पैकेट भी ले आए, पैकेट के होने के बाद भी हमने कनेक्शन ओरिएंटेड बनाया इसको। कुछ परफॉर्मेंस हमने एसडीएस की इंक्लूड की इसमें, और ये क्या हो गया? दैट्स बिलोंग टू MPLS-TP, इट मींस सीपैन। सो इट टेक्स द बेस्ट ऑफ टू टेक्नोलॉजीज। अब सीपैन जो बीएसएनएल में इंप्लीमेंट हुआ वो दो वेंडर ने प्रोवाइड किया इक्विपमेंट, ड्यूटी स्टार कॉम और फाइबर। ठीक है, अब ये देखिए आप इसको ध्यान रखिए, सीपैन के कितने हार्डवेयर है? जो हमारे सीपैन के हार्डवेयर है वो कितने टाइप्स के? A1 A2 B1 B2। A1 A2 कहाँ पिक्चर में आए? एक्सेस में। और B1 B2 पिक्चर में कहाँ आए? वो एग्रीगेशन में। तो एक्सेस जो लास्ट माइल्स में लगेगा, जो कस्टमर प्रीमाइसेस पर लगेगा, वो क्या होगा? A1 A2। और जो हमारा पार्ट होगा कोर और एग्रीगेशन का पार्ट होगा, दैट्स B1 B2। यानी जो हमने 1G रिंग की बात की वो हमने A1 A2 के थ्रू की, और जो 10G रिंग की बात की वो हमने बात की B1 B2। ठीक है, देखिए इस तरह से ये हमारा एक स्ट्रक्चरल लेयर बनी हुई है, सर्विस लेयर A1/A2, ये लिखा हुआ 1G रिंग, और ये B1 B2, ये लिखा हुआ 10G। तो ये A1 A2 जो रिंग है A1 A2 की 1G वाली, ये हमारा किससे कनेक्ट है? बैकएंड से 10G से, B1 B2 वाली से। और B1 B2 वाली रिंग किससे कनेक्ट है? हमारा आईपीएम प्लस को। ठीक है, तो सर्विस लेयर, एक्सेस लेयर, ये हमारा लास्ट सर्विस कहाँ जा रही है? बीटीएस वाली। एक्सेस वाला पार्ट A1 A2, एग्रीगेशन वाला पार्ट B1 B2, एंड लास्ट वन इज हो। ठीक है, तो इससे इस तरह से हमारे ये लेयर्स हैं, सर्विस, एक्सेस, एग्रीगेशन। अब देखिए जो हम बात करते हैं, अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं A1 A2। अगर ये दोनों चीज एक सी होती A1 A2 तो इसका नाम A ही होता,
ना तो इसका ए होता ना होता बी। तो इट मीन्स क्या, सम डिफरेंस इज देयर इन A1 A2 एज वेल एज B1 B2। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A1 A2? देखिए कैपेसिटी वाइज तो अगर हम देखें इसको, ये देखिए तो ये सेम है। जी ऑप्टिकल पोर्ट कितने हैं A1 में? जी इसका मतलब क्या है, जी पोर्ट ऑप्टिकल ओ 2 जी फास्ट इथरनेट इलेक्ट्रिकल 4 STM1 ऑप्टिकल 0 कोई ये नहीं है। E1 इलेक्ट्रिकल कितने हैं? 4 इट मीन्स क्या है, कैपेसिटी वाइज सेम है। लेकिन B1 B2 के सिनेरियो में देखें, 10G ऑप्टिकल कितने हैं? 2, B2 4, 1G ऑप्टिकल 10 20, जी ओब्लिक FE इलेक्ट्रिकल 10 20, STM1 ऑप्टिकल 4 8, E1 दोनों में सेम। तो इस तरह से थोड़ा इसको हम एनालाइज करते हैं इस वाली स्लाइड। तो A1 B1 B2 में डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या है, कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ B2 इज जस्ट डबल देन B1, एज यू कैन सी 4 2 20 10 20 10 8 4। while in the case of E1, अगर B1 में E1 पूछे जाते हैं और B2 में भी E1 पूछे जाते हैं तो ये दोनों सेम है। और A1 A2 में भी A1 A2 में तो ऑलरेडी सारी चीजें सेम है। लेकिन इन केस ऑफ B1 B2, जो कि B2 डबल है 10 देन B1 के, लेकिन इन केस ऑफ E1 इलेक्ट्रिकल दोनों सेम है, ये ध्यान रखना। 32 E1 दोनों में ही होते हैं। वाइल 10G GEFE STM1 ये दोनों क्या है, जस्ट डबल B2 के केस। B1 B2 इज जस्ट डबल देन B1। तो B2 B1 दोनों में डिफरेंस क्या है, कैपेसिटी का। वाइल A1 A2 में क्या डिफरेंस है, मैं अभी अगली वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। लेकिन कैपेसिटी वाइज A1 A2 में ध्यान रखिएगा कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रिकल E1 पोर्ट है A1 A2 में और B1 B2। तो क्यों? क्योंकि जनरली कोई सोचते हैं कि B1 अगर इसमें 32 है तो ऑलरेडी इसमें 64 होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। STM1 ऑप्टिकल 4 8, ये भी कई बार जो है जनरली पूछा जाता है। अब देखिए A1 और A2 में क्या लिखा हुआ है, दिस वर्क्स ऑन 220 वोल्ट AC। इसके पीछे जाते हैं A1 के केस में, दिस वर्क्स ऑन -48 वोल्ट DC। तो अगर हम बात करें डिफरेंस की तो इसमें पावर सप्लाई का डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है। क्या सेम है, देखिए 2 ऑप्टिकल 1G पोर्ट 4 इलेक्ट्रिकल 4 E1, इसमें भी सेम है। स्विचिंग कैपेसिटी 6 Gbps मदरबोर्ड की, इसमें भी 6 Gbps है। डिफरेंस क्या है, पावर का। तो अगर हम इस तरह से याद नहीं रख सकते तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि A2 इज द सिंगल इक्विपमेंट ऑफ CPAN which works only on AC, while remaining 3, it means A1 B1 and B2 all are working with -48 वोल्ट DC। तो हमें यही याद रखना है कि CPAN का एक A2 ही इक्विपमेंट ऐसा है जो AC से ऑपरेट होता है, while remaining 3 इक्विपमेंट A1 B1 B2 ये तीनों हमारे DC से ऑपरेट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जनरली ये कार्ड के नाम है, आप देख लीजिएगा। ये क्रॉस कनेक्शन कार्ड यानी जो हमारी कंट्रोल कार्ड जिसे बोलते हैं SNCV1। ये हमारा X का मतलब है रोमन में 10, तो 10G पोर्ट हो गया। S1 लिखा हुआ STM1, S1 का मतलब STM1। ठीक है, और G मतलब GEFE। और ये कंट्रोल कार्ड है, ये हॉट स्टैंड बाई रहता है। इसमें देखो लूसेंट कनेक्टर है LC, जो अभी डिस्कस किया था, 40 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। SFP स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल एंड लेजर, ये किस वेवलेंथ पे काम करता है, 1310। तो 3 विंडो बताई थी। ठीक है, इस तरह से देखिए इसमें A2 वाले जो CPAN का इक्विपमेंट है ये वाला, ये देखिए आप, ये इसमें AC वाला पोर्ट दिया हुआ है। इसमें क्या है, -48। ये भी आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि A2 इज द इक्विपमेंट विच ऑपरेट ऑन AC। ठीक है, अब देखिए समरी देखिए, A1 A2 कहां पर होता है, ये सिट्रांस, ये टेक्निकल इसका नेम है। ये कहां पर टर्मिनेट होता है, पोजिशनिंग क्या होती है, एक्सिस पर। B1 B2 इसकी पोजिशनिंग क्या है, एग्रीगेशन। डिफरेंस बिटवीन A1 A2 समरी, A1 इज DC पावर सप्लाई ऑपरेटेड, A2 इज ऑपरेटेड बाई AC पावर सप्लाई। ठीक है, और B1 B2 में क्या डिफरेंस है, 2 4 10 20 10 20 4 8, while in the case of E1 इलेक्ट्रिकल 32 30।
तो ये डिफरेंस बिटवीन A1 A2 दिस वन एंड डिफरेंस बिटवीन B2 कैपेसिटी वाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब CPAN सर्विसेज क्या क्या होती हैं? ये हमारी ई लाइन सर्विसेज, E3 सर्विसेज। ई लाइन सर्विसेज पॉइंट टू पॉइंट, डेडिकेट, ऑलवेज अप्लाई टू डेडिकेटेड सर्विस फ्रॉम 1.2। हमने यहाँ क्रिएट कर दी, वहां क्रिएट कर दी, हमने सिंपल एक टनल बना दी, दैट मीन्स ई लाइन सर्विसेज। ई लैन, लैन आप जानते ही हैं, मल्टी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। एक हमने लैन यहाँ बना दिया अपने एंड पर, एक आपके एंड पर लैन बना दिया और आपस में कनेक्ट कर दिया। ई ट्री पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, जैसे ट्री की ब्रांच हो जाती है, एक सिंपल एक रूट आती है और आगे जाके ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है। तो कुछ याद इस तरह से नहीं याद रखना, ई वाली, ई लैन, ई ट्री, ई लाइन। बाकी इसके अकॉर्डिंग ट्री किस तरह से शेप होती है, उसको पॉइंट टू पॉइंट मल्टी पॉइंट, लैन फ्रॉम वन लैन टू अनदर लैन, लैन मीन्स मल्टी पॉइंट, ई लाइन मीन्स सिंगल लाइन इज देयर, तो डेडिकेट वाला पॉइंट। इस तरह से आप इसको याद रखें कि किस तरह की सर्विसेज हमारी होती है, ई लाइन, ई लैन, ई ट्री। ये नाम भी अगर याद रहेंगे तो अगर इस तरह से इसमें पूछा जाए, ई लाइन सर्विसेज मेनली कॉन्स्टिट्यूट्स मल्टी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, सिंगल पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लाइक दैट, तो आप आराम से उसको कोरिलेट कर सकते हैं लैन के साथ। ये हमारी फुल फॉर्म्स हैं, MPLS मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग, MPLS TP मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग ट्रांसपोर्ट प्रोफाइल, STM भी एक जिक्र आया था, सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल, OTN ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, MNG पेन, MPLS TP बेस्ड नेक्स्ट जनरेशन पैकेट एग्रीगेशन नेटवर्क। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म देख लीजिएगा क्योंकि इसमें काफी फुल फॉर्म एक दो बार कुछ डिस्कस हुआ है। तो ये MNG पेन, MPLS TP, MPLS ये आप देख लीजिएगा। मैंने साथ में साथ MCQ भी जिक्र किए थे, अलग से कोई MCQ वाला ऐसा नहीं है कि MCQ हो जाए। जो भी मैंने स्लाइड, जो भी हो सकता था, जो भी पॉसिबल उसमें बनता था, मैंने जिक्र किया सर। एक दो लोग पूछ रहे हैं अभी चैट बॉक्स में, तो ये ऑलरेडी मैं जिक्र किया सर साथ में पढ़ाते हुए। डेडिकेटली अलग से कोई ऐसा कोई क्वेश्चन बैंक नहीं। स्लाइड में शेयर कर दूंगा, स्लाइड आपको दोनों ही मिल जाएंगे, नोट वरी अबाउट दैट, ये हमारी ड्यूटी है, हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है सर, तो थैंक्स आपका जो है, आपने इतना अच्छा से लिसन किया और क्वायरी भी अच्छी हुई है। और जो स्लाइड्स के बारे में आपकी कुछ क्वायरी थी वो मैंने अभी बीच में जो ब्रेक लिया था बोल दिया इनको सर को, वो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ स्लाइड्स, तो ये अभी आपको अपलोड कर दें। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू सर।